होपफुली रिप्लेसेबल हूँ। इंसान तो इनरिप्लेसेबल है, मगर जो मशीन तो कोई मसला नहीं है अगर गलती भी हो गई या। अच्छा, तो पॉइंट ये कहने का है कि मैं यहाँ आने से, आज की आपसे मीटिंग से पहले मैं जरा से पढ़ के भी आया। देखें, ट्रांसपोर्टेशन से लेके मिलिट्री, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं कि सामान, आपको पता है लॉजिस्टिक सबसे बड़ा मसला होता है फौज में। मेरे वाले साहब भी फौज में थे। जिस वक्त एक कोल्ती है तो साथ उसके पूरी हजारों ट्रेनें होती हैं, हजारों ट्रक होते हैं उसका सामान मूव करने के लिए। अब जब ये ऑटोमेटेड गाड़ियां आ रही हैं तो जितना अगर आपका 1 लाख आदमी डिप्लॉय होता है तो 10 लाख आदमी उनको पीछे सपोर्ट करने के लिए होता है। क्या कहते हैं, मगर अब क्या होगा कि ये पहले स्टेज में कि ये वाले जो काम है ना वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है इस वक्त सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे और डलेस की सड़कों पे ऑटोमेटेड गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं है। इमेजिन करें कि जो सारा ये लॉजिस्टिक्स आर्मी का सब पहला जो ट्रांसफर होगा वो होगा, फिर ट्रेनिंग। अब ये जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आया है, ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी कॉन्सेप्ट आया, इसके ट्रेनिंग आपको एक्चुअल चीज, जहाज के पायलट एक्चुअल जहाज में बिठाने की नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी में उसकी ट्रेनिंग जा सकती है और इसी तरह एक्साई की भी दी जा सकती है। मेटावर्स थोड़ा सा अच्छा देखिए, मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आजकल पॉपुलर किया है हमारे फेसबुक ने, और उन्होंने अपना नाम मेटा चेंज कर लिया है। मेटावर्स में ये है कि हम क्या करते हैं कि अभी आप फेसबुक देख रहे हैं ना, तो आपकी स्क्रीन पे फिगर है, तो आप फेसबुक से बाहर हैं, आप बाहर से देख रहे हैं फेसबुक को। अब जैसे अभी कोई 15 दिन पहले मेटा क्वेस्ट प्रो उन्होंने VR ग्लासेस लगाए और उसमें थोड़ा सा AR का कॉन्सेप्ट है। VR क्या वर्चुअल रियलिटी है, नहीं आप वो ग्लासेस लगाए तो आप मैं उसमें, मैंने माउंट एवरेस्ट अभी नहीं देखी, तो मैंने पहला काम क्या किया कि माउंट एवरेस्ट के वीडियो देखने शुरू किए वर्चुअल रियलिटी में। तो मुझे, आपको मैं बता सकता हूँ कि 0 पॉइंट किधर है, बेस कैंप किधर होता है, उससे कैसा नजर आता है, फील आती है। अब 50-60% फील आती है। मेरी बहुत अच्छी एक कुलीग है हिरा, वो हमेशा कहती है कि मैं तो मानूंगी मेटावर्स को, आप मेटावर्स में कभी खा सकें। हाँ, अभी तो वो तो दूर है कि खाना खा सके, मगर देखिए हवा की फील नहीं है अभी आपको, क्योंकि हम अगर वहां होते माउंट एवरेस्ट के नीचे तो हवा भी चल रही होती, ठंड भी होती, तो वो तो नहीं है, सारी बात है इस स्टेज पे। मगर जो आंखों से नजर आता है और आइंदा कानों से भी जो अभी भी कानों से जो आप महसूस करते हैं वो सब महसूस है आपको, तो क्योंकि वो माइक्रो और उसके थ्रू। और आप जैसे मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल चीज नहीं देखना। देखिए टीवी में खराबी क्या है कि आप जो कैमरा में दिखाना चाहते हैं वो देख सकते हैं, वो 360 व्यू दे रहा है। अर्ज करें मैं फोकस कर चाह रहा हूँ कि फला आपका सामान जो सामने रखा है, मैं इक्विपमेंट ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं अजम्पशन ले तो मैं इक्विपमेंट फोकस करूंगा, मैं बाकी चीजों इग्नोर कर दूंगा। क्रिकेट में भी फर्स्ट है, कोई आदमी किसी खास बाबर आजम का है, तो बाबर आजम मैं नहीं चाह रहा बॉल, मैं तो चाह रहा हूँ कि बाबर आजम फील्डिंग कर रहा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो क्या, तो मैं क्या करूँगा वहां पे टर्न कर, अच्छा वो आपको सारा सेंस कर रहा है चारों तरफ कि आपका मुंह कैसे, ये सब कनेक्टेड है। ये आई के बगैर पॉसिबल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि बगैर मेटावर्स भी, ये जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो उसमें AI का बहुत मेजर हाथ है, एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में। और इस तरह आप क्या कहते हैं, तो ये दुनिया बदल के रख जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए क्रिटिकल तरीन है। देखें हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन है, इसीलिए डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आज से 3-4 साल ये प्रोग्राम शुरू किया था, मास लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बाप है ना, अब बच्चों को नई दुनिया के लिए अगर तैयार नहीं करे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए होगी और यूजुअली लोगों के लिए भी होगी। कितना लेट है हम? लेट है हम काफी लेट है, ज्यादा लेट नहीं है। अगर भी कवर कर देख इससे अंदाजा करें कि हमें इस तरह कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, अगर फिर आखिर में दुनिया में कंपेरिजन नहीं होता है। इस वक्त इंडिया की एक्सपोर्ट्स $150 है, हमारा 3 है, तो 150 में और 3 में तो काफी फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क है। और देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेटेड यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा ये भी सारा इससे मसला हल होता है। अच्छा बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं, उनको बड़ी जरूरत नहीं है, वो सारे खुद फेसबुक पे पले बड़े और मोबाइल आपका बच्चे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करेंगे बल्कि आपको सिखाते हो, सारे काम उन्हीं से करने पड़ते हैं। तो बच्चे तो आगे। मसला क्या है कि हमारी पुरानी जनरेशन को ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे और उसके लिए ट्रेनिंग। और अभी मैं एज ए कंज्यूमर तो करें, देखिए फेसबुक जितना पाकिस्तान में फेसबुक बहुत कमा रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल सही, और दूसरी कंपनियां हमारे हैं, मगर हम यूजर पे तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने में, मगर प्रोड्यूस करने में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो आगे के और मसला हो जाएगा, अभी तो है ही और ज्यादा मसला हो जाएगा। अब कभी वबाओं की गुफ्तगू चल रही थी, कॉन्गो वायरस अफ्रीका से नहीं आ रहे हैं, जरा चेक करना चाहिए, ऑटोमेटिकली पता चल रहा होता है कि जगह पे ये सिम्टम्स है जाते हैं,
लेकिन कोई नया वायरस आने वाला है, वो दुनिया के किस खित्ते को मुतासिर कर सकता है, इसकी भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ काम हो रहे हैं? अब देखिए, काम तो बहुत हो रहा है। थोड़ा ये है कि हमारे ना अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो पाता है ना इस मुल्क के अंदर, तो वो हमारे थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस ही हो पाता है। पॉलिटिकल विल का जो वैक्यूम है ना, वो हमें बड़ा डिस्करेज कर रहा है। आज आईटी इंडस्ट्री जिस तरह से बात करें, इंडिया तो इतने बड़ा मुल्क है ना, आप कह सकते हैं कि वो बड़ा मुल्क है तो इसलिए उनकी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई। लेकिन फ़िलीपींस तो पाकिस्तान से भी छोटा मुल्क है, उसकी 24 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी की। तो ये तो पहले तो ये है कि हम तो गुजारिश यही करते हैं कि जो हमारी जो पॉलिटिकल विंग लोग जो हैं वो अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बना सकें तो इंटरफियर करना छोड़। पहली चीज़ गुजारिश है, अगर आज कोविड पे कंट्रोल हुआ तो ये एक एनसीओसी जैसा इदारा बना था। देखिए, हमारे पास जो अगर आप मेडिकल और इसकी काम के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसका मैं एक चैलेंज को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 18 अमेंडमेंट आई। 18 अमेंडमेंट से हुआ ये कि हेल्थ हो गई डिवॉल्व सो के पास। तो जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि नेशनल स्पिरिट में कोई पॉलिसी बनाई जाए सर्वेलेंस की, तो अब सिंध तो सिंध की बनाएगा ना, पंजाब पंजाब की बना। तो मैं कोशिश करता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट आपका इवेंट है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट सेक्शंस हैं, हेल्थ हो गया जैसे, जिसमें एक नेशनल पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है और उसकी कोलैबोरेशन इंटरनेशनल इदारों के साथ होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है, तो अगर ये हो जाए तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एनसीओ उसके थ्रू ही हो सकता है, प्रोसेस के थ्रू ही हो सकता है, जी, वरना कोई पॉलिटिकल क्योंकि फोर्सेस ये है ना जो पूरे पाकिस्तान की चारों सूबों में नहीं, यही तो एक देखिए, और इसी को डैमेज कर रहे हैं ना लोग आज। हो ये रहा है कि हर मुल्क की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, हमारी रिस्पेक्टेड आर्म्स है। पूछे मतलब कुछ और एग्जांपल भेजता हूँ। साउथ कोरिया की क्या है? साउथ कोरिया की मिच्योर डेमोक्रेसी है। ईरान की क्या है? नेशनल स्पिरिट है। ईरान में 30% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एब्स टर्क्स और कुर्ड्स रहते हैं, किसी को नहीं पता। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे मुल्क की है। आज अगर देखें, ये जो हमारे डिफेंस का एक्सपो सेंटर लगा हुआ है आर्म्स फॉर पीस के शोबे से, और एक्सपोर्ट करने के बारे में और कोलैबोरेशंस डेवलप करने के लिए, इससे सारे मुबादला आएगा, इससे एक इमेज बिल्डिंग भी होती है। आज दुनिया के जनरल और सारे स्टेट मिनिस्टर्स मिनिस्टर ऑफ जो ये जो डिफेंस आए हुए हैं, तो आज वो पीस का एक मैसेज लेके जा रहे हैं दुनिया में। ये चीज़ें साथ होना, कंबाइंड होना, और डेफिनेटली अगर आर्म फोर्सेस लीड करेंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। आज ये जो टॉपिक उठाया गया है, वही आइडियाज़ पे इन्हीं लोगों ने उठाया है जो आज सारे अखबारों की जीनत बढ़ाया और लोगों को थॉट प्रोवोकिंग पे लगाया हुआ है इसने। अच्छा, एक बात मैं बस थोड़ा सा बात को शॉर्ट करते हुए, वो ये है कि आज के बाद जो फ्यूचर वॉरफेयर होंगी, आजकल हम हाइब्रिड वॉरफेयर, पहले हम कन्वेंशनल वॉरफेयर पे थे, अब हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों की। और आइंदा आने वाले टाइम्स के अंदर हम जर्म वॉरफेयर और से गुजरेंगे। और ये कोविड जो है, ये इसके लिए बहुत बड़ी आई ओपनिंग कर रहा है। इसके लिए बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं कि अगर ऐसी वबा कोई आती है, जानबूझ के फैलाई जाती है, और उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। आपका ये जो प्रोग्राम है, ये लोगों को क्रिएट करेगा अवेयरनेस कि इसके अंदर शामिल हो, तो ना सिर्फ कि नेशनल स्पिरिट में, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इसके आप आके पॉजिटिवली चीज़ भी जरूर बताइएगा। मिसाल के पे भी जैसे कोविड आया था, उसमें बहुत सारे लोग आते नहीं थे कि उनके कोविड पेशेंट है, वो छोड़े थे कि उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाना है। तो अगर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू हम कहीं कोई अप्रोच कर सकें या कोई को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ताकि ये आवाम के लिए है, ये लोगों के लिए है, तो हम पढ़ नहीं सकें। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से उन्होंने बताया ना कि उसकी जो वो भी हमने उसकी वो जो ये जो डाटा टैग किया कि कोविड किसका था, जब हम एनसीओसी को रिपोर्ट करते थे, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ कि जो लॉकडाउन्स लगे वो माइक्रो पे लगे, पूरे शहर में बाद में बंद नहीं हो रहे थे, इलाके लॉकडाउन हो रहे थे। और इसमें थोड़ी सी हम सबकी अपनी जिम्मेदारी भी है। ये जो हम चाहते हैं ना चीज़ें, ये अभी बड़ी है। एक चीज़ मैं ज़रूर तो ख़त्म करते वैक्सीनेशन के बारे में बोलूँगा। जो आवाम की आपने बात की ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंसान को भी थोड़ा सीखना चाहिए। उसका ये चाहिए कि आपको मैं बताऊँ कि मैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट हूँ, मुझसे कभी किसी ने कहा कि वैक्सीन लगाने से मैं तो मफलूज नहीं हो जाए, आंखें तो अंधी नहीं होगी, दिल की धड़कनें तो बंद नहीं होगी, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट डायबिटिक हूँ, मेरी बीमारी तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, जिगर तो नहीं फेल हो जाएगा।
हमारे लोगों को यही परेशानी थी, बच्चे पैदा हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो ये कॉन्सेप्ट एजुकेशन से फैलेगा। अगर आज एजुकेशन नहीं और लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुई तो डेफिनेटली ह्यूमन फिर रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो इसलिए बेहतर है कि टेक्नोलॉजी नहीं और इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी विजडम को लेकर। बिल्कुल, काफी पैगाम हमारे यंगस्टर्स के लिए आपकी जाएगा, क्योंकि डिस्कशन के बाद एक तो क्लियर हो गई कि कोई एक डिपार्टमेंट, एक शोबा ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत ना पड़े। कोई भी सेक्टर अब ऐसा बचा है और बल्कि इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने तमाम उम्रों को और मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो जो हमारी जवान नस्ल है उनके लिए आपका क्या कैमरा है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त चाइना की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है, इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है। आप उसका रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत सारी और बातें महंगात की, मगर मेन वजह यह है कि ये राइज ऑफ द क्लासेस इन एशिया। अच्छा, जो ये मिडिल क्लास के आई है, इनके पैसे हैं, ये सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से कमा रहे हैं। ये चाइना में बैठ के एक बंदा लाख 1.5 लाख कमा लेता है, जो कि पहले $200 पे था मिडिल क्लास में। आपको अपर मिडिल क्लास का है तो वो गोल खाएगा। अगर हमने अपने आप को इंडियन इकोनॉमी से नहीं जोड़ा और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी से नहीं जोड़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें खाना भी हो जाएगा। और अभी भी आप देखें गोश्त कितना महंगा हो चुका है। ये जो महंगात की एक वेव है दुनिया में, क्या है कि जो निकल लोग हैं जिनके पास पैसा है मार्केट से उठा रहे हैं सामान, और हम और आप जो पुरानी तरीके से जिंदा रह रहे हैं, हमारे पास पैसे है कि हम उस में खरीद सके, क्या होगा? हम भूख करेंगे, वो खाएंगे। तो अगर हमने जिंदा बचना है, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हमें अपने आप सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वेब3 और जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे सारा भी है। देखो, तीन अलग चीज है और भाई तो सारे अमेरिकन और दूसरे इससे मुल्क हैं वो खा जाएंगे, हमें वो किले में वो छाछ मिलेगी की। तो अगर हमने अपने ब्रेन नहीं किया और अपने आप किया। अच्छा, दूसरी बात सिर्फ ये बच्चों की नहीं है, ये जो भी लोग हैं, मैं खुद 60, मैं तो हर अपने आपको रीट्रेन करता हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ, मेरा दो जो मेहमान बैठे हैं दोनों भी आप रोजाना पढ़ते हैं आपको। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारी उम्र जो भी उम्र है, अगर नए दौर अंदर रहना है तो नए तरीके से रहना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे आइडियाज 2022 के मेहमान बने, टीवी के मेहमान बने, बहुत शुक्रिया। और इसी अगर आप कोई कंप्लीट हुआ, कुछ अगर कहना चाहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर जी। असल में देखें, ये हमारी आंसर्स के लिए, मैंने अभी पॉपुलेशन की कहा था, हम फोर्सेस बात ये समझ, देखिए हमने एक लेवल का प्रोडक्ट बनाया JMT, जो 5th जनरेशन क्राफ्ट है। जब ये पहली बना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शामिल थे, तो ध्यान हो गया जब मेरे उनसे थी कि माशाल्लाह मावर नया दौर आ रहा है। अब 5th जनरेशन स्टेल्थ और इस टाइप के 6th जनरेशन फाइटर बन रहे हैं। जनरेशन फाइटर और 7th जनरेशन फाइटर में हमारे दुनिया के बेस्ट पायलट्स हैं, मगर एट द टाइम 7th जनरेशन आएगी तो पायलट की जरूरत नहीं होगी। जो इस वक्त नए किस्म के जो 7th जनरेशन में अभी एक्जैक्टली डिफाइन नहीं हुआ, मगर 6th जनरेशन जो फाइटर होंगे वो रोबोट्स होंगे, वो ड्रोन होंगे, और वो उनसी फाइट होगी क्योंकि इसे पायलट है वो 9G से ज्यादा बर्दाश्त नहीं, ड्रोन तो 3G बर्दाश्त कर लेगा जब टर्न होगा। तो हमें ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अगर हमें जिंदा रहना है, मिशन के लिए तो मैंने बता दिया, आर्म फोर्स को लेटेस्ट फेयर और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज जहाज JF-17 और FC को इधर फर्क नहीं है, मगर जो F-35 स्कैट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर दैट इज द, तो हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच जिला खान साहब, थैंक यू वेरी मच मेरा अतर साहब, थैंक यू फरहानी साहब, बहुत शुक्रिया। इसका जैसा फरहान भाई फरमाया कि आर्म फोर्सेस हैं, ये मैंने कल भी जब मैंने इंटरव्यू दिया तो इसके ऊपर मैंने एम्फेसिस किया था, और वो चीज़ ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो दुनिया के अंदर मानी जाए अपने नज़्म एतबार से, कंट्रोलिंग के एतबार से, अपने काम के एतबार है, तो कोई भी काम जिस तरह हर के अंदर किसी एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज किसी शख्स के अंदर, इसी तरीके से हमारी आर्म फोर्स कैपेबिलिटी है। इसके साथ साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरीके से ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात मौजूद हैं, हम चाहते ये हैं आर्म फोर्सेस इसके अंदर कदम आगे बढ़ाएं। वो JF-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान के अंदर बना सकते हैं, तैयारा बीमार मुल्कों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई वजह नहीं कि वो एक पूरी जनरेशन को डेवलप करें जो मेटर्स, पाइथन लैंग्वेज और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सपो। तो इसीलिए काम करना पड़ेगा कि आर्म फोर्सेस के साथ प्राइवेट सेक्टर्स को और ज़िया खान साहब जैसी शख्सियत को आगे बढ़ के, सैलानी जैसे इदारों को, JDC जैसे इदारों को, AD जैसे इदारों को आगे बढ़ के इनके साथ काम ना होगा, ब्रिज करगा
और इसके लिए एक पूरा लाहे तैयार करना होगा। इसकी बुनियाद पे अगले 3 साल के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर आईटी एक्सपर्ट्स को पैदा और पाकिस्तान को आईटी की फील्ड के अंदर जो हम इस वक्त इंडिया से हम कह रहे हैं या फिलीपींस से कह रहे हैं अच्छे हैं, हमें इस तरह आगे जाना होगा। लेकिन उसके लिए रिसोर्स जो है मैं समझता हूँ मुज़ब के एतबार से, कंट्रोलिंग के एतबार से, सिस्टम के एतबार हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर अपना रोल उनका हो सकता है। आपका भी एक पैगाम। थैंक यू वेरी मच। मैं यूथ की बात की थी, मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट दूंगा कि थोड़ी जो हमारी जनरेशन है ना, जी जनरेशन, ये हम लोग सोचते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरा क्या है, कुछ करने में क्या फ़ायदा है। मैं उनसे सबसे गुजारिश करूंगा, हम सब ने दुनिया ट्रैवल की है और बहुत दुनिया दे है और रहे भी हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से अच्छी जगह पूरी दुनिया में आज ये जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलप की है, ये सारी एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करें। आप यहाँ पे लोगों जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब लीडर बने और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान को स्ट्रेंथन दें। और अगर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे तो यहाँ के जितने बच्चे हैं, अगर बाहर भी जाता है या सॉफ्टवेयर के लिए जाता है तो उसकी एबिलिटी बढ़ेगी। ऐसी चीज़ बनाएं कि जो वर्ड्स आपके हैं, जो आप किसी कमिट करें उसको पूरा करें। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा, लीडर कमिट ओवर डिवर और पाकिस्तान फर्स्ट। Thank you very much Farhani, thank you very much Muzammil, and thank you very much. It's an honor to chat you और आपके जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे एक्सपर्ट्स को आपने दिया होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस आइडियाज 2022 पर मैं ये कहूँ कि चंद मकासद में से मकसद है भेजा ना होगा, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं दी देती। जो जिला खान साहब ने एक जुमला कह दिया, अगर हमने अपने आप को, अपने इदारों को और अपनी तमाम वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रखने में मददगार होती हैं उनको ज़िंदा रखना है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ख़ास फोकस हमें ज़रूर देना हो और हम सबको देना हो। किसी एक सेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बुनियादी ज़रूरत दिखाई दे रही है और आने वाले वक्त में इसका सहारा नहीं हुआ तो शायद हम सब बेसहारा हो जाएंगे। यानी अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस आइडियाज़ 2022 से इजाज़त चाहते हैं कि आते रहेंगे, उनसे तो हो जाएगी। Assalamu alaikum. My name is Haider Mahbub Hussain and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022 and we are Defense Magazine. This is Pakistan's first national defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry. And I hope all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you much. Hello, my name is Ayhan Şentürk and I am the Business Development Manager for Profen Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995 and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground stations, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-pack terminals, all the way up to 7.3 meter big stations. So as I said, that's our main expertise. That's where our main experience comes from. We're also an engineering company. We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a materials science team helping us with design of our antennas and deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings or tele meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's the first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you.
Assalamualaikum. My name is Haider Mahbub Hussain, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media part of Ideas 2022, and we are which is Pakistan's first international defense magazine. As we are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at stall in hall number 5. Thank you very much. This 2024 brings together stakeholders across defense industries. The exhibit offered platform for G2G institutions, joint ventures and investments in the product sector. A key seminar will also facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of IU from 19 to 2024 at G Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibit offers a platform for G2G, B2G, and
2022 interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A trade talk will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The competition of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Park Global is basically running a buying house. We are facilitating with the different countries buyers with Pakistan industries, and we are giving a one window sport so that the visitor don't have to visit again and again the same stall or the same product. We facilitate them, and with shorter time we make the arrangements. And recently we make 2-3 deals with the Jordan government and Zimbabwe and Nigeria, and by the grace of Allah we are very successfully running this Park Global Supply Solution. In Pakistan, depot is presenting very good opportunity to all our potential buyers, and for the Pakistan industry like small arms and textile industry, it is a big opportunity to produce the items world standards. And for the depot and Badar Expo, I am very thankful they have provided us this opportunity for the international buyer. We are linking them. Thank you very much all. मेरा नाम नासिलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारे वरी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा। ये AI बेस होगा और इसके अलावा स्टोरीज सुनाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन करेगा और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। ये ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब जो कि नेवल कमांडर हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके अल शिफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। मेरा नाम असद है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्लोबल एशियन एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। ये पाकिस्तान की डोमिनेट है कंपनी है। हम आइडियाज का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में फर्स्ट एग्जिबिटर वी हैव हैड द ऑनर के मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे जासन में स्टार्ट किया था और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं, तो इसलिए इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। अपने स्टैंड पे सब हाल है कि 50 से ज़्यादा गेस्ट हैं, उससे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं 9 हॉल अगर हैं, तो दैट मीन्स कि एग्जिबिटिंग कंपनीज पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन बहुत सारे। और मैं देखता हूँ कि जो एग्जिबिशन होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, एक आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद दुनिया के आगे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आकर आपकी चीज़ों को वैल्यू कर सके। आई विश डेपो एंड देयर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad.
वालेकुम, मेरा नाम आफ कटाना है और मैं कॉर्पोरेट सेल सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 25 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और के हवाले से पहचाना जा है। हम लोग आम लोग जो जूते बना रहे के अलावा हम लोग फोर्सेस के लिए भी जूते बना रहे हैं, जो कि कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के, एयरफोर्स के, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीजें भी बना रही है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी के लिए सीन में जो शूज किया जाए के शूज वो बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैस आर्मी के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग अलखाज और अलजरार के लिए रबर पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक जेवी हुआ है चाइना की कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ। पाकिस्तान में पहली दफा ट्रक बस रेडियल के मुतारफ करवाए गए हैं, सर्विस ग्रुप की तरफ से करवाए गए, सर्विस लॉन्ग मार्च से। इससे पहले ये सारे पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते। पाकिस्तान में मार्केट साइज ट्रक बस रेडियल तकरीबन 2 के करीब है एक साल में। और हम लोग जो प्लान इस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2-3 साल बाद 4 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की आ रहे होंगे। और मार्च में ये इनॉग्रेट हुआ है और इस वक्त हम लोग अमेरिका को ये टायर पाकिस्तान से बना के पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात। आइडियाज के हवाले से मैं बात करूंगा कि ये बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से मुमालिक से लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में चलता है और दुनिया को ये जानने में ऐसा होती है कि पाकिस्तान बहुत सी अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नो डाउट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के लिए भी है। I'd like to start with extending my thanks and I would also like to say Assalamu alaikum to all NITIC's members of the Chief Guest Admiral Shahid Mullah Saab, Dean Admiral Ahmed Saeed Saab, and members of the business community, all of us present over here. Assalamu alaikum. Thank you for granting me this audience today. I will be talking about the challenges of our shipping industry from a private sector perspective and how that relates to other stakeholders. The area of focus of this presentation is the energy supply chain. And the reason why I have chosen this topic is because I truly believe that energy is the biggest security factor, and especially a country like Pakistan that is heavily dominant on and reliant on energy that is being imported. Our energy comes from crude oil, from LNG, from coal. We do have indigenous local sources that we are developing, and I hope that goes on and becomes a good percentage of our energy mix. But as of today, we are a nation that imports the bulk of its energy and is reliant on imports. And that import is done through the shipping routes, through the shipping supply chain. And if we resolve those inefficiencies, some of the inefficiencies, and we are also able to capitalize on our existing shipping infrastructure, on its utilization, we can make our energy mix and our energy supply chain much better, and we can be operationally and economically efficient in managing our energy. As you already know, energy impacts all of us, from the gas in our cooking stoves, to the petrol in our car, to the gas and other sources of energy that we need to run our industry, to run our navy fleet, to run our jets, and so on and so forth. So it is a very important factor for any nation. That is the reason why I have chosen this topic. I will be giving a few examples that will show us two sides of a coin about how we are, it will show us why we are inefficient in some ways and how, on the flip side, by taking small measures, we can become much better and much more efficient. So, first of all, I would like to just present the impact of inefficient energy supply chain, or the impact of high energy costs, let's say. So there are three components to the energy supply chain, broadly speaking. One is the product. The product is imported and price is driven by national markets. That is not something that is in whole. The second are shipping costs, which is something we can control because a lot of our energy can be transported through the Pakistan National Shipping Company and its fleet, and we can manage our shipping on that way. I'll come and address that point later in the presentation. The third part is the supply chain, the berths, the storages, the discharging methods, the pipelines, the connectivities. These three make up the energy supply chain, broadly speaking. So a high energy bill translates into inflation, into a current deficit, where we face devaluation, where we face inflation because of the devaluation, and that leads to a certain sort of crisis every night. And also
encourages hoarding because it's an imminent or shortage of commodities and energy products, and that leads to certain sector which hoards the current inventories and aggravates the situation rather than helps it. So if I talk about the oil import, focusing on two products in my presentation, I don't want to bore you too much on this Sunday morning. I will try and keep it simple and not too dry. So I've chosen oil and I've chosen to speak about coal to give you an insight and a holistic view about what can be done. So if we talk about oil imports, we have two ports mainly that cater to our oil imports: crude oil, furnace oil, petrol, diesel. All of this comes through Qasim and Karachi port. I'll talk about Karachi Port. Karachi Port has a number of berths. We have OP1, OP2, DB1, DB2. They all discharge chemical, petrochemical, and cargoes. So we have multiple berths over there. And most of the time, we'll find that there are idle berths at KPT for discharging oil and related products. However, the systems in KPT are slightly inefficient. They haven't been developed. The infrastructure, the pipeline connectivities have been done over the last 10 to 15 years. Now, contrast, if I talk about Port Qasim has very efficient storages. It is linked all the way from pipeline up to Punjab. It has good, but it only has one berth to discharge all oil cargoes. So you see how it has inefficient storage, but multiple berths. But Port Qasim has one berth and multiple storages. So the problem and the solution are sort of one and the same in the sense that if we connect the both ports, if there's some sort of connectivity between both the ports, they could benefit of energy. They could benefit of that. Port Qasim does not need to make more storage, and it does not make more berths. A collaboration, a synergy, a bit of discussions between both the ports will resolve the problem. So without spending much, we will be able to capitalize and increase the capacity utilization of the existing infrastructure. So there's a little example of how we can go about it. Just to give you a little bit more insight, there are vessels that call on Port Qasim. There is empty storages at Port Qasim available, but to just one berth, charging one vessel at a time. We have 5 to 10 vessels waiting for incurring damages to the tune of $100,000 per vessel, sometimes higher. It build up on 10 vessels, that's dollars. And for a country that is working on its foreign exchange reserve, such a situation can be avoided, should be avoided. And there is another port which is not too far away from Port Qasim that has multiple berths. All we need to do is connect them both, so we charge 4, 5, 6 vessels at one time. We can store energy, we can be more efficient. Talk about coal a little bit. We are developing third coal, and I think that is a very good initiative. That is something that should go on. It should become a bigger percentage of the overall coal mix. That will help us not reliant on imported, something we should all prefer. However, reality as of today is that in 2021, Pakistan imported 16 million tons of coal through seaborne routes. And it is expected that with the added power plant capacity and the expansion of the cement sector, this will go up to 25 million tons over the next 2 years. That 6 million tons translates to 290 vessels per annum, approximately 24 vessels per month. And during a proceedings of the support in 2018, there was a decision where all coal imports were destined towards Port Qasim to a single custom-built terminal, which is. However, that terminal also has one berth. It can only discharge one vessel at a time. The time that terminal was being built, Pakistan imported 11 million tons a year. Now we import 16 tons a year. That's not enough. The workers wait outside during high traffic season, and they incur again damages up to $150,000 per annum, per vessel per day. Sorry, and that increases our import bill. And at the same other port, KPT, which is an hour away from Port Qasim, has idle berths lying there that can discharge coal, or a purpose terminal can also be developed at KPT, or some kind of railway connectivity can be done so that the discharging from the vessel on the land and from the factories is much more efficient, and we don't pay extra dollars for our energy. So if I was to sum up the gaps, if you realize both the topics talked about, KPT, Port Qasim, crude oil, coal, we aren't talking about any new projects that we need to do. The idea that I'm trying to float over here, trying to give a dissected bird's eye view, that we have capacity within the realm. We just need to have a smarter approach. There is a concept of smart hubs or smart port, which basically talks about how ports can talk to each other, how they share data on one board, and they should use that data to deploy their capital in a much more efficient manner. So in efficient capital deployment, where one port has an existing capacity which is idle, and the other port is spending more money to build the same storage facility or the same
discharging facility is inefficient capital deployment. A little bit of synergy that we can build between both the ports, between the authorities, that will help them deploy capital in a better way, also make themselves much more efficient by building those synergies between themselves. Another initiative or another drive that we need to focus on is the impact of PNSC, the Pakistan National Shipping Corporation. The Pakistan National Shipping Corporation is a hidden gem that we must focus on. It is the only company in Pakistan that charges its freight in PKR. We don't have any other. If we want to pay for our shipping costs in Pak rupees, we don't have any other option except PNSC. So PNSC should be supported to increase its fleet so that it can cater to maximum energy import. Its focus is already on crude oil imports that come into Pakistan. It should increase its fleet. We are trying to increase fleet. We are talking about how PNSC should be allowed to procure second-hand vessels. It should be exempted from PEPRA rules so that it is able to increase its fleet, and we don't have to pay for our shipping costs in dollars. We pay for them in PKR. In fact, if we build excess capacity of PNSC fleet, PNSC will not only be able to reduce our shipping bill, it will be able to bring in foreign exchange by selling its freight and vessels to the foreign market. Also, if we are efficient and we build this synergy between our ports, we would also be able to benefit from low commodity prices. We all remember when COVID hit, oil went $20, coal went down to $40. China and countries in the region who had efficient energy supply chains, they bought commodities at very low prices, they stored them, and they benefited of them when prices were high. We've seen this same issue with us in LNG. When the prices are very high, we are unable to chase them, and that leads to a gas crisis. So that is another thing that we need to focus on. The government's part, obviously, a little bit of activism, a little bit of synergy, sharing the flow of information. I think platforms like NEMA are a great platform where all of these authorities, stakeholders can get together, their views, help give a holistic view, a bird's eye view, rather than working in small pockets. We can share our information, we can share data, and we can help spend and become much more efficient. Also, incentivize the private sector, and in the private sector, I would always say we should support local companies. PNSC is a great example of how a local company is benefiting us for the same services that we could have taken from national companies. That does not mean that we should discourage international investment or JV, but local companies should be incentivized to build railway routes, shipping routes, terminals, ports, and multiple of those facilities, so that there is more competitiveness, less monopolization, and the market should become more efficient automatically once there is more competition. So that would be all for me, and thank you very much for your time. Brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform G2G, B2B, and B2B legend, joint ventures and investments in the product sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussion on challenges within the defense sector. Collection of ideas will be held from 19-22 November 2024, Karachi Expo Center. Assalamualaikum. My name is Askari. I am business head of dynamic engineering automation. You can see मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कंपनी जो हम ऑल्टरनेट गैस सोल्यूशन पाकिस्तान में आपको पता है आजकल के जो गैस है वो नापैद हो रही है, उसी को सामने रखते हुए हम पिछले कोई 10 साल से उनके साथ 11 साल हो गए हम ऑल्टरनेट गैस सोल्यूशन दे रहे हैं जो कि एनर्जी नेशनल गैस को रिप्लेस करते हैं। LPG बेस्ड सिस्टम होते हैं। अब तक हम कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इदारों में और तकरीबन 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये गैस का सोल्यूशन दे चुके हैं। जहाँ पर कोई गैस नहीं होती है वहाँ पर हम LPG बेस्ड SNG सिस्टम देते हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह से गैस पाइपलाइन में ट्रैवल करती है जिस तरह की नेशनल गैस ट्रैवल करती है। वैसा ही एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है और इसी बिल्कुल सेम बिल होती है। इसमें से अब तक 8 प्रोजेक्ट हम SSDC के प्लेटफॉर्म से लगा चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे जो लग रहे हैं वो SNG पे लग रहे हैं। 7वां प्रोजेक्ट हमारा SNG पे लगा रही है गिलगित के लिए, पूरे गिलगित शहर पे हम ये SNG का सोल्यूशन दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली कराची में हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 8000 घरों के लिए, वो बैरियर टाउन है
जहाँ पर मेरे टाउन के तमाम घरों को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी और मीटर्स के जरिए उनको बिल की जाएगी। वो मेरे टाउन अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है और जो गिलगित का प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आज में भी मतलब इंटरनेशनल एग्जीबिशन वहाँ पर भी हम लोग शिरकत करते हैं। पाकिस्तान से बैठ के हम यूएई में और अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं। So my speech today will be about artificial intelligence and its evolution in the defense market. If we can please have the slides. So in the meantime, while the slide is played, I could probably engage you. You might have heard the word Industry 4.0. And the manufacturing industry, for example, or the broad sense, those kind of words is actually divided into four, paradigms or four periods in which science is built in different ways. So the most recent one, the Industry 4.0 era, actually it comes after the Industry 3.0 robotics, and this one, the current era, which is post 2015, is more about integration of artificial intelligence with all sorts of devices. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, or big data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas. And basically, without all this, without artificial intelligence, nothing would actually work. Because what do we do with all the data that we collect with IoT, for instance? If there is no AI behind it to actually process the data and take any intelligent decisions, then what's the use of having all that data? Similarly, there are examples of, for instance, in medical science, there's research back even in the 90s. This is before the invention of deep learning. Example that with the normal machine learning, a lot of complex medical problems are solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world, the world of today, is perceived as, most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, trying to make sense of that data, and extracting some information, and presenting it in a a way that is useful for human to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real agents, real life, which actually implement AI in the real world. And that is most obvious when it comes to defense products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example, which the US Air Force has. That, for instance, you know that they have already succeeded in flying an F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on a wingman flying with a real pilot, and the plane totally pilotless. And a lot of the decisions to be taken by the Loyal Wingman basically depend upon the data, but they're real-time decisions which have elements of all sorts. The implementation of AI can come from search-based algorithms, it can come from logic-based algorithms, it can come, some aspects of it can come from the machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply in what sort of a problem, in what way. For this reason, what you just said is that AI is as good as the mind behind AI that actually writes the program, right? So the more the comprehensive the data is, and better the mind that is actually writing the artificial intelligence code, that actually gives us the manifestation of how good an algorithm of artificial intelligence will come. So taking the privilege of slides being late and my being able to talk to you, I can tell you a little bit about the AI seminar, which has been a big effort with C4I and with Depo, and it's had several. So it has two components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component, which is today, is with 4 keynote speakers, 2 of them foreigners who have made time to come to Pakistan, and also Dr. Waj Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we're going to have presentation from it's a competition-like format in which papers and projects, ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there, we came down to 70 after evaluation. After 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be presented. So great effort done by Bo and C4I with some input on the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications, or you could say technologies which are useful, in the form of including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there will be a lot of instrumentations and sensors, etc., will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think since there are successful examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second World War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you could see that there's a lot of new resources are evolving, and the technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now, incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin with them. So the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market, dynamics, and trend analysis. Next, please.
Next slide, please. Okay, so a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the Department of AI and Robotics in 2009 at NUST after my PhD from Japan. This is the oldest artificial intelligence robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done, just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually track the real world. For example, the robots that you see on your left and my right, these are the humanoid robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my famous projects that was covered in the media a lot. And this was about 6 robots on one side, 6 robots on the other side, and they're completely like playing with each other autonomously without any human intervention, without even connecting to an external computer, with a pre-trained algorithm which we actually train and we feed inside the robot. And they, work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. There are technologies for rehabilitation, which we have made for Sakura wheelchairs of Japan. And there are other projects for that prosthetic hand project, which we have worked with AFIRM. And this one has tactile sensation, which actually gives back feedback to the humans. And actually, on 2 of these, like soft grasping and the hand projects, we won Best Paper Awards in London and Sydney as well. So the prosthetic leg you see, this is also AFIRM actually. So this is an adaptive leg, which actually adapts to the walking speed of the person. So a lot of like that is just a glimpse of the sort of projects that we do. Next, please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded to the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2016, the government of Pakistan issued a call, all the Pakistani universities, all the professors, everybody, whatever they're doing artificial intelligence, they come forth and look at their research, looking at the background of their work. They awarded funding to 9 labs across Pakistan. I was fortunate to be one of them. And then again, through patient select which one person should lead the whole set. So right now, like I'm leading the center as the National Center of Artificial Intelligence. 9 labs are there, and we've also awarded 12 research-funded projects in different domains of artificial intelligence. So we are very applied. We actually implement AI, and other is deployed in the real world as well. Next. To artificial intelligence significance, we see that the financial impact of artificial intelligence. This saying from Forbes is actually very insightful. That it is forecasted to add $15.7 trillion to the global GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is general purpose. And it has applications in industries like healthcare, transportation, like financial services, energy, so on. Some consider AI to be on par with the revolution of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody keeps saying that AI is so significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So another, for example, that whoever leads AI will rule the world. So all this buzz around artificial intelligence, what's so special about it, and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. So let me share with you a small quote I actually extracted from one of the letters which 3,000 researchers from around the world actually signed and sent to the UN. So this is like the quote reads that autonomous weapons which threaten to usher in the 3rd revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms, amid armed conflict be fought at a scale greater than ever and at time scales faster than human can comprehend. This is the perception about AI right now, particularly with focusing on defense. That the scale of the war and all the speed of the war will go completely beyond the way that we've been fighting wars before. And with completely autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Israel and its neighbor, Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real-world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got the Loyalman project, autonomously flying plane, for instance, we've got Valkyrie, we've got so many other land systems. I didn't show any pictures of naval systems here, but there are autonomous ships as well. There are submerged vehicles too. So there are helicopters. This one, for example, this is like a Black Hawk helicopter. So this is the Alias. Also, there are like land machines. Also, this Mars project, for instance, this Black Hermit, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in warfare strategy, and they actually also not at just this level, also at the tactical level. I'll come back to that next slides. So at the tactical level also, that all these things in together, and there's a tactical framework as well with which you can actually, using the AI governance framework, you can actually apply artificial intelligence towards the strategy of war as well. Next, please.
So there, of course, drones are one example in which artificial intelligence has been extensively, and there are so many examples of drones. Like several of them are teleoperated, but the real manifestation of drone technology is when the planes actually fly autonomously, right? So this is one of the application areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI-powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machines work autonomously within the field. But AI goes beyond that, actually, some of which we examples in the papers being presented tomorrow as well. So there are, for example, mission-picked battlefield robots. Some of the pictures I've shown you. There are unmanned aircraft. There's a formation of the governance of artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks and UGVs. There are like multi-craft coordination and control technology. Then there is autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine surveillance system in general, autonomous land vehicles and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example, one of the projects that we are doing, not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we improve on that using artificial intelligence. So AI extends much beyond the core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if you look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is defense export promotion. So if you look at that, the market is expected to grow at an compound annual growth rate of 0.4% annually. This is according to the evidence. And this is the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now a lot of this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So in the hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound annual growth rate, CGR, expected the hardware itself. So if you take, for example, the global market share, so it's like 28.8% of global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is, so far, the development of AI is fragmented. It's not in just one sector. And actually, Forbes did a very famous article in January 2019 in which they compared the American capability with the Chinese capability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technologies. So hardware and software both. So next, please. There are other statistics as well. For example, in case of the global newswire, they said that the growth rate is not going to be 0.4%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which I did not include in this presentation, but for North America, for example, certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So really huge growth. Wherever people are coming, applying artificial intelligence to the industry, so huge growth rates are expected there. So they talk about that upon the development of autonomous and intelligent weapon systems, it is like the efficient information, you could say, retrieval, the deployment of sensors, and the information is coming, back to you. The raw intelligence comes from the real world data, and also the automation of multi-sensor data fusion, intelligence sensing takes to leverage better situational awareness. And once you have that situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne, and naval assets in battlefield management system to leverage tactical capabilities. So this is, all something which is being worked on by artificial intelligence, like developers who are developing systems based on AI. Next, please. So the way AI works actually is that we have at the level, I think James and I can relate to it much, that the way this AI works is that at the bottom level, there is infrastructure, of course, like there is hardware as well as the core software infrastructure. For example, you need a lot of data to be fed to artificial intelligence through a lot of sensor networks. You require, this can be mobile, this can be cloud, can be Internet of Things, the things I was talking about right at the beginning of my talk. Then on top of it, you've got cognitive systems. And then on top, you've got applications. So the good thing is that a lot of applications are, like, for example, application areas that may be particular to defense don't need generation of a different kind of algorithms. Like, for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also applicable to the military domain as well. So for example, you want to do object recognition or you want to do any activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity recognition will be the same, even though it is applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there is transfer learning and so many techniques that are available to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And actually, this is the reason why some of the game kinds of are related with each other. And we actually want to use this scenario for machines, for example, tanks in the battlefield or aircraft here to actually collaborate to share information with each other and actually fight in the real world scenario. So if you look at, for example, segments in which artificial intelligence is divided, the impact which comes from different areas, right now, 9.6% firms are investing in the data science area.
7.8 in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, aerospace and defense industry. So this is particularly aerospace related defense industry. Otherwise, applications of defense are in all, for example, computer vision. So many applications are in the defense industry. So natural languages processing, entertainment, and the list goes on. I could speak for a whole day just on this. Next, please. So coming to the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side. And of course, some of them have applications toward the defense side as well. So we have been able to generate the product concepts, and the proposals that we've generated are, 221 so far. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done deployed. So we just were inaugurated in March 2018. The financial releases came in 2019. So you can imagine that it's just 3 years of work that we are actually displaying before you. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciaries. Could be very useful for the military courts as well. For instance, what we've done is digitize data from the 20 years history of, and whenever a new case, for example, comes in, you can enter some facts about that case into the system, and the most relevant cases from the database, from the 70 years history of Pakistan database, they actually come up. Even the decisions made directly by the judge himself, like AI, of course, does right now the system AI does just a judgment. So, but even in that case, for example, relevant cases coming in front of the judge can help the judge make more informed decision, right? Thank you. Next. Just go quick to the slides. We're working very closely with Pakistan Air Force for establishment of the NDIC, and we have collaboration. Next, please. Next. So this is one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. And this is a medium AI. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels simultaneously. We know that 5th generation warfare is actually not just in the battlefield, but in every home, right? With the digital devices and television and everything coming into everybody's hands. And for example, documents whatever is said by any person who is saying what, and all the content analysis behind it, give you a complete summary of whatever is happening today as well. So complete perception of what is going on in the media. Next, please. Many of these technologies have now spun off in companies like the last one. And this one, for example, this is where we, for example, detect various vehicles. Some of the applications, for example, are parking space. Next, please. So this is another one for tickets, for example. How many suspicious vehicles or persons could any human possibly remember? So this is AI-based system which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that, it can extract which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a suspicion comes in, it can relate back with the database and stop that vehicle right there. Next, please. So this is another system, for example, that you can detect weapons. For instance, this is object detection. You're actually detecting weapons. And on the left and on the right, you can see activity ignition. So for example, one person is crossing, in a different side, not walking in the direction everybody else is going. This is statistical modeling of the dominant motion in the scene. So we can actually predict with a lot of precision whenever somebody is doing something different from the crowd. So this is good for mob analytics. Next. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever persons, for example, are holding sticks unseparately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed, because in a real scenario, guards are always going to carry weapons, right? So detect weapon only may not mean a lot. But something being done with the weapon actually means something, right? So this is why, for example, this is activity recognition. And when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please. So this is like just a glimpse of the lost and found system that we've been able to deploy with the Punjab Safe City Authority. And I'm happy to share with you that in the recent past year, in one of the very major events taking place in Lahore, we've actually able to catch some of the miscreants using the artificial intelligence-based face recognition technology, using our completely home-developed systems. Actually, next, please. These are medical applications. One system that you develop for leukemia detection and assessment, another one for breast cancer. Next, please. So these are two other systems. Brain-based is a very popular system for brain tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, and all for tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Actually, I think day before yesterday, our system has been deployed in the hospital in Islamabad. So another initiative which we all know about is the AI Tech Verse competition that organized. So this is, initially it was scheduled in these days. We moved on because of ideas, and it's going to be scheduled in the coming February. So if you want, sponsor a prize money of ₹1 million in this for the winner, and if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want nice people to do a product of this sort, you want to offer a prize money, one who develops the best product, you can contribute this. And I also welcome with next, please.
Also, like to address the need of the defense market and particularly the shortage of AI human power, which could actually develop efficient algorithms, a professional level human manpower which is required. We started the Certified Artificial Intelligence program, the CAIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop the expertise, it's a 4-month long course in which they can develop their expertise. Doctor, last 2 minutes. Already finished, sir. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, very much I'll do that. I got the time up reminder, so this is why I really hurried after the piece. Thank you very much. I hope you enjoyed the talk, and I hope we interact and get on real AI stuff together. Thank you. मैं असल में इस इवेंट था 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान ये अगेन बैक, वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है। और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैकएंड के काम करते थे। बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव बिकम टू गुड फॉर दिस इवेंट, एंड माशाअल्लाह इतने अरसे के अंदर दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड इंटरनेशनली नाउ बदर एक्सपो सॉल्यूशन इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजर्स इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा काम है। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अफाद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। फाउंडेशन के इस वक्त स्टॉल पे हम लोग जुड़े, और एएसएफ फाउंडेशन की जो हाउसिंग स्कीम है वो अगर M9 पे आप चले जाएं तो वन ऑफ दी बेस्ट, जिस अंदाज से ये लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। और उनकी टॉप मैनेजमेंट को इस सिलसिले में बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, और उनकी टॉप मैनेजमेंट इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रिगेडियर अरफान अख्तर साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एएसएफ फाउंडेशन। Meetings, I am very
is Badar. I'm director at Private Limited. We are excited from Powerhouse to participate in IEEE 13 Industrial Fair, which is organized here in Karachi by IEEE, and we are participating as a platinum sponsor. We believe that IEEE platform is a great platform which benefits the industry, and it gives us a opportunity to interact with the B2B customers and some foreign delegates who are going to attend this great exhibition in Karachi. IEEE platform and fairs are excellent fairs, and they are providing opportunity for all the commercial entities to participate and exhibit their products, so we can get benefit and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. So I congratulate once again IEEE for organizing such a great exhibition as they also do, and we see that this time again we will meet all our business and our customers and different people who are going in this exhibition. So thank you very much. Hope to see you. इवेंट का रहे हैं शूटिंग कंपटीशन, ये हैंड गन का इवेंट के साथ जो मशाबाज है ये उनके है। एक तो हम जो शूटर्स हैं उनके लिए तय रहते हैं। ये फेस्टिवल इवेंट है जो कि दो डिफरेंट मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, हमारी टीम्स जाती है मुल्कों में ये इवेंट के लिए। तो हमने कहा कि जो बाहर होती है लेट्स बिगिन पाकिस्तान इंटरनेशनल पुलिस एक्शन बैनर हम उसको यहाँ टाइम अरेंज करने जा रहे हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि जितने भी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, चाहे वो नेवी है, रेंजर्स है, एएसएफ है, या इवन जो बाकी जितनी भी पुलिस है, कमांड है, इन सबको हमने इनवाइट किया है। वो अपने साथ जो अपने प्रोफेशनल शूटर्स वो आके इस एक में हिस्सा लें, काबिलियत को सामने इसमें सब चैलेंज किया है। कुछ इसमें खास इनाम रखे हैं, सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज रखी हैं। उसके अलावा जब अरेंज करने जा रहे थे तो 4% तो हम सिविलियन जो थे, जो बहन शूटर्स हैं, उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई हम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हमने एक सेम कैटेगरी रखी है कि उसमें जितने भी सिविल्स हैं जिनके लाइसेंस है वो आके अपनी शूटिंग की जो स्किल्स हैं वो आजमाएं और एक ओपन कंपटीशन में हिस्सा लें। फिर एक हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है 50% हमारे 50+ हमारे है, तो खवातीन हमने स्पेशल कैटेगरी रखी है। इसमें जो भी खवातीन शूटर्स वेपन हैंडलिंग बेहतर है या जो लाइसेंस वेपन वो आके इसमें हिस्सा लें और इसकी अपनी जो स्किल्स हैं उसको पाएं। तो ये हमें इनिशियली 6 सितंबर को डिस्प्ले पे रखा था, मगर क्योंकि चैलम का मौका है और इसमें तमाम हमारे लोग मसरूफ़ हैं तो हमने इसको 9 सितंबर लेके गए। तो 9 सितंबर में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान शूटिंग कंपटीशन होने जा रहा है। तमाम नेशनल इंटरनेशनल शूटर्स होंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है बाहर जाए, और ये जब हम दिखाएंगे कि पीसफुली लोग यहाँ बेहतर तौर पे इस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो ये मेरी तरफ से, पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट के साथ तो कर सक रहे हैं। और इसमें जो लोग हैं सबको मैं कहता हूँ कि इसमें हिस्सा लें और अपने मैं शुक्रगुजार हूँ बदर एक्सपो का, उनकी ताकि वो इसको ऑर्गन में हमारी हेल्प करें और इसको हम एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो इंटरनेट रूल्स रेगुलेशन है उसको करें, और ये जब इसको प्रोवाइड करें तो एक बेहतर क्या पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के साथ। थैंक यू। मतलब ये बताइए ये कंपटीशन है, कितने इसमें शूटर जो है शिरकत करेंगे? डे कंपटीशन है, सुबह 9 बजे शुरू हुआ, शाम को 5 पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके अंदर जो के जो हिस्सा लेने उनका गेस्ट आएंगे, उनके हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से फूड स्ट्रीट टाइप का बंदोबस्त किया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के खाने हम आप लोगों के लिए, जो आप दोस्त आएंगे उनके लिए, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए वो रखा है ताकि एक ट्रेडिशनल तरीके से उनको हम वेलकम कर सकें और उनकी हॉस्पिटैलिटी कर सकें। तो ये एक मेहमान नवाजी होगी सिटी की तरफ से, सिंध गाँव की तरफ से उन लोगों के जो इसमें हिस्सा लेंगे और जो देखने आएंगे। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर इमेज है जो कि हम पेश करेंगे दुनिया के। न सिर्फ कॉम्पिटिशन हो रहा है बल्कि ये इनकी रिवायत के हिसाब से हम उनको मेहमानों का खास तरीके से इंतजाम भी किया हुआ उन खाने पीने।
इसमें इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो 60+ लोगों ने रजिस्टर किया है तमाम पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और लोकल। ये वो लोग हैं जो कि पर्सन है। उसके अलावा सेकंड कैटेगरी मिला के टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 140 लोगों ने इसको अपने आप को रजिस्टर किया है। प्राइस हमने उसमें रखा है कि 1 लाख फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस 50,000 है, थर्ड प्राइस 30,000 है। इसके अलावा हम उनको मिल्स देंगे और ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट्स देंगे। जो पिस्तौल की गोलियां हैं वो जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं जो खुद खेलना और उसकी अपनी तरफ से होती है, उसके लिए हमने वाह फैक्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि वो अपना स्टॉल लगाए, वो बुलेट्स ले सकेंगे और वहीं से वो अपनी शूटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी हमने दिन पहले अब शूटिंग रेंज को ओपन किया है ताकि वो आके प्रैक्टिस करें कि मैच डे पे कोई उनको नया प्राइज ना मिले। तो सबके लिए हमने एक स्टैंडर्ड रखा है, सब अपनी काबिलियत को आगे। इस टाइम जो पाकिस्तान में जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि कॉन्सुलेट्स में काम कर रहे हैं, ये सब इंटरनेशनल मेहमान हैं। उनको हमने जब इन्विटेशन भेजी है तो कॉन्सुलेट्स में सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल हैं, वो कुछ आएंगे जो यूनिफॉर्म कैटेगरी में आएंगे और जो सिविल वो सिविलियन कैटेगरी में। तो जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं दे आर ऑल्सो वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सर ये इस बेस्ट इवेंट को करने का मकसद जो है मकसद ये कि हमारे लिए आप ये मेरी शूटिंग टीम का हो जाए, ये हमारी शूटिंग टीम के कैप्टन है और इसके अलावा शबीर जो कि अभी ड्यूटी सरंजाम दे रहे कराची में। ये वो लोग हैं अपने शौक से इस स्किल को सीख और इन्होंने करी जाके अपने इंटरनेशनल इवेंट्स लिया। तो वो जो लोग वहाँ पे देख के आए हैं हम उसी चीज़ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहाँ पे इनकार कर रहे हैं। नॉर्मली बाहर ये मैसेज पाकिस्तान का एक नेगेटिव मीडिया है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होता है और सेफ नहीं है, तो ये उनके लिए मैं यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल जैसे बाहर के मुल्क में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ऐसे हम भी यहाँ पे करते हैं। और हम तमाम जितने भी फोर्स उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन और भाईबंदी को मेंटेन करने के लिए जब हर जगह से लोग आएंगे अपने एक साथ गुजारेंगे शूटिंग में, तो एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है जो शूटर या वो जो टीम वापस लेके जाती है और वो सेम की मेहनतबाजी से मुस्तफीद होंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो एक पॉजिटिव इमेज है जो ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान हम दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल में के लिए भी हम दे रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर नॉर्मल हैं और हम भी वही चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि दुनिया में किसी और जगह होती है। There नो एज लिमिट, सिर्फ आपका लाइसेंस वेपन होना चाहिए और या फिर आप यूनिफॉर्म पर्सन होना चाहिए, ये दो कंडीशन और उसकी हिस्सा लेने के लिए। रिसेंटली हमने देखा कि जब शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा था तो से एक्टिव फोर्सेस भी बनाई गई, अब वायलेंस हो गया स्ट्रीट क्राइम में, तो अब क्या एसएसक्यू प्लान कर रहा है एक्टिव हो रहा है? अभी 15 का जो गेट काउंटर हुआ था आपने विटनेस किया, वो लोग कौन थे? तो एसएसयू ही ऑपरेट कर रहा है, एसएसयू की टीम वहाँ बैठी है। ये स्ट्रीट क्राइम में हमारा एज अ फर्स्ट राउंडर जाते हैं डिफरेंट तरीके से। जब भी हमें रिक्वायरमेंट ये कि कहीं पे अगर कोई सेंसिटिव एरिया है या ज़्यादा है तो हम पेट्रोलिंग भी अपनी बढ़ी, मगर उसके अलावा जो 15 जो सर्विस है दैट इज डन बाय द एसएसयू के लोगों से और हम की मदद उसमें कर पा रहे हैं। उनकी एक इस वजह से एक कॉन्फिडेंस है पब्लिक शहरियों में कि अगर हम वाइप कॉल करते हैं तो टाइम से पुलिस आ जाती है और ये डेटरेंस है क्रिमिनल्स के लिए उस चीज़ को रोकने का अंदर। तो हम अपनी जहाँ जहाँ पे भी हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं उसको कर रहे हैं और आइंदा इसी तरीके से करते हैं। स्केटिंग फील्ड बनाई थी। स्केटिंग फोर्स का मकसद था कि जो हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ के लिए, अभी जैसे इसलिए मैं वुमेन क्रिकेट टीम है, अब जब हम पब्लिक के लिए खोलेंगे तो जो स्केटिंग के जो लोग होंगे वहाँ पे हेल्प करने के लिए मौजूद होंगे। जो स्केटिंग फोर्स का था कि के अंदर जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सके या जो वो जगह है वहाँ पे, मगर यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए उनको हमने लिमिटेड किया। वो 20 लोगों की टीम है, वो जहाँ पे रिक्वायर्ड हम उसको भेजते हैं, मगर उसको हमने स्पोर्टिंग इवेंट रखा है। अभी आप देखें जब टीम होगी मैचेस होंगे, जब खवातीन आएंगी तो आप लेडी कमांडोज स्केटिंग में देखेंगे, उनके लोगों की हेल्प करते हुए, उनके साथ फाइट करते हुए और बाकी हमारे मेल कमांडोज को भी देखेंगे। तो दैट इज फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स ओनली। कहा गया कि एसएसक्यू कमांडो जो है वो सड़कों पे थाना पुलिस है गरीब मौतों की कहीं पे एसएसक्यू कमांडो की गाड़ियां और जो पेट्रोलिंग को दिखाई नहीं देती है। इस तरीके का क्या आपने बनता है मुकाबला किया और हमने रैपिड रिस्पांस की, वो तो बनता है कि एक अलग बात अलग से होती है। लेकिन जो एसएसक्यू के कमांडोज हैं हॉट्स पे खड़े होते थे, एक दो दफा जो है वो तस्वीरें भी शायद की गई थी, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दी। जब कराची की तरफ से रिक्वायरमेंट कि मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम उसको डिप्लॉय करते हैं। उसके अलावा 5 की भी हमने स्ट्रेंथ की है, वो एसएसयू के कब से की है, तभी ये पॉसिबल है कि 30 में वो 24 काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। जब भी हमें रिपीट आएगी मजीद तो हम इंशाल्लाह उसी तरीके से उसको भी कवर करेंगे।
लोगों के लिए क्विक रिस्पॉन्स भी थी। अच्छा, बजट के हवाले इसमें कोई बजट नहीं है, जो फीस है उसी से हम का जो वही निकालेंगे, प्लस स्पॉन्सर्स का जो फूड अरेंजमेंट है, फीस हमने रखी है फॉर यूनिफॉर्म पर्सन 5000 सिविलियन पर्सन, और फीमेल कैटेगरी भी 2000 फीस। अगर ये पूरी दुनिया में जो सेफ्टी इदारे हैं वो एसएचयू फॉलो कर रहे हैं और एसएचयू की जितने भी इवेंट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो बात कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बात है कि हमारा मुल्क में एक ऐसा इदारा है जिसको हम एग्जाम्पलरी तौर पे पेश कर सकते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस से खाली ना सिर्फ ये कि उसको प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि आगे लोगों के लिए भी हम एक उम्मीद करें कि जब एसएचयू के जवान बेहतर हो सकते, बाकी पुलिस भी हो सकती। तो एक बेहतरीन हमारा इकदाम है। इस टाइम अगर हम परसेंटेज में देखें तो हम 2% है सिंध पुलिस के, तो 2% बेहतर हो गया है। 98% इंशाल्लाह पुलिस का बेहतर होना बनता है। इस तरीके से अगर लोगों की हम खिदमत कर सकें, उनकी बेहतर सिक्योरिटी दे सकें, तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है पुलिस में वो बेहतर होगा। जी, ये हमारा जो कंडी में एसएसयू का हेडक्वार्टर है, वो पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं और वहीं पे हम सारा कुछ शूटिंग रेंज सारा वहाँ पे हमने बनाया हो जाए। इंशाल्लाह टाइम लगे, चीज़ों को सिस्टम ठीक होने में बन सकती है। एक की तरफ ज़्यादा मैशरूफ देखें कि मोटरवे पुलिस जो कितना बेहतर होगा, उसी पुलिस लोग जाके वहाँ पे काम करते हैं तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं और पब्लिक भी उससे मुतफ़िक़। इसी तरीके से ऐसे तो ये एक स्ट्रगल है, टाइम है चीज़ों को, मगर ये बेहतरी की तरफ डालने हम चल रहे हैं। वक्त आएगा कि सारे इसी तरीके से बेहतर तो काम कर सकते हैं। हम ये सकते हैं कि जो मीडिया के दोस्त हैं जिनके लाइसेंस वेपन हैं उनका आपस में मुक्त कराएं, उनके स्पेशल टारगेट देंगे। आप अपने व्यापार हैं वो मेरी तरफ से चार्ज है, आप अपने वेपन्स के साथ अपने आपस में मुकाबले, उसकी हम प्राइस की कैटेगरी अलग से करें। उसमें आप रिक्वेस्ट सर, और अब ये हो रहा है बहुत जल्द ये आ जाएगा, तो आपने इतना अर्सा किया, अब ये एक्चुअली हो जा रहा है, तो उसमें ना होना के लिए फीलिंग है। सवाल से ये भी सामने चीज आ कि आपने कोई चीज प्रपोज की थी, एनआरटीसी को दे दिया गया बजट और आप नहीं चाहते थे कि आप बहुत ज्यादा लो कर रहे थे, लेकिन आपने जो एनआरटीसी किया, इसमें क्या होगी? उसमें जब प्रोजेक्ट होता है बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होता है, ये आप सबको पता है। हम और इसमें हम करते हैं कि अपनी तरफ से करें, चाहे वाई करे। हमने हमारी मेहनत का फायदा हुआ कि हमने प्राइस लॉक कर दी है, वो मार्जिन्स खत्म किए जो लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट के बढ़ रहे थे। तो प्रोजेक्ट की ऑफ करके हमने जो 200 मिलियन की कॉस्ट थी 100 मिलियन में, अब 100 मिलियन पे ही चाहे वो ए टीम करे चाहे बी टीम करे, उसका ये फायदा हुआ कि हमने डायरेक्शन से दी, हमने बता दी कि किस तरीके होगी, और हमने एक सैंपल के तौर पे पूरा एक सिस्टम बाहर लगा दिया, अभी भी लगा हुआ है, तो फॉलो करें तो हो जाएगा। इंशाल्लाह उसी गाइड पे करेंगे और इसमें जब भी होगा उनके लिए बेहतर होगा, इसके बेहतर होगा, यहाँ के आवाम के लिए बेहतर। तो इस चीज से हमने इंशाल्लाह होप के आगे भी चीजें बेहतर होगी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल मुगीस है और मैं बीटीएल मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे पास कंप्लीट रेंज है, जिसमें हमारे पास सेगमेंट में है इक्विपमेंट्स हैं और हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं वो हमारे पास है। हमारे पास हमें जब ये एक्सपो के बारे में पता चला, हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यहाँ के मैनेजमेंट ने हमसे रहा, हमने उनको बारे में बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर काम, क्योंकि हम आप देखते हैं यहाँ पे पूरे एक्सपो में सब लोग अपनी मशीन्स को लेके आए हैं। एक दुनिया न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, रोबोट के ऊपर जा रही है। सेम इसी तरह सामने यहाँ पे हमारे पास सुपर इंडक्टिव सिस्टम है जो कि एप्लीकेटर बॉडी है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर ये हेल्प करती है, जो कि आपके बोन्स ट्रीटमेंट्स को, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स को ये हेल्प आउट करती है फिजियोथेरेपी के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। सुपर इंडक्टिव सिस्टम जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया में शायद ही बहुत कम कंपनीज है जो कि इसके ऊपर, चाइनीज बहुत जो कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो यूएसए ब्रांड्स हैं, वो अपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारे पास इसी तरह का सेगमेंट में जो कि हार्ट से रिलेटेड मशीन्स हैं, ईसीजी मशीन, ईटीटी मशीन, हॉल्टरलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास उसमें। सेम इसी तरह हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट्स की मशीन से डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग पूरे पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे सामने फिजिकली भी लगी हुई है, हमने डेमो पे लगाई हैं। हमारे साथ एक्सपो सेंटर वालों ने बड़ा ताउन किया। मैं लाहौर से हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे और मुझे मैनेजमेंट अच्छी लगी है, ये सपोर्टिव है और बार बार आके उन्होंने फिर चीज़ें पूछी भी हैं, कोई मसले मसाइल वगैरह। और
मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट में रह के आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेन चीज़ ये होता है कि पेशेंट फैसिलिटेट किया जाए, उसको हम लोग क्या करते हैं कि पैसा चढ़ लेते हैं, डॉक्टर्स चार्ज करते हैं, लेकिन उसको फैसिलिटी उस लेवल की प्रोवाइड नहीं की जाती, जो कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को, डॉक्टर्स को बताया जा रहा है, जो स्टॉल्स पे आ रहे हैं। इवन ADC वाले भी आए हैं हमारे पास, जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में फाउंडेशन है। तो हमने उनसे भी बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमने डॉक्टर से भी बात की, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आनी चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये मशीन होनी चाहिए। थैंक यू। Next 2 minutes, I shall briefly touch on today's overview of the Transport Promotion Organization and the ideas. Mainly relating about the objects and what the organization does by itself. And thereafter, we will tutorial documentary which will show journey of the activities of ideas. It was started under the job headquarters, which was later placed in Ministry of Transport Volume 2. Since then, the depot is working under the MODP. The basic aim was to promote objects, past and militaries and promise, and advance its full potential. All functions of the are performed on a corporate model with no financial burden on national exchequer. The statement, which has been spelled out through the depot, reads: as a national platform provides support to the defence manufacturing sector and to promotion, facilitation, and coordination for sustained growth of defence exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation, and coordination of the business opportunities and networking for the defence industry. It organizes defence actions both inland and abroad, including the flagship event of the IDEA, such as Pakistan played across the globe. Even in this regard, the approach established 14 Pakistan pavilions annually across the globe in different countries for our defence production enterprises. We also had the unique honor of
organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the EU has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defence Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence Exhibition at the Double Expo Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the DAPO also maintains an international standard display center here at Islamabad. We've carried out an extensive mapping of the private defence industry wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defence manufacturers. A comprehensive defence products catalog has been prepared, which is not available online, but has already been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the DAPO also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Well, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the DAPO, which is basically focused on advertising of the private defence industry and wherein private sector is facilitated for international participation. It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defence Show KSA without the government support. However, the participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defence as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small scale manufacturers basically to link them with the large scale manufacturers and our private and public large scale defence production enterprises. Now over to the flagship unit of Ideas. As you are aware, Ideas is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply guarded, mutually beneficial relations. Gentlemen, the main objectives which are actually desired to be accrued out of the Ideas include provision of the business opportunity for the defence industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defence exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defence diplomacy. Now with this gentlemen with the brief introduction, I shall now take you to a documentary which will actually show you both whatever I have spelled out about Ideas and DAPO, how it actually leads to this where we are today. Thank you very much. जी मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो आईडी एक्सपो है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हु के डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डैपो को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये डैपो ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान में मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं
उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हियर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। बजट में अब बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का स्टॉल इस वक्त तवज्जो का मरकज है। M9 पे बिन एहसान बिल्डर्स डेवलपर्स और इनकी ग्रीन सिटी जिस अंदाज से काम कर रहे हैं आप जाके देखें, आप शानदार काम और जिस नर्ख में और बचत एक्सपो में जिस बचत के साथ अगर यहाँ पर आप आ रहे होंगे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतने कम पैसों के अंदर आपको अपना प्लॉट मिलना इतना आसान काम का ही नहीं देता। लेकिन ये बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बहुत बड़ा काम है। इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फाद एहसान भाई इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए। फैसल एहसान भाई जो है वो इस वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त फाद भाई के साहबजादे और डायरेक्टर होते हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रैयान बिन एहसान मेरे साथ इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद है। फहद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रैयान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे नसीब भाई, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रैयान, जबरदस्त किस्म का काम आपका, लेकिन बचत एक्सपो में कैसा फीडबैक रहा बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए? एक तो ये इनिशिएटिव अच्छा था, मैं क्रेडिट्स देना चाहूँगा JDC फराबाद साहब को और हमारे गवर्नर सबको। एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा, उसके बाद जिस तरह का यहाँ की आवाम أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إن لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शफाअत नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरता। मैं 2012 से 12 रात का इवेंट के अंदर अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द इवेंट्स दुनिया की फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है, और इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे, उसी बेहतर लेवल पे जाए। मैं उस वक्त डेपो से था, डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे पास कई मरतबा इंडिया का था फॉर आइडियाज़, एंड कई मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडिया नहीं था, बैक करके काम करते थे। बट देन विद पैसेज ऑफ टाइम दे हैव बिकम टू गुड फॉर द इवेंट, एंड माशाल्लाह इतने अरसे के अंदर दे हैव इम्प्रूव्ड, and internationally now the association is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। मेरा नाम असलम खान है, चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज के हवाले से आज ब्रीफिंग रही, और हमें जिस तरह बताया गया कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज्यादा ममालिक हैं यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज से हम कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं, और ममालिक भी हमारे आ रहे हैं जिनके साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात, आरिफाई ताल्लुकात। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो हमारा तैयारा है अंडर 17 उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी किया। माजी में हम बात करें अल-ज़राअ टैंक, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में सकते थे, और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की बहुत हौसला अफजा है हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की बात करें वो इंतहाई, और मैं कहता हूं कि ये दिफाई नुमाइश है, ये भी मजीद जो झंडे गाड़े की मजीद कामयाब होगी, और ये सिलसिला इसी जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारे के लिए बायस इत्मीनान अफवाज है वो अपना तैयार है किसी भी दुश्मन की जारियत का मुकाबले के लिए हम जो है अब पूरी तरह तैयार हो। आइडियाज़ 2022 फाइनल इवेंट हर 2 साल का होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट सके तो ये अब 4 साल बाद रहा है, तो उस वजह अब इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम इंशाल्लाह पूरी तैयार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 18 में जिस तरह कंडक्ट किया था उससे मज़ीद बेहतर और इंटरनेट पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो। हमारा काफ़ी हाई लेवल डेलीगेसी कन्फर्मेशन आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से बस डिग्जात, और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस है, वो ये है कि ना अपनी जो पब्लिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उसको भी इस लूप में लेके आएँ, तो उनको भी एक आउटलेट दें ताकि उनके सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शेयर कर सकें। इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे कि जो मुल्कों से आए हुए लोग या जो हमारे लोकल हैं कि वो जो दूर मुल्क से आने वाली कंपनीज हैं OEM उनके साथ एक्ट करें, उनके साथ लगाएं, और इसके साथ अब जो हमारी लोकल कंपनी है एट टाइम्स उनकी वेंचर्स होते हैं बाहर की कंपनियों के साथ, डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा लेवल का ये इवेंट है जिसमें दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की चीज़ अब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेकाद करेगा तो इसका ज़बरदस्त बहुत मैसेज है, जो लोग यहाँ आएंगे वो लेके जाएंगे, पता चलेगा कि पाकिस्तान इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट आ सकता है। और तमाम जो अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हुआ करते थे,
और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड बाद के जो हालात हैं, बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना, ये हमारी इकोनॉमी को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार मुनक़िद, जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो कल उसका इनेकाद रहेगा, और सर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसी तरह जो सेकंड टियर का नेक्स्ट डे पे करा जाएगा, दैट विल बी सेकंड डे ऑफ आइडिया। उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट उन्होंने इस पे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो आगे अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रिंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया, वो सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू कराची एक्सपो सेंटर उसके बाद जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम अपने मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्न हमेशा हमें मिल रही है। पास्ट में भी, इस दफ़ा भी मैं खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टेयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड एट CM's वेरी काइंड ऑफ हमने उसको शेयर किया, और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से CM से इंशन मिली, वो बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ में दिया, तो उससे चीज़ बहुत हमारे लिए आसान थी। Assalamu alaikum. My name is Mohammed Arsalan Khan. I'm based at Shibli. Shibli is Pakistan's only private manufacturer of thermal images. We come to IDEA third time. We have been regular participant in the IDEA Expo. IDEA is a very good platform for Pakistani companies, private or national, to demonstrate what sort of capabilities in the defense industry, and we can sort of capability can export and assist the other armies of the world. I would also like to thank Badar Expo Solutions, because Badar Expo is basically organizing the whole event, and they're doing a very good job. We have launched 2 new products this year, SUA MP and SUA Mini at IDEA, which are binoculars with the LRF. This is this is SUA MP mounted over here, which is a LRF based SUA binocular that can be used in or night time to give the forces image with the exact and accurate range of target. Thank you. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनियल इवेंट हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके, तो ये 4 साल के बाद हुआ। तो उसकी वजह से अब इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम इंशाल्लाह पूरी तरह के तैयार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 जिस तरह कंडक्ट कराया गया उससे मज़ीद बेहतर हो, और नेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन कंफर्मेशन आ चुकी हैं, जो कि पूरी दुनिया के तमाम से हमारे पास डिग्नेटरीज और एग्जिबिट भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक जो चीज़ के ऊपर फोकस किया है, ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक की डिफेंस इंडस्ट्री है, साथ साथ अपनी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है, उसको भी इसके लूप में लेके आए और उनको भी एक आउटलेट ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है शोकेस कर सके। इस वक्त इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत के लिए एक जो दूसरे मुल्कों से आए लोग हैं या जो हमारे लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं वही हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को बढ़ाएं, और इसके साथ साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स जॉइंट वेंचर्स होते हैं मुल्कों की कंपनियों के साथ, डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए अच्छा है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल में आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ एक पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया, तो इसका बहुत
ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज है। जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल बहुत बड़ा इवेंट करा सा है। और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारे साथ वो सिक्योरिटीज़ नहीं जो हुआ करते थे, और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के हालात हैं, उसके इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना, ये हमारी इकॉनमी को भी इंशाल्लाह से फ़ायदा होगा। इस पर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम करवा रहे हैं, जो बेसिकली 2 सेगमेंट्स में, जिसका सेगमेंट 1 है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा, और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इधर सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा, दैट वी थिंक ऑफ आइडियाज़ के अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो उन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बाकी अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इन्वाइट किया हुआ, वो इनको लेंगे और डेफिनेटली मैं कुछ इनसे सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कों, आइडियाज़ के जो न्यू है कराची एक्सपो सेंटर के बाहर की कोई जगह, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है, और जो एग्जिबिशन हॉल्स गए, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो, और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास्ट में मिली है, और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने शेयर किया, और वहाँ पर तमाम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स मौजूद थे, उनको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिली, बड़ा पॉजिटिव हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने साथ हमें दिया, तो उससे बहुत हमारे लिए आसान है। जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं, तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है। और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है, और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें, और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं, और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद ही यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं, और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ऑर्डर्स मिल सकें, और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें, और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है, और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिल के एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी एफर्ट्स होती हैं, और ये पूरी टीम जो है वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह पे काम कर रही है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप
की चीज़ें होती हैं, आप उसको समझते हैं वो कितना एक पीक टाइम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा टीम उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स उसको मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी कि लोग कंपनी के ऊपर और बदर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए, और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आप सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टेम बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से एक सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये इवेंट रहा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम असद कमाल है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। GIDC पाकिस्तान की लार्ज स्टेट ओन्ड कंग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं, और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडिया स्टार्टेड। I've had the honor कि मैंने इसको देखे ग्रो करते हुए 2022 है, अब चला 9 हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हमारे अपनी स्टैंड पे इस तरह 50 से ज़्यादा केसेस तो मैंने खुद रिसीव हैं, इससे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं तो दैट मीन्स एग्जिबिटिंग कंपनीज पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन, बहुत सारे और मुल्कों का इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखता हूँ कि जो डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद भी आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आके आप चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं। आई विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीना आमिर है और मेरी एक ब्रांड है। मेरे ब्रांड का नाम है अनी 51 और मैं स्टोर चलाती हूँ, और इसमें आपको घर मेरे ऑनलाइन स्टोर पर आकर परचेज़ कर सकते हैं। और अभी का मैंने फिलहाल यहाँ पर बच्चे का मैंने स्टॉल लगाया हुआ है, तो उसमें आप मेरे पास ना डिस्काउंट के प्राइस में हर चीज़ अवेलेबल है। आप ले चाहें हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल। 5 p.m. मैं समझता हूँ कि जो आइडियाज़ है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, ये पाकिस्तान के बहुत एक अच्छा मौका है जहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ अपने गवर्नमेंट के दिफाई सेक्टर के लोग बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपनी चीज़ें 85 मुल्कों के लोगों को शोकेस कर सकते हैं। और पर बहुत से दूसरे ममालिक के लोग इधर आते हैं, तो आपस में मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन पर करने की हमारी जो पूरी सलाहियत है बहुत इजाफा होता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है, कोविड गुजरने के बाद ये हो रहा है और बड़े धूमधाम से हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज़ साबित होगी इंशाअल्लाह।
मैं असल इस इवेंट के 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट अंदर मेरी अपनी कोई पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्व होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द टाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है। और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडिया का नहीं था, सेकेंडर के काम करते थे, बट देन with the passage of time they become too good for this event, and mashallah itne arse ke andar they have improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। Federal Minister for Defence Protection, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Singh, the Joint Chiefs of Staff, Service Chiefs, Director General Defence Export Promotion Organization, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organizations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as IDEA 2022. I am very pleased to see the presence of a large number of guests, including honourable delegates, exhibitors, and trade visitors who travel from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strict relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, unity government formed in April this year, the coalition has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we've yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world, it caused economic difficulties for citizens everywhere. In addition to the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision making. This was effectively collective shooting oneself in the foot, and it is something that we must all agree should never happen again in the course of our governments come and go, political parties change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At the time, we focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political, environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement of the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating
in our exit from the FATF Grace, the Financial Action Task Force, on our way, hopefully, for the restoration of our GST Plus status. Just when this looming economic crisis was averted, things started to move in a positive direction. We experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event directly correlates with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we can convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits not only investing these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction and rehabilitation, we hope to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders in the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the Global South for climate finance and climate justice to enable countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in capacity as G77 chair, we have successfully negotiated to add to the 27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we, Pakistan, experienced the devastation of these floods that resulted in 10% loss GDP, that it became evident to us that there was no international finance mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope it was too late for the people of Pakistan to benefit the lack of such a solution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite conflicts. And as we've witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threat to national security, and stability of countries. With rapid advancement of technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security is emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal lines. A considered opinion
that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires much reset in our thinking, as well as the way we conduct the business state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its economic foreign policy and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, present in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations and the bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm, coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, is central to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume of our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments in human capital and professional development in the demand-driven industry. The Unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment, encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry.
In this regard, I look forward to the Ministry of Defence Instructions formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defence industry. Distinguished guests, when we talk about the defence industry, International Defence Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defence technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision of global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defence Production, Defence Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defence sector and promoting international cooperation in the field of defence production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, and the government of Sindh for the successful conduct of this event. I am also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan, Zindabad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Professor Dr. Syed Irfan Haider, the chair, distinguished panel members, General Arif, DG Defence Export Promotion Organization, worthy delegates from the friendly countries, general officers, dignitaries, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great privilege for me to be standing here and thanking the distinguished panel for educating us on a subject which is still evolving but very important for us. I followed discussion with a lot of interest, and I wanted to make some of the comments which I will now be sharing with you. One of the points that we discussed was intelligence. I believe intelligence is the ability to assimilate the information in one situation and then analyze it in a manner that it can be applied in a totally different situation, and also to be able to sift the information from the noise and to be able to make corrections if something goes wrong. So all that combination which is there in the intelligence, which distinguishes us from the animals, we are trying to put it through algorithms into the IT system. So far, the Turing test appears far away. So I think we are not yet in danger of being eliminated by the computers or robots. But at the same time, we have to be very cautious, as Dr. Irfan said in the end, in use of any technology. It can't be panacea for everything. And also, we have to understand that AI's use will vary from situation to situation. Take the example of chess. Now, chess has very defined rules, and chess has two opponents contesting with each other over a board of 64 pieces, 32 pieces over 64 squares. This is something which AI can understand. It can comprehend, because no matter who the two opposing sides are, they have to follow a set of rules, and then they have to apply it on a very, very limited scale. So AI can master chess better than human beings maybe. The other example that came here was that of the stock exchange. Now, stock exchange is a very limited field where there is no opponent. It's just a lot of data crunching and associating it with the happenings around the globe, how they are going to impact it. In normal circumstances,
a flood in China would not be linked with the stocks in New York Stock Exchange. But with the help of AI and giving it a data of years and years, the AI will be able to correlate something which human minds will need lot of exercise to to understand. For a normal mind, it will be, okay, the flood has come in a certain area. How does it affect production? How does it affect the transportation? Does it affect the tanker movement? Does it affect the petrol supply? Does it affect the container movement? With AI being able to utilize a data of years and linking it with everyday stock exchange ups and downs can reach that level quickly where any happening around the globe and its impact on the stock can be worked out. Now, taking these two examples onto the side, look at what is actually warfare and what is defense. War is a contest of opposing wills, but there are no rules. It's not on a chessboard, it's played live. And in this case, the things that are to be discussed or achieved are not a figurative calculation of stock values, but so much of diversification that it will be very difficult for any AI module, any AI system to overrule what a human being can do. Those of us who have been practitioners of warfare, the decisions by a captain with 5 years of service, 6 years of service, and the decisions by a general with 35 years of service, they can't be the same because of the background of 30 years difference and learning that he has done over a period of time. Whether right or wrong is something different, but the decisions cannot be the same. So similarly, giving AI a data, one, that data is not available right now, warfare data. Every war has different dynamics, every war has different kinds of weapons, every war has different kinds of adversaries. Every war has different thought processes on both sides. The man of 1945, Second World War, his way of thinking, and the man of 2022, these are two different things. So war cannot be totally predicted by the AI or cannot be controlled by the AI. Because essentially war is what? It is contest of the opposing wills. In warfare, the main target from day one, from the very beginning of the warfare, has been the will of your opponent. You want to subdue the will of your opponent, and over the years, human beings found weapons and violence to be the key to subjugating the will of the opponent. And they use that to their advantage, and that is what brought us into the domain of wars. Where I see more scope for AI is some part which was discussed here. It is shaping the minds of your opponents and making them capitulate without firing a bullet. By using AI to play with the way they think, the way the society operates, making that society fight with each other instead of fighting outside, making that society collapse internally through economic, through political, through religious, ethnic, or any other kind of warfare internally. So I think that particular aspect of AI is already in play, and we are not yet fully aware of it, but I think this is being played by the global players at various levels, and if we look at it, we are also being subjected to it. Recently, there was a discovery that Indians were operating fake sites and generating fake news to malign Pakistan. Well, this should not come as a surprise. This is what is going to happen. And how much of this is already happening is again something which should interest the practitioners of warfare. The other aspect where I think from what I gathered from the discussion today, AI can help you regulate so many of the mundane tasks which today sap the energy of decision maker, like the logistic calculations, like movement of supplies, like the time taken for move from one place to another, and so many mundane plans. Those can be, computerized and automated with the help of AI with a fair degree of certainty, and of course keeping some breaks in between for the variables which you don't understand. But end of the day,
the major decisions that you make will remain human, and AI will only be used as a decision support mechanism, because it will be able to analyze many of those informations which human beings cannot process at one time. So it can act as a decision support mechanism, but it cannot replace the decision makers right now as we are. Still, it is an evolving field, and like all predictions in the past, it will not be a good thing to predict something which may change very suddenly, and we may find that sometime in near future, artificial intelligence has reached that level where human beings are not required to control. But one thing I am certain, that artificial intelligence can never compensate for the natural stupidity of human beings. And that is what we need to cater for. And as practitioners of war, we need to guard against our natural stupidities. Thank you very much, gentlemen. I once again thank all of you for all the inputs that gave us. You have given us a lot of food for thought, and I'm sure all the people attending here have benefited from this talk. Thank you very much. Honorable Defense Minister, Honorable Manasib, Excellencies, distinguished guests, Assalamu alaikum and good afternoon. It is a matter of great honor for me to extend a very warm welcome to the Defense Minister, Federal State Ministers, Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, legacy of senior serving and retired officers from forces, our guests from national media, business group and government department. We are grateful to the Honorable Defense Minister for placing occasion on the launch National Defense Exhibition and Seminar 2022, better known by its acronym IDEAS. Ladies and gentlemen, we entered into the National Defense Exhibition by organizing the first IDEA in the year 2000 at Expo Center Karachi with 125 international exhibitors and 150 foreign delegates. During the last 2 decades, IDEA has grown steadily in space, volume, exhibitor and foreign delegates. In IDEA 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 231 delegates representing 44 countries. And we are lucky that Jan Ahmed is here, who was the DG then, and we had a record participation across the world. The opportunity to accelerate the IDEA got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID, which was one of the catastrophes of our living. World in general, and Pakistan in particular, fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15 to 18 November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite a gap of 4 years, we have received booking for more than 70% of the available space till today. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger in size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from the honorable invitees. IDEA has established itself as an attractive and grand venue to promote mutual understanding, trust, friendship and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world by showcasing Pakistan's defense production capability in the conventional realm, aimed at exploring ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it aimed at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with their regional and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, cooperate to build defense ties
and find solutions to the problem confronting the region and the world. I wish to make a special mention of Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the Ideas 2022. I would also like to thank Ministry of Communication and Director General for Pakistan Post for according approval for issuing a commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying the holding of 11th edition of Ideas in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the government of State and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his untiring efforts and wholehearted. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. Thank you, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad.
Ladies and gentlemen, in a few I shall brief you on the sales and an overview of the Defence Export Promotion Organization and the ideas, mainly dilating on the objectives and what the organization does by itself. And then we will have a tutorial documentary which will take you through the journey of the depot and the activities of the ideas. Depot was raised in 2000 under joint staff quarters, which was raised under Ministry of Defence Production in 2002. Since then, depot is working under the ambit of MODP. The basic aim is to promote and project Pakistan's industrial promise and defence export potential. All core functions of the depot are performed in a corporate model with no financial burden on national exchequer. The winning statement, which has been signed up for the depot, reads: as a national platform provides support to the defence manufacturing, service and the export chain to promote, facilitate and coordination for sustained growth of defence exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation and coordination of the business opportunities and networking for the defence industry. It organizes defence exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the ideas. Established Pakistan Pavilion across the globe. Gentlemen, in this regard, depot establishes 12 to 14 Pakistan Pavilions annually across the globe in different countries for our own defence production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. Regarding national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defence Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted bi-annually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains an international standard space center here at Islamabad. We have carried out an extensive map of the private defence industry wherein our potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defence manufacturers. A comprehensive defence products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Well, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defence industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defence Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defence, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small-scale manufacturers, basically to link them with the large-scale manufacturers and our private and public large-scale defence production enterprises. Now coming over to the flagship unit of Ideas. As you are aware, the Ideas is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded, mutually beneficial relations. Then the main objectives which are actually desired to be accrued out of the Ideas include provision of the business opportunity for the defence industry, both for the global international exhibitors as well as the domestic exhibitors.
attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors, demonstrate organizational skills and increase in the defense exports, image building of the country, promulgate Pakistan's point of view internationally, and reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now, with this gentleman, with a brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these what I have spelled out about ideas and depot, how they actually reached to this where we stand today. Thank you very much. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ऐ अल्लाह इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत
और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। It is indeed a matter of great pleasure to see the international contribution popularly known as Ideas Against the Advancement Field. The exhibition has grown in scope and stature in a span of 22 years, and I feel satisfied to see Pakistan's achievement that we do promise. Over the years, Ideas has become a great place for defense experts, high-level defense studies, analysts, and trade visitors from all over the world. This rendezvous, Ideas provides excellent opportunity to develop better understanding and friendship, networking of defense industry, trade and joint ventures, and more importantly, seeking affordable solutions to meet the challenges being faced by the defense industry. I would say I am really proud of the progress which I have made and which is evident by an overwhelming participation of traders, exhibitors, delegates, and visitors in Ask Ideas held in year 2018. Honorable guests, Pakistan harbors no aggressive demands against any state, but we are determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Armed forces of Pakistan are battle-hardened and known for their fascism the world over. Our contribution towards the UN peacekeeping missions and our performance around the globe is a clear manifestation of devotion to duty and professional skills. The motto of this exhibition, Arms for Peace, also highlights our commitment to the international community for peace and harmony. Pakistan will, inshallah, continue to develop our military potential that guarantees peace with honor and dignity. Towards this end, we have been able to develop significant capabilities for indigenous production of sophisticated weapons and equipment. It is a matter of great satisfaction that besides meeting the domestic requirements, our defense products are now gaining market shares at the international level as well. Praiseworthy progress has been made in production of complex systems like main tanks, UAVs, armored vehicles, air-launched munitions, fast-attack missile crafts, maritime battle vessels, fleet tankers, modern jet aircraft, and aircraft-related technology. I see a great potential in our defense industry to export its products on competitive basis through responsible arms trade. Honorable guests, holding of IDEA is a reflection of Pakistan's consistent efforts to galvanize the industrial activities for production of defense equipment through collaboration and joint ventures. In addition to indigenous production, having overcome the effects of unprecedented and devastating COVID-19 pandemic, which affected the whole world, we are back in business with a renewed zeal and enthusiasm. I wish the organizers of this event success in the conduct of Ideas 2022 and look forward to an overwhelming participation from defense industries from inland and abroad. We would warmly welcome the foreign defense delegates and trade visitors to Ideas 2022 to be held in November this year after a gap of 4 years. I also congratulate all the defense-related as well as other business-associated community and media houses who have selected the mega event of international youth for participation and sponsorship. I thank you all. Pakistan, my God.
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असफ़ान अली शेख है। हम यहाँ लिबास स्टूडियो में हैं। हमारे ब्रांड पे जो होती हैं, जो अनस्टिच कपड़ा भी आपको मिल सकता है, इसका जेंट्स का सिलसिला भी सूट मिल सकता है, उसमें आपको चेक वाली शर्ट भी मिल सकती है, कैजुअल जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्राउज़र, टी शर्ट्स, लेडीज़ जो भी ब्रांड में आपको अवेलेबल सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारा डी मार्ट ईरानी कॉन्फेक्शनरी ग्रोसरी स्टोर है, बेसिकली लोकेटेड सोल्जर बाज़ार से है। यहाँ एक एक्सपो के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने इसको अवेल किया। हमारे पास यहाँ नूडल्स, पेटीज, जूसेस, बिस्किट्स, ऑयल, सर्फ, लॉन्ड्री लिक्विड, डिश वॉश, हैंड वॉश, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ, सॉफ्टनर वगैरह मौजूद हैं। ओवर व्यू अच्छा है कि इस तरह के जो है वो इवेंट्स होने चाहिए कराची के अंदर, खुसूसन आजकल जो मार्केट चल रही है, जिस तेज़ी से यहाँ महंगाई हुई है, तो उसके लिहाज से यहाँ बचत के अंदर लोग आ रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। बचत एक्सपो, जो कि आप गुज़िश्ता दिनों नाम सुना कि एक्सपो सेंटर में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक बचत एक्सपो रमजान में लगाई गई, जिसका फायदा आवाम को बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रह गए। इस सेकंड फेज भी होना चाहिए, जो कि इंशाअल्लाह ताला 23 से 25 जून के अंदर इसका इनेकाद किया जा रहा है। तो मेरी अपील है तमाम ही होलसेलर्स ये उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं बदर एक्सपो का जुगार हूँ। It's 6 p.m. Assalamualaikum. My name is Wes Nadeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of IDA 22. IDA's जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में। इससे पहले 4 साल पहले हुआ था। It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं, उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं। फास्ट केबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फास्ट केबल इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज सीसीवी लाइन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट. We are the first Schema Gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first fastest week, and we are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठ बाय कर सकते हैं. We also launched the fastest week कि आप जब भी फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. So we claim that Fast serves you with a real quality, and we are the manufacturer who has highest capacity production, manufacturing 33 bus, and also we are manufacturing grid, जो हमने एक import substitution की है. हम उसके जरिए अपने नेशनल ग्रिड्स को और जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हैं. So आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रेलेवेंट लोग हैं वो आइडियाज को जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का. थैंक यू. This is me, Rusa Slaudin, as outreach manager from ISPR. We have a stall here in Ideas 22. It's a हिलाल publication. सभी जानते हैं कि हिलाल publications जो है वो 1948 से पब्लिश हो रहा है, और Ideas में अपने जो है मैगजीन्स और बुक्स को करने के लिए आया है, बिकॉज आर्म फोर्सेस मैगजीन और हमारा जो बेसिक पर्पस है वो यहाँ पे अपनी जो है आर्म फोर्सेस में जो हमारी मैगजीन्स रिलीज हो रही है, इसका मोटिव जिसमें हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, आइडिया हम स्पेशली जो है वो अपने मैगजीन्स रिलेट कर रहे हैं. इट्स अवेलेबल हेयर, एंड हम उसमें एडिशनली जो है आइडियाज़ के ऊपर स्पेसिफिक जो है हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं इसमें. सो आइडियाज़ विल बी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिकेशंस. दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे जो है अच्छी चीज़ें जो है डिस्प्ले कर सकें. My name is Özgür Cankara. I am the Vice President in Meteksan Defense. Meteksan Defense is one of the major companies in the Turkish industry. Working in the Pakistan market Pakistan sector for 3 years. We are the supplier of the Yakamos sonar, which will be used in the Miljam ship, which will be delivered by Aswad.
Today we are in the expo presenting our sonar systems, including Yakamos. And more than that, we are also supplying submarine sonar systems, promoting our newest products, which have already delivered to the Turkish Navy. And I think all these will support the Pakistan Armed Forces, the Navy, and the Air Forces in that sense. So we went through the nitty-gritty, the hard part of AI. My objective of that discussion was to lighten a little bit and put the discussion in a context, the context which is very important. Personally, I'm basically a computer science person, technology person, and I'm too afraid of technology. You can't imagine how much afraid I have stopped using PowerPoint technology for the last 20 years now. I'm much better because this is distracting, right? So this is distracting to what I was doing, and you can actually see those PowerPoint slides were distracting actually. The presenter is unable to express what is in the heart because maybe the presentation was not visible, it was made for some other context. And my advice to all the students basically is, I'm trying to, but I'm not quite able to ban the PowerPoint slides from the classrooms. But basically, what I'm trying to emphasize is that the technology is as good as the people using it. A simple knife in the hands of an expert butcher will be able to make the meat into a beautiful piece of something eatable. And that same knife in a nincompoop like me, who doesn't know how to use the knife, will simply spoil it. That is as true with the technology, such as a simple knife. It is as true with a more sophisticated technology like a PowerPoint slide, and even more sophisticated technology like graphics. So these graphics help, but they help some of the time and not all the time. We need to be humble about the use of technology. It is for serving our purpose. It is not to serve the purpose of technology itself. It is not for the purpose of serving the purpose of the capitalist economy that would like 2G to be replaced with 3G, to be replaced with 4G, to be replaced with 5G, to be replaced with 6G, and in each such transition make our life more and more miserable and more where we do not have the quality time for us.
So we were talking over here about artificial intelligence. There was a great debate between Peter Norvig and Noam Chomsky. The basic issue today, where we are using data, and I think that example is very well put. We have all the data about planetary motion. So we are taking readings. We know precisely when a particular planet will be at a certain time. We have been taking those readings for the last, say, 20 years, and we have a massive database which can precisely predict, based upon the data itself, where the planet will be on such and such date. But does that mean that we do not need the Newton's equations of planetary motion? Because the Newton's equations of planetary motion required intelligence, the human intelligence. Whereas simply predicting something on the basis of huge number of data instances that we have is of course efficient, is of course speedy, it of course scales up, it makes our life easier, but will not be able to resolve some of the major issues, major concerns of our life, which is how to be happy, how to live with equanimity, what happens when there is war, and how to avoid wars, and when to stop. Yes, it is a tool that has to be used, but it has to be used in a sparing fashion. We just saw what the soft power of USA versus the hard power used in Afghanistan did. So yes, it is for the time it happens, and it is an essential part, but we must not lose sight of the greater picture of our life. So the technology is as good as the people using it. If the people are not good, I don't know what will happen. As the speakers pointed out, that in most of the cases, we are using the same password that was given by the manufacturer when the machine was installed. I think that would also be true in 95% of the cases, even in Pakistan also. So, and this was also pointed out, AI is as good as the man behind the programming of the AI code that is being put in the machines. So, and that person can also put in all the viruses that one wants, and the machines, those hi-fi machines that we are buying, I'll be surprised if the manufacturer has not put in a fail-safe switch in there. It was really an nincompoop of the manufacturer not to have put when to shut down that machine getting such and such cell. I think that's pretty easy to do and pretty simple thing. So we need to be humble about technology. It's not a panacea. It's a good for solving specific problems, directed problems, and solving particular issues, very well-defined problems. But at the current state of the art, thinking about big decisions, I believe the humans will have to take and shoulder those things. But yes, of course, the challenges of speed and the repetitive attacks that are coming in require repetitive AI technologies. So we need to identify the context in which it will work or will be useful for us, and the context in which it will not be. The other major important thing are the fake news. We have seen how the loyal people could be used simply by pumping up their loyalty to an extent where it starts harming them. And that has happened in USA, it has happened in UK, it has happened in other countries, and it can and is happening around us also. We need to be aware of that, and we need to be humble that this alarm which is going out is actually an alarm or just a fake news or a fake alarm.
So it's very murky, and there are these algorithms and philosophical discussion, and we need to be aware about their philosophical understandings also, just not believing in the technology as a panacea for all. I would like to thank the speakers over here for taking time out and doing a interesting and a wonderful discussion. It was a great learning exercise, and we all learned a great deal. Thank you very much. Defence Export Promotion Organisation, under the patronage of Ministry of Defence Production, Government of Pakistan, and managed by Badar Expo Solutions, is organising the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse defence industries. The 4-day exhibition will provide an opportunity for G2G, B2G, B2B interactions, joint ventures and investment in defence production sector. A strategic seminar will also be conducted during the exhibition. Eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on artificial intelligence in defence market. Ideas will be held from the 15th till the 18th of November 2022 at Karachi Expo Centre. For exhibition stands and sponsorship participation, please visit our website www.ideaspakistan.gov.pk. Assalamualaikum. My name is Awais Nadeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of IDA 2022. Ideas जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में. इससे 4 साल पहले हुआ था. It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं, या उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं. फास्ट केबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. फास्ट केबल इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज सीसीबी लाइन टेक्नोलॉजी. और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट. We are the first KEMA Gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first Fast Tasdeeq, and we are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी products को घर बैठे buy कर सकते हैं. We also launched the Fast Tasdeeq कि आप जब भी Fast का product market से खरीदें तो आपको real quality product मिले. So we claim that Fast serves you with a real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 cables, and also we are manufacturing green letter, जो कि हमने एक import substitution की है, और हम उसके जरिए अपने national grids को और जितने हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हैं. सो आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रेलेवेंट लोग हैं वो आइडियाज को जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी इंडस्ट्री का. थैंक यू. IDEAS 2020 brings together stakeholders across diverse industries. The exhibition is a platform for G2G, E2G, and E2B interactions, joint ventures, and investment in the defense sector. A strategic seminar will also facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Centre.
देखिए ऑब्वियसली आइडियाज़ जिस तरह आपने बोला कि एक ऐसा इवेंट है कि जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री विद ग्लोबल प्लेयर्स के लिए एक बड़ा ब्रिज का काम करता है। तो कोविड में पूरी दुनिया में लॉकडाउन था तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन दिस ईयर दे डूइंग इट एंड आई थिंक वी विल कैच अप टू व्हाट वी हैव मिस्ड आउट। बट येट अगेन आइडियाज़ का सक्सेशन में होना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क का ग्लोबल परसेप्शन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं इसमें पूरी दुनिया की मिलिट्रीज आती हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, तो एक पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पे ले जाने में आइडियाज़ का बहुत बड़ा रोल है। जिस लेवल का ये इवेंट है, जिस लेवल की इसमें पार्टिसिपेशन होती है, ये अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स, एक तो टॉप क्लास स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री हो गई, डेपो हो गया, बदर एक्सपो हो गया, यहाँ के लोकल आपके जितने बड़े डिफेंस प्रोटेक्शन फर्म्स हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज पुट अप इन पाकिस्तान। और कराची खुशकिस्मत है कि हर साल कराची में होता है, थोड़ा सा लोगों की होती है क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसी होती है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ नो कंपैरिजन टू इट। Putting Pakistan on a global scale in defense production capacity in our requirements is what is pitched really well in ideas. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, ventures, and investment in the production sector. A seminar will also be held to facilitate discussions on world challenges within the defense sector. The edition of ideas will be held from 1922 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform G2G, B2G, and E2B interactions, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on world challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to deliver presentations about development of 5G network-centric warfare, its components and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introductions of 5G itself, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields? And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in the
in explaining about 5G if I only have one slide. We can see here that in 5G, basically there are three very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left. No, slide please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we cannot connect to the network. It is because a number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So in these three generic subcases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture is showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects. And then we can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it is quite difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all these points, we have very big possibilities to use it in various type of use cases. For smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real telematics, and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI and also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages. Release 14, release 15, release 16, release 17, so on. 2020 and 2022. So the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many saying that 5G also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying the global 5G in defense market is expected to reach $70,000 million. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. First one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the network functions will virtualize. And then also SDN, software-defined network. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is the set of parameters, can be very easily changed and done for different type of use case.
And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is in AI, and cloud native, mobile edge computing, and of course, millimeter wave. Next slide. So with all those key enablers, we can see there are many studies and research about using the 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT, and then Final, and so on and so on. Next. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and foremost is that it can be military decision making because the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, and then with command and control in the battlefields. Even some studies are investigating about the use of 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tactical means that in the fields using millimeter wave, so that we can use very high frequency, high activity, and very low latencies. Also for the surface, 5G for the AR, VR, augmented reality, and the virtual reality. Also the mixed reality, and also for the zero intelligence. There are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. Okay? But if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 25 times. And the biggest contributions comes from the smaller, this 1,600 times. So all these components is, if it is there, then it's good. But in fact, none of them are there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked to each other. Most of them are not open. Okay, and then in the 5G, there is so-called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware, and so on and so on. And then post 5G, after 5G, beyond 5G, it is not just decoupling, but also orchestrated using the AI. So this is the most important technical revolutions in the 5G. Next. So next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one, and then next one. Next. The next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has very big impacts on security aspects. Next. Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like I said just now. Maybe we need to use the cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G, but because of this variety of use cases, that it also increasing the surface of attacks. That's why this is very big concern to use this 5G for military. Next.
Next slide, please. And of course, the security standard is still ongoing. Now, next. The problem is this one. Okay. Even if the standard is there, okay, the standard, what you call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the development process, and then another security issues that are related to the deployment phase, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with these security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very important and serious research if you want to use the 5G for the military. Next. That will be the last slide for my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDEA 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The full platform for G2G, E2G, E2 direction, joint venture and investments in the sector. A street seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEA will be held from 19-22 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahid Ismail. I am the director of Premier Cables. Premier Cables is one of the leading manufacturers of telecom cables, that is optic fibers, copper telephone cables, ducts, pipe, and jointing materials. We are here today in Ideas to exhibit our new products to the fiber to the home, fiber to the room, and a lot of other new varieties are demonstrated here. And inshallah, we hope that in the coming future we are going more and more better for the development of Pakistan. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद रजा है और मैं दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हूँ। आइडियाज़ का आइडिया ही बड़ा यूनिक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतनी ज़बरदस्त एग्जीबिशन जिसमें दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक इस दफ़ा भी शिरकत कर रहे हैं। और माजी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस एग्जीबिशन की जो क्वालिटी है बड़ी ज़बरदस्त है। जहाँ न सिर्फ इसमें हमारी जो आर्ट इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होता है, उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, बल्कि शहरियों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होती है। 3-4 दिन जितने दिन भी ये एग्जीबिशन चलती है, शहरी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरी दुआ है कि इस दफ़ा भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए ये इवेंट बड़ा कामयाब हो और ये पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के मौके पर इवेंट हुआ है। तो पूरे पाकिस्तान के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। सारे पाकिस्तान को इस इवेंट की मुबारक।
brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day action for G2G, B2G, B2 International's joint venture and investments in defense products. A strict seminar will also be held to facilitate discussions on global issues within the defense. 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Bilal Bhutto Zardari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Federal and Provincial Ministers, Chairman Joint Chief of Staff Committee, Services Chiefs, Senior Civil Military Delegates, Chairman and Chief Executive of National and International Exhibitors, OEMs, Excellencies, Academia, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Ministry of Defense Production, Pakistan, we are indeed grateful to you for blessing this occasion of 11th edition of International Defense Exhibition and Seminar Ideas 2022. I am grateful to the worthy guests and dignitaries from participating countries, foreign and domestic exhibitors, OEMs, trade visitors, and diplomats for their healthy presence to Ideas 2022, a great success. I also welcome all those who join us for the first time, and my profound regards to all the old friends. I assure you that it is you who make this event substantive. Distinguished guests, the development of indigenous and internationally competitive defense industry is always a strategic interest of any nation. Today, it is regarded as one of the major business in the world, alone accounting for approximately 2.2% of global GDP. On the other hand, globalization of defense industry has also changed geography of innovation with new players, markets, partners, and opportunities. New strategic alliances ranging from consortia to joint ventures have become the norm of the day, both the domestic and foreign industry. In the regional context, prevailing politico-military realities have further accentuated our desire to develop an agile, innovative defense industry, not only as an instrument of peace and stability, but also for its rightful contribution towards socio-economic development of the country. Pakistan has the potential to emerge as a global platform for defense, research, scientific growth, manufacturing, and joint ventures in order to strengthen our defense capabilities and support developments as well as exports in that. Ladies and gentlemen, Pakistan's defense industries today comprises of a wide range of technologies, well-trained human resource, and infrastructure, not only to meet its own demand, but also export to international defense markets. Major defense products are manufactured by the government-owned defense production establishment. Private defense industry is also instrumental in producing high-quality supportive equipment and service. Joint development and production of main battle tanks, Al-Khalid and Al-Arar, crafts, JF-17, A-8, Sumashak, UAVs, maritime patrol vessels, fleet tankers, attack missile crafts, different variants of APCs, air launch munitions, small arms, and high-grade explosive, to mention in this regard. Ladies and gentlemen, towards this end, Ministry for Defense Production is continuing to evolve clear priorities for protecting and defending Pakistan defense industry interests at home and abroad. Accordingly, with dedicated efforts, regulatory initiatives, and incentives have led to improved defense manufacturing and quality services. Resultantly, Pakistan's exports are
steadily growing. Today, it is touching the figure of $382 million US. This export potential is not only instrumental to the country's economic growth, but also to our mutually rewarding relations with international fraternity. Today, we are reliable export partners of more than 60 countries. Through mutual partnerships and joint ventures, Pakistan Industries' effort offers a wide area of cooperation and collaboration. Ladies and gentlemen, here I would like to particularly mention the second role of the private sector in our defense industry. It is a fact that enhanced cooperation of private sector in defense manufacturing not only increase production, but also provide the much needed support to public sector defense enterprises. The growing indigenous sophistication of private sector is indeed an attractive investment opportunity. Our government is now keenly encouraging private sector to expand its capabilities through partnership, involvement in R&D, manufacturing, marketing, and defense products at home and abroad. Ladies and gentlemen, while Ministry of Defense Production is fully committed to enhance defense production of Pakistan, International Defense Exhibition and Seminar Ideas is our grand initiative to project defense production potential of Pakistan at par with international standards. Indeed, Ideas 2022 is able as a bridge between defense industry entrepreneurs, traders, R&D specialists, financial experts, and policymakers for capability enhancement and cost effectiveness. The other significance of the event is holding a strategic seminar on artificial intelligence in defense, paradigm shift, strategy, and national security. During Ideas 22, the discourse during a seminar certainly help government to harmonize the defense policies and priorities of Pakistan. I am certain that participants will accrue maximum benefits from this event. I congratulate DEPO for organizing this event of national significance and their part in promoting the growth of Pakistan's defense industry. DEPO has surely been successful in providing such a rich and rewarding platform to a large number of and partners from across the globe. Besides, conducting Ideas acts as a one-window national platform for promoting, facilitation, and coordination of export and defense-related from time. Through this opportunity, I encourage all stakeholders to make use of DEPO's platform for enhancing defense exports. My special gratitude for federal and provincial ministers, Pakistan's armed forces, law enforcement agencies, Karachi Metropolitan Corporation, and Government of Sindh, who rendered their all-out support to make this event a great success. I also greatly appreciate the effort of our event organizer, Badar Expo Solutions, utterly marketed the Ideas 2022 worldwide and very professionally organized this show. In the end, I would like to thank Honorable Foreign Minister, all the guests for gracing this occasion with their presence. I thank you for Pakistan Zindabad. I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company. And from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry.
Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing. And as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. Pakistan has imported a European manufacturing clothes, and our very renowned brand, they comprise Zodian, Matador, 47, 48. COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. It is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see it weighs just half a kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen, would keep it at home. We started importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, gives you the real of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish. ये जूस और फ्रूट पे आपको डिस्काउंट मिला? जी मिला, बाय वन घंटा जूस पे। फ्रूट में भी मिला? फ्रूट भी आधी कीमत पे था, बाहर मिल रहा है 120 और पे मिला यहाँ से खरीद लें तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल सही बात है। आपको माहौल कैसा लगा? बदर सॉल्यूशंस ने आपको प्रोवाइड, माहौल ठीक था? जी माहौल बिल्कुल ठीक है, परेशानी कोई मुश्किल नहीं है। जो मुझे रखी हैं तो अच्छा है कि इनिशिएटिव लिया है, अच्छी चीज़ है। इस तरीके के एक्सपो जो लगी है ये होनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह महंगाई भी है, इस तरह के स्टॉल लगे हैं एग्जीबिशन, इस तरह के एक्सपो में होना चाहिए। खुश हो गया हैं? जी हाँ, खुश है। शुक्र के लिए आ रही है, कुछ बचत भी हुई नहीं हुई? बस बचत तो है, बचत के बिना तो कुछ लेते नहीं। मैं नहीं आपकी मार में हम घूमते रहते हैं, कहीं बचत मिल जाए। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने जो आपके लिए बाजार लगाया, आप मुतमईन हो जा रहे हैं? हाँ मुतमईन होके जा रहे हैं। हाँ बहन, आप किसी को शॉपिंग किया आपने, मुतमईन होके जा रही? अच्छा, ये बात नहीं आ रही है कि आपने इतना ज्यादा सख्ती की है, वो बात ही लेकिन जब ये आइडियाज करना है तो उस वक्त जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए, और उसी को लेके जितनी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोज बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हुआ था जैसे होना चाहिए था। जब आइडियाज आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टैपो, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है, और उनको पता चला कि पाकिस्तान की कितनी ताकत है, ऐसी पावर है कि डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी नेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडिया है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत से डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं, वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाजा होता है कि बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अब जो उनकी कॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं जब वो खबरों में देखते हैं तो बाहर के ज़माने में चलेगा, हम यहाँ आते हैं, नाइस रोड्स, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज अच्छी हैं,
इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इज वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज द वर्ल्ड, तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव लोगों को बताते हैं। और मेरा ख्याल है कि इट हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज हैव स्टार्टेड। एंड एक्सपो जो है वो और आइडियाज जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भी ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के एज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, सिर्फ ये देखा कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। I will briefly touch on the salience and export promotion and the ideas. Made a rating about the just about the organization does by itself. Then we have to document to relate to the development and the ideas. Then it was released in 2000 under our waters, which was later placed in Ministry of Production in 2002. This is the effect of the basic most more and protect all industry and defense export potential. Core functions of the perform the corporate model with no burden on national side. The winning statement, which has been spelled out through the depot, reads: as a national platform, provide support to the defense manufacturing, service sector, and the export chain promotion, facilitation, and coordination for sustained growth of defense exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation, and creation of the business opportunities and networking for the defense industry. It organizes defense exhibition both inland and abroad, including the event of the ideas. Stretches Pakistan across the globe. Even in this regard, depot establishes 20 to 40 Pakistan families annually across the globe, different countries, for our own defense production enterprises. We also had the honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With our national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of supplies and vendor defense exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the defense exhibition at Iraq, the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defense Port at Islamabad. The Ideas has been a flagship event that is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time, both stature as well as in size. Other than these projects, the depot also maintains an international standard display center here at Islamabad. We have carried out extensive mapping of the private defense industry, wherein the potential buyers across the globe are directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. Our comprehensive report has been prepared, which is not only available online, it has also been provided to all our foreign missions and is sent to all the dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Just briefly touch upon the centerpiece of the research of the depot, which is basically focused on advertising of the private defense industry, and then the private sector is facilitated for international participation. It is known that 8 private companies participated in World Defense Show KSA without the government's. However, this participation can increase manifold with the government's support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our defense national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors, and the small-scale manufacturers, basically to link them with large-scale manufacturers and our private and public scale defense production enterprises. Now coming to the production unit of Ideas, as you are aware, Ideas is the flagship event of international stature of Pakistan, which is a sought after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deep embedded mutually beneficial relations. Then the main objectives
which are actually designed to be accrued out of the ideas include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now with this gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both the whatever I have spelled out about ideas and the depot. How did it actually reach to this where we are standing today? Thank you very much. I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. The first company in Pakistan who has imported a European manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodian, Fortrax, Matador, 47, 48. In our COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see it weighs just half a kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing it in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो हमारा केमिकल उसमें आता है, और 2 साल की हमारी वारंटी होती है। तो प्रॉपर हमारा काम होता है, और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेंड अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा हो जाता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा केमिकल जाता है, और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन कराची में हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है। तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है।
देखिए, जब ये कंसीव हुआ था आइडिया के भी आइडियाज़ करना है, तो उस वक़्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए, और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था। जैसे होना आइडिया आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेपो, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है, और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी वो बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनके कॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं जब वो खबर देखते हैं तो कोई गार के ज़माने में चले गए हैं, मगर हम यहाँ आते हैं, नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं, और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज़ हैव स्टार्टेड। एंड बदरक्स जो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है, और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। briefly touch upon the and the overview of the message board promotion organization and the ideas, main target of objectives and what the organization does. Thereafter, we will have a document related to the journey of DEPO and the activities of the idea. DEPO was raised in 2000 under joint starters, which was laid under Ministry of Defence Production in 2002. Since then, DEPO is working under the MDP. The basic goal is to promote and protect Pakistan military industry promise and its export potential. All core functions of the depot are performed in corporate model with no financial burden on next chapter. The vision statement, which is spelled out for the depot, reads as a national platform providing to defence manufacturing, service, and the export chain through promotion, facilitation, and coordination for sustained growth of defence exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation, and coordination of the business opportunities and networking for the defence industry. It organizes defence exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the IDRs, stretches Pakistan across the globe. In this regard, depot establishes 12 to 14 Pakistan pavilions annually across the globe in different countries for our own defence production enterprises. We also had the unique of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Skies and Vendors exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence exhibition at the Rubber Expo at Rawalpindi in concert with the British Chamber of Commerce and the Defence Turkey at Islamabad. The Ideas has been flagship event which is conducted biannually since 2000, and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these core subjects,
The depot also maintains an international standard display center here at Islamabad. We've kept an extensive mapping of the private defense industry, wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive defense products catalog has been prepared, which is not only available online, but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Well, just briefly touch upon the sentence of the recent efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defense industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defense Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small-scale manufacturers, basically to link them with the larger manufacturers and our private and public large-scale defense production enterprises. Now coming over to the flagship unit of IDRs. As you're aware, IDRs is the flagship unit of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared platform for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded, mutually beneficial relations. Gentlemen, the main objectives which are actually designed to be accrued out of the IDRs include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of diplomacy. Now with this gentlemen, with a brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both the whatever I have spelled out about ideas and the depot, how did it actually reach to this where we are standing today. Thank you very much. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لتخلف الميعاد ऐ अल्लाह इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज रब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत नुमाया मकाम फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस महमूद पर फाइज फरमा जिसका उन्हें उनसे वादा फरमा है और क़यामत के दिन हमें की शिफात नसीब फरमा तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, at that time it used to be the acetylene company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we're back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. Pakistan has imported manufacturing for electrodes, and our brand they comprise of Zodian, Metador, 47, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. There's a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside and when do they need to replenish. अस्सलाम वालेकुम। मैं कंपनी में काम कर, हमारा काम ये है कि हम ये वाटरिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम हो हमारा केमिकल उससे आता है, और बहुत की हमारी वारंटी होती है, वो प्रॉपर हमारा काम होता है, और पूरा अमला है हमारा ट्रेंड अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा होता है। हाल वक्त पाकिस्तान में हमारा जाता है, और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन 25 में हमारी ज़्यादातर साइड में हमारा काम ये चल रहा है।
के लिए हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें पहला जो है वो है ईगल एक कमर्शियल ड्रोन जैमर है और इसका बेसिक पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी लैंड एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन्स को विजिट कर रहे हैं जो आपके लिए इनसिक्योर है और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप विद इन 7 किलोमीटर की रेंज में आप उस ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस ये है कि जो GPS कनेक्शन बनता है ड्रोन का, उसको आप जैम कर देते हैं, सो डोंट नो एनी मोर कि वो किस लोकेशन पे है और वो मूव नहीं कर सकता जब तक उसको किस लोकेशन का पता ना हो। ये एक जैमर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है जो हम लोगों ने बनाया, हमारी लैब ने बनाया। उसकी मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उड़ सकता है। एनवायरनमेंट जो है यहाँ का एक्सपो का काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर अटेंडेड। मैंने एक्सपोज अटेंड किए हैं, बेहतरीन ये है और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशंस और हाई रैंक ऑफिसर्स जो है वो यहाँ आ रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं। सब लोग इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं और टेक्नोलॉजीज़ का अगर आम अल्फाज में कहूँ तो एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से के पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर से लोग आए हुए हैं और वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी that this expo plays every 2 years, after every 2 years, and I would suggest all engineers and techs to must visit this expo. Bismillahirrahmanirrahim. Babal Bhatto Zardari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Sadiq, Federal Minister for Defence Production, Federal Minister, Chief Naval Staff of Pakistan Navy, representatives of armed forces, dignitaries, exhibitors, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good morning. On behalf of Defence Export Promotion Organization, it is indeed an honor and pleasure to welcome the participants of International Exhibition and Seminar Ideas 2022. Today is a very special day for us to host our esteemed guests from 57 countries. Honorable Minister, your presence is a great immense value that you have graced this occasion as the chief guest. Your presence indeed acts your keen patronage to our efforts in organizing ideas, and it's a source of inspiration for us. The best Pakistan defense industry is not only the force behind our armed forces, but also an instrument of national sovereignty and important socio-economic component of the country. Its progressive evolution has brought the new era of technological advancement, resulting in international market for quality products. Through mutual partnership, joint venture Pakistan industry today's offer wide areas of cooperation and collaboration. In this regard, I will proudly say that with the continuous assistance of the Government of Pakistan, DAPO is supporting export of defense industry and services through promotion, facilitation and coordination. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of defense industry is the vital role of the private sector or small and medium enterprises called as SMEs. According to one estimate, 90% of the business and half or more the export is because of the private industry called SMEs, and it generates employment opportunities for approximately 70% of the labor force. Hence, it is no surprise that globally SMEs are an indispensable part of the major industrial sectors. In this regard, our SMEs operating in defense production possesses tremendous potential which, if capitalized, can generate rich dividend for the country. Ladies and gentlemen, National Defense Exhibition Seminar is a flagship event of the DAPO, which is organized biennially for the latest technological demonstration of the national and international defense industry. The exhibition is now regarded as one of the international rendezvous for enterprise
research development specialists, financial experts, top policy makers to promote cooperation, knowledge sharing, and support venture in the field of defense production and security. Ladies and gentlemen, indeed, IDEA is a leading event of Pakistan that brings together the global defense industry for synergetic business. The innovation and excellence exhibited here is meant to pave the way of international defense collaboration among the friends and partners. Distinguished guests, IDEA is a continuous success story since year 2000. I am glad to share that IDEA's 2022 has surpassed all previous landmarks in terms of space booking, exhibitor, and visiting delegates to Pakistan. It is evident from the fact that Karachi Expo Center has been booked to its full capacity with more than 300 exhibitors from 32 countries. Besides trade visitors, we are also hosting more than 300 delegates from 57 countries, representing almost all parts of the globe. Besides this, the initiative of IDEA's 2022 includes the creation of extra space by establishing the new stalls to accommodate overwhelming participation from the national and international exhibitors. IDEA's Karachi show is specifically organized for the people of Karachi at Nishane Pakistan View. Pakistan Postal Service has issued an elegant commemorative postage stamp on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA's 5th year of independence of Pakistan. The hospitality, culture, warmth of Pakistan culture will be demonstrated during various receptions in the honor of the dignitaries who are visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister, I would like to particularly mention the financial assistance and support government of Pakistan is providing to private sector of defense industry for their enhanced participation in IDEA's 2022. Ladies and gentlemen, last but not the least, let me acknowledge the organization whose support and cooperation is the key in organizing this memorable event. I would like to thank the Ministry of Defense Production, Armed Forces of Pakistan, especially the Headquarter 5 Corps, Chief Minister of Sindh, Trade Development Authority of Pakistan, Defense Industry, the Sindh Rangers, Karachi Police, Karachi Metropolitan Corporation for their vivid support and contribution towards creating an enabling environment for the successful of this event. I would also like to pay special tribute to the people of Karachi for their all-out support and hospitality. Thanks and appreciation are also due to our event manager, Badar Expo, for putting up a very professional show, fielding a competent team and effectively marketing IDEA across the globe. I would again like to express my sincere gratitude to the Foreign Minister and all noteworthy guests who have participated and traveled to Pakistan for participating in this event. I thank you all. Pakistan Paindabad. मैं शारिक अमीन फारूकी, मैनेजर ताल्लुकात आमा कराची फोकस आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है और अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करने के लिए कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो बर्थिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोट्स यूज़ करते हैं, ड्रेजर्स यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवामुन्नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है और हम केपीटी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया है कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2
नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारा तैयारा है जेफ थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी कर रखी है। माजी में अगर हम बात करें कि हमारा अलजरार टैंक, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो हमारा केमिकल उसमें आता है और 2 साल की हमारी वारंटी होती है। वो प्रॉपर हमारा काम होता है और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेंड अमला, उसके थ्रू ये काम हमारा हो सकता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा जाता है और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन में हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो है वो है ईगल हंट 01। ये एक कमर्शियल ड्रोन जैमर है और इसका बेसिक पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी लैंड एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन को विजिट कर रहे हैं जो आपके लिए इनसिक्योर है और आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप विद इन 7 किलोमीटर की रेंज में आप ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है कि जो GPS कनेक्शन बनता है ड्रोन का, उसको आप जैम कर देते हैं। सो ड्रोन डोंट नो एनी मोर कि वो किस लोकेशन पे है और वो मूव नहीं कर सकता जब तक उसको GPS लोकेशन का पता ना हो। ये एक जैमर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है मेरा, जो हम लोगों ने बनाया, हमारी लैब ने बनाया। उसकी मुख्तलिफ स्पेक्स हैं, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उड़ सकता है। एनवायरनमेंट जो है यहाँ का एक्सपो का काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर अटेंडेड। जितनी मैंने एक्सपोज अटेंड किए हैं उसमें से बेहतरीन एक ये है। और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशंस और हाई रैंक ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं। सब लोग इनका इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं और टेक्नोलॉजीज़ का, मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से के पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर से लोग आए हुए हैं और वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी that this expo takes place every 2 years, after every 2 years, and I would suggest all engineers and technocrats to must visit this expo. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Awal Bhatto Zardari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Zardari, Federal Minister in Production, Federal Minister, Chief of the Naval Pakistan Navy, Representative of Armed Forces, dignitaries, exhibitors, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. On behalf of Defence Export Promotion Organization, it is indeed an honor and here to welcome the participants of 11th International Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022.
Today is a very special day for us to host our esteemed guests from 57 countries. Honorable Foreign Minister, your presence is a great immense value for us that you have graced this occasion as the chief guest. Your presence indeed reflects keen patronage to our organizing ideas, and it's a source of inspiration for us. Distinguished guests, Pakistan defense industry is not only the force behind our armed forces, but also an instrument of national sovereignty and important socio-economic component of the country. Its present revolution has opened a new era of technological advancement, resulting in international market for quality products. Through mutual partnership, venture Pakistan industry today offer wide areas of cooperation and collaboration. In this regard, I will proudly say that with the continuous assistance of the Government of Pakistan, DAPO is supporting export of defense industry and services through promotion, facilitation, and coordination. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of defense industry is the vital role of the private sector or small and medium enterprises called as SMEs. According to one estimate, 90% of business and half or more of the export is because of the private industry called SMEs, and it generates employment opportunities for approximately 70% of the labor force. Hence, it is no surprise that globally SMEs are an indispensable part of the major industrial sectors. In this regard, our SMEs operating in defense production possesses tremendous potential which, if capitalized, can generate rich dividend for the country. Ladies and gentlemen, International Defense Exhibition and Seminar is a flagship event of DAPO, which is organized biennially for the latest technological demonstration of the national and international defense industry. The exhibition is now regarded as one of the international rendezvous for enterprise, research and development specialists, financial experts, top-level policy makers to promote cooperation, knowledge sharing, and support venture in the defense production and security. Ladies and gentlemen, indeed, IDEA is a leading event of Pakistan that brings together the global defense industry for synergetic business. The innovation and excellence exhibited here is meant to pave the way of international defense collaboration among the friends and partners. Distinguished guests, IDEA is a continuous success story since year 2000. I am glad to share that IDEA's 2022 has surpassed all previous landmarks in terms of space booking, exhibitor, and visiting delegates to Pakistan. It is evident from the fact that Karachi Expo Center has been booked with full capacity with more than 300 exhibitors from 32 countries. Besides trade visitors, we are also hosting more than 300 delegates from 57 countries, representing almost all parts of the globe. Besides this, the initiative of IDEA 2022 includes the creation of X-Space by establishing the newest stalls to accommodate overwhelming participation from the national and international exhibitors. IDEA Karachi show is specifically organized for the people of Karachi at Nishane Pakistan Seaview. Pakistan Postal Services has issued an elegant commemorative postage stamp on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA in 75th year of independence of Pakistan. The hospitality, culture, warmth of Pakistani culture will be demonstrated during various receptions in the honor of the dignitaries who are visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister, I would like to particularly mention the financial assistance and support the Government of Pakistan is providing to private sector of defense industry for their enhanced participation in IDEA's 2022. Ladies and gentlemen, last but not the least, let me acknowledge the organization whose support and cooperation was the key in organizing this memorable event. I would like to thank the Ministry of Defense Production, Armed Forces of Pakistan, especially the Headquarters Fund Corps, Chief Minister of Sindh, Trade Development Authority of Pakistan, Defense Industry, the Sindh Rangers, Karachi Police, Karachi Metropolitan Corporation for their vivid support and contribution towards creating an enabling environment for the successful of this event. I would also like to pay special tribute to the people of Karachi for their all-out support and hospitality. Thanks and appreciation are also due to our event manager, Badar Expo,
for putting up a very professional show, fielding a competent team, and effectively marketing idea across the globe. I would again like to express my sincere gratitude to the Foreign Minister and all our noteworthy guests who have participated and traveled to Pakistan for participating in this event. I thank you all. Pakistan Paindabad. मैं शारिक अमीन फारूकी, मैनेजर ताल्लुकात आमा कराची फोकस आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है और अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करने के लिए कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो है जो बर्थिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं, और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोट्स यूज़ करते हैं, ड्रेजर्स यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवामुन्नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है और हम केपीटी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है जेफ थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी खरीदारी किया। माजी में अगर हम बात करें कि हमारा अलजरार टैंक, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। Selam Aleyküm. My name is Ahmet Turul Özkan from Turkey, Aselsan company. Aselsan is the leading defense industry in Turkey, mainly involved in communication, weapon sites, satellite systems, electronic warfare systems, closing weapon systems. We are here for promote our business with Pakistan Army as well as Air Force and Navy. We are already engaged in projects here. And our main idea is to share our technology and our capabilities with our brother country, Pakistan. And my office established in Islamabad. I am the area manager of this company. And we are very close to the headquarters, Air Force, Navy and GHQ. So we expect that in this exhibition, several business opportunities which are also very new designs available with us. This one is Gökdeniz project, which is engaged with Pakistan Navy to increase their capability, defense capability in Pakistan. This was my brief information about my company. Thank you very much and wish you Pakistan Zindabad. जी अच्छा लगा। बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने जो बचत एक्सपो लगाई है, आप मुतमईन के जा रहे हैं? बिल्कुल मुतमईन। कुछ रेट का मिला? मिला।
सुकून होके जा रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को मशवरा देंगे कि यहाँ आएँ और शॉपिंग करें? बिल्कुल यहाँ शॉपिंग करें, बाहर से रेट में यहाँ से कंपेयर बहुत करें, रेट कम है। तो बोलेंगे बचत बदर एक्सपो सॉल्यूशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दाल वगैरह जो है ना, ये चीज़ों में यहाँ काफ़ी फ़ायदा है। कोडिंग हो गई, लेकिन दालें वाले कोई बाजार के रेट पे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा इस तरह की कोई चीज़ परचेज़ की नहीं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क है ज़रूर मिला। ये पहला कता है। जहाँ लोगों के ये बचत का पूरा मौका है, वहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं ताकि वो भी सस्ते दामों में लोगों को सहूलत भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सामान भी प्रोवाइड कर रहे हैं एट द सेम टाइम। It's 8 p.m. My name is Cengiz Kahraman. I'm Marketing Manager of Menatech Defense Technologies. Menatech Defense Technologies is leading a supply chain manager of Turkey and MENA region. It's almost 30 years company and we manufacture sub-assemblies of trucked and built vehicles. We have been delivered 150,000 components uncompromising quality standard to NATO and USA countries for almost 30 years. Backgrounds of half century of experience, we are going to look to future with our R&D center, with our investing different companies with different sectors. As an example, electromobility. As an example, we try to turn to Turkey the giant factory that is another project for us. More than 3,000 suppliers and with 150,000 parts. As Menatech, we supply for your priorities for high-tech manufacturing defense industry. Back again from DHA Sports Club, Moin Khan Academy. Number 25 of Karachi Table Premier League Season 3. It's going to be the table toppers, Maleen Malangs, up against North Nawabs. Earlier we saw Maleen Malangs have decided to back first yet again. The table toppers are up against North Nawabs, who are fighting hard to secure the spot in the semi-finals. It's all set here in the DHA Sports Club, Moin Khan Academy. Game of the day. Asif Pathan has got the new ball position. Plays a call from the umpire. Straight away, could be a big wicket. Oh goodness me, what a start! DK has to walk back. First ball, stage, comfortable catch behind the stumps. But DK walks back, not even troubling the squares. It is not for one. Outside edge, could be out, easy one, gone! Goodness me! Mimran follows DK. There's 2 down here and just 4 on the board. Mimran also walking back after scoring just 2. It's 4 for 2. Here comes the first big shot. And here comes the boundary. Full toss. Straight over the baller's head for the boundary. It was a gift for the new batter. Full toss again, smashed away, much bigger, much longer. Half a dozen. Once again asking to hit another full toss. This time he got plenty on it, Aziz. और आपने क्रिकेट के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं पाकिस्तान में, कभी आपने सोचा भी था कि टेप बॉल क्रिकेट इस लेवल पे हो रही होगी और इस लेवल पे एग्जीक्यूट करने पर केटीपी इल्जामे की तारीफ बनती है. Big shot on the rise. Is it long enough? Not quite. Comfortably taken well within the boundary. And Asif Pathan continues to impress us. Shaji walks back after scoring 2. It's 22 for 3.
Slower delivery picked up. It's in the air. And this time the ball has gone over boundary ropes. He goes for it once again. And get plenty on it as well. Once again, the ball has landed beyond the boundary ropes. और हार्ड बॉल की क्रिकेट है, बिल्कुल उसी तरीके से ये टेप बॉल को पाकिस्तान का ब्रांड बना के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाने की बात हो रही है। मुझे लगता था आपने कुछ सालों पहले तक सोचा भी था कि टेप बॉल इस लेवल पे हो रहा होगा और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हो रहा होगा। एक विकेट भी इस दौरान गिर गई है। अजीज आउट होकर अब वापस पवेलियन लौट रहे हैं। ये जिस तरीके से देखी जा रही है और तैमूर मिर्जा जैसे लोग हमारे साथ खेल रहे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस के अंदर है, तो जिस तरीके से और इस दफा जो KTL को 34 कंट्रीज के अंदर 84 चैनल्स के ऊपर देखा जाए, अरबों की तादाद में लोग इसको देख रहे हैं। सो मुझे लगता है ये कि ये बहुत जल्द उसके लेवल के बराबर एक जो है पैरेलल के अंदर एक अलग क्रिकेट, अलग टाइप की क्रिकेट होने वाली है। सो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट डेफिनेटली बदर एक्सपो जाएगा और जोहेर नसीर को जाएगा। The decision has been referred upstairs. It was a very good throw towards the bowler. Looks touch and go, Falak. There you see the red light on. Confirmation. It's gone back after scoring just 2. It's 43 for 5. All the way on the leg side. It's in the air. There is a fielder out there who misjudges it. And I think the ball has gone past the boundary ropes as well. Could have been another wicket for Irshad, but not to be. It's that away on the offside over extra cover. That's going to go all the way for 6. Probably the shot of the innings so far by Ubaid. By giving away 16 in his opening over. Once again hits that on the offside. It's up in the air. Has he timed it well enough? I think he has. There was a fielder at long off who was trying to get around it, but the arms are off from the on-field umpire. Once again, insane timing by Kaleem. Once again, he has gone big. He has gone straight. It's up in the air. Chance for the fielder, who takes it this time. It's Irshad Ali Afridi down there at long off, who makes absolutely no mistake. So Kaleem is removed at a score of 25. 62 for 6. Last ball of the innings, a low full toss that has been just hit away on the leg side. They are going to be looking to come back for the second one. There is a throw at the wicket keeper's end, but he couldn't collect the captain. So they're going to collect a couple of the last ball of the innings. That means Maleem Malangzar finish off at 66 for 6 after their 6 overs. A job well done by North Nawabs. All set for second innings. Majid Goli starting the proceedings from the far end. Down the leg side, pitched, but then it went away into the offside. He's working really hard. This is going to be 4 runs. There, oh, it is slowing down. Still has enough legs to carry over the line. You got enough amount of bat on that. He didn't like the... And this time Hafiz Pola has trunked that and trunked that with little disdain. Wow. He swings this away and swings this away beautifully for yet another 6. Full toss, got that away and got that away over cover. What a magnificent shot. You beauty, Hafiz Pola. In the air, who's going to take it? And it is scored. So Hafiz Pola shows is over. He played really well for his 22 of 10. 1 for 28 on the board, North Nawabs. And this time around, batsman has given that a go. And this is going to go all the way at mid-wicket boundary for 6. Zain has gone downtown. Absolutely smoked that way. Wow, what a good shot. Absolutely. बाएं हाथ से गेंद करने वाले तेज बॉलर और उनकी इस पहली गेंद को उठा दिया है। फील्डर के लिए यहां पर कोई मौका नहीं होगा। 6 रन, 8 रन अब भी पीछे हैं पहली इनिंग में मलीर मलंग, और इस बार बोल्ड कर दिया।
तो बहुत जल्दी हिसाब चुकता किया है फजल ने। 12 रन बनाकर आउट हुए, 58 पे 2 आउट। एक मरतबा फिर फजल आए और इस बार शफी ने गेंद को उठा दिया है। बड़ा कुछ डिफरेंट सा एक्शन है, लेकिन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं खेले। टेप बॉल क्रिकेट में इस गेंद पर जोरदार तरीके से खेले। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने एक बुलंद वाला शॉट को कैच में तब्दील कर दिया। और इस तरह शफी जो है वो आउट होकर लौट रहे हैं। सिर्फ 1 रन बनाया और 65 पे 3 खिलाड़ी आउट। इसी दौरान जोरदार तरीके से जहन खेले और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। जहन को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और इस बार नो बॉल ये होगी। कनेक्ट उन्होंने जरूर किया है और 6 रन भी हासिल किए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मलीर मलंग को ये नो बॉल मिल गई है। फजल और कोशिश यही होगी फील्डिंग साइड की कि वो कम से कम यहाँ पर इनको बढ़तरी हासिल करने दें, लेकिन ये एक और छक्का, इसको कहते हैं कि मुंह में बॉल कर दिया उन्होंने। और बैट्समैन ने जो जैन है उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। ऊंचा खेले इस गेंद को और गेंद फील्डर के पास पहुंची है कुछ एक आध टप्पा खाकर, और ये बैट्समैन तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। और पहुंच गए या नहीं ये देखना होगा। अंपायर ने कहा पहुंच गए। तो ठीक ठाक बढ़तरी यहां पर हासिल की है मलीर मलंग की टीम ने। 96 रन किए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। उनकी बढ़तरी पहली इनिंग में 30 रन की। यूबीएल अमीन कराची टेबल प्रीमियर लीग सीजन 3 का 25th मैच। नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और जहां जहां हमारी नशरियात जारी है, आप तमाम लोगों को डीएचए स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से खुशामदीद कहता है। 30वां मैच है जहां नॉर्थ नवाब और मलीर मलंग की टीमें मद्दे मुकाबले हैं। आप मेरे साथ 2 इंपॉर्टेंट शख्सियात यहाँ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूबीएल अमीन कराची टेबल प्रीमियर लीग फॉर टेस्ट क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए गिरा खदर खिदमात अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब, और उनके साथ हमारे लिव लेजेंड द वन एंड ओनली ग्रेट जावेद मियादाद साहब की साहबजादी मारिया मियादाद, जो हमारी विमेंस विंग को अब देखना शुरू हो गई है कायनात इम्तियाज़, और काम शुरू कर दिया यहाँ एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी। और खास तौर पर 16 को फाइनल है, उससे पहले KTPL वुमेन्स प्रीमियर लीग की लॉन्चिंग होने जा रही है। खास तौर पे हम इसको भी बहुत फोकस करें। मारिया आपको और हारून भाई आपको वेलकम करते हैं। हमने आपको किसी इवेंट में उस तरीके से देखा नहीं। इस बार प्रॉपर कनेक्शन, फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर। हमने इससे पहले किसी और इवेंट के साथ आपको नहीं देखा जिस तरीके से आप कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के साथ जुड़ी हैं। उन बच्चियों के साथ मिला के जो कुछ नई बच्चियाँ होंगी वो खेलें। मैं चाहूँगा कि जितनी फैमिलीज़ हैं उस पर्टिकुलर डे फाइनल के दिन ये एक आउट हो गए, एक ऊंचा शॉट खेला था और डी के जो हैं वो दाऊद खान पठान आउट हो गए बनाकर अच्छा कैच किया। आई थिंक अगर ये देखा जाए तो बड़ा नॉर्थ नवाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं, हम सुनने चाहेंगे ये खबर तो हारून भाई भी सुनने के लिए बैठे हैं। इस बार जबरदस्त कनेक्शन, फर्स्ट सेकंड बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई। कलीम का अच्छा स्ट्रोक इरशाद की गेंद पर। इशू ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं एट द यंग एज से अबाउट 14, 15, 16 और ये इस दफ़ा ऊंचा शॉट खेल गया। गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए, सो 6 रन का इजाफा किया कलीम ने, बहुत ही अच्छा। I think that was more important to do rather than try and prove I can be as good as my father because I can't be legend. इस बार मिमरान का छक्का है यहाँ पर, जबरदस्त हिट आसिफ की गेंद पर। लेजेंडरी जावेद मियादाद की बेटी हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट से स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस फील करेंगी, इनके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। एक और छक्का मारा है कलीम ने और इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया था। सिर्फ 10 रन की लीड अभी हुई है और ये तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। फिर एक और ऊंचा शॉट और ये गेंद भी जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी। मिमरान और कलीम दोनों बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर इस हवाले से भी जानते होंगे। एक और जबरदस्त हिट, कलीम पकड़े गए इस बार। कलीम का इस बार शॉट बाउंड्री क्रॉस नहीं करा सका बल्कि सीधा हाथों में गया और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान कैच आउट हुए। इस तरीके से ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर मलीर मलंग्स को। क्रिकेट की एकेडमीज लगाना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर वुमेन की, सो
यहाँ से वो प्लेटफॉर्म इनको मिल सकता है अगर बच्चियाँ अच्छी खेलेंगी। एक और विकेट गिरी है और इस तरह मलीर मलंग से एक और नुकसान हुआ, एक और अच्छा प्लेयर मुख्तियार आउट होकर वापस गई। Bowled him, knocked him over. Inside edge, rattled onto the stumps. And have a look at that. Victorious bowler enjoying his victory. And Mimran goes for 14. 54 on the board, Maleer Malangs. Shorter one he gets and he really nails it over mid-wicket for a huge hit. That one went out of the ground. And this time it's a high one. It's hit high enough. Does it have enough distance? No, it doesn't. And a very good catch is taken by Pola. An important catch here. Badur Rahman cameo is over. Just 6 to his name. Full toss. Oh, you betcha. That's all the way. That's a biggie. What a sweet connection. What a blow that is. Full toss put away over mid-wicket for 6. इन्वायरमेंट नहीं होता, क्रिकेट का रुझान नहीं होता, लेकिन इस तरह की लीग्स होंगी और ये लाइव चलेंगी पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में एक मिनट जरा, आप तो क्रिकेटर हैं, कैच तो बताना पड़ेगा। यहाँ विकेट गिर गई है जी मलीर मलंग्स की टीम कहीं ना कहीं कुछ कमबैक करने में जरूर कामयाब हुई है इस मैच में, लेकिन नॉर्थ नवाब का पलड़ा भी बहुत भारी। Oh, that's a very good delivery. Slow bounce to finish things off. 6 done, 71 for 6. Effectively, they are 41, and it's going to be a target of 42 for North Nawabs to chase down when they come out to bat. और इस गेंद को ऊंचा खेल दिया बैट्समैन ने और गेंद वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर के हाथ में ऑलमोस्ट मिड ऑन पर कैच कर ली गई और इस तरह विकेट लेने में यहां पर कामयाब हो गई है टीम। यहां पर मलीर मलंग्स की और हाफिज पोला लौट रहे हैं आउट होकर। दोनों जो इनके कोचेज हैं उनको भी दे रहे हैं और जो हमारे वो हैं मोहम्मद शमी साहब उनके लिए भी प्लॉट का उन्होंने ऐलान कर दिया अगर फाइनल जीतते हैं तो ये प्लॉट एक नया सिलसिला शुरू हो गया ज़ुहैर भाई, ये तो बहुत ही बड़ा आगाज़ है और जिनके लिए हम पूरे साल इन लोगों को सपोर्ट करें। तो केटीपीएल असल ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, ये सिर्फ हम इसके अंदर इन सारे लड़कों को इंशाल्लाह पूरे साल अपने साथ एंगेज करेंगे। इसके जो टॉपर्स होंगे वो फिर दुनिया के अंदर जितने टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हम इनको आगे लेके चलें। जफर अब्बास भाई, एक और चीज़ भी केटीपीएल विमेंस लीग का भी आगाज़ होने जा रहा है, उसकी भी लॉन्चिंग होने जा रही है और जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट हमने देखी, इमरान अली रोशन साहब की देखी, डीके की देखी, सारे ऑनर्स जिस तरह मुजम्मिल अतहर सब लोग जुड़े हुए दिखाई दिए, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। वुमेन क्रिकेट लीग जो है उसको तो सपोर्ट करेंगे बल्कि ज़ुहैर भाई ने कहा एक टीम हमें जेडीसी को फिर दे रहे हैं सीएसआर में, तो मैं कराची से अच्छा टैलेंट वुमेन्स का निकाल के लाऊंगा और यहाँ खिलाएंगे और उनको नेशनल लेवल में मुताबिक करेंगे कि देखिए कराची जिस तरह से कराची ग्राउंड बर्बाद हुए हैं अब दोबारा से आबाद हो रहे हैं, तो उस जश्न में मैं शामिल रहूँगा इंशाल्लाह। ये बॉल के अंदर लड़कियां जो हैं वो हार्ड बॉल से काफ़ी डरती हैं, तो उसमें अब ये कि इंशाल्लाह टेप बॉल्स जिससे जब वो खेलेंगी तो उनका एक जो एक डर है वो ख़त्म होगा और वो हमारे नेशनल क्रिकेट के लिए उनकी एक अवेलेबिलिटी हो जाएगी। प्लस जो उन फैमिलीज़ के लिए वो फैमिलीज़ जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए जो हमारा इन्वायरमेंट है कि ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है जिससे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इंशाल्लाह हम एक ज़बरदस्त किस्म का एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करेंगे जहाँ पे बच्चियाँ आएँ और खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए ए बी पारो, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग पे छक्का। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए और एक बार फिर अंपायर का इशारा किए छक्का। यकीनन ए बी पारो अब चाहेंगे कि इसी ओवर में खेल तबाह किया जाए। गोज अगेन, लेकिन फील्डर ने जंप किया, क्या अपने आप को संभालने में कामयाब रहे हैं, बल्कि नहीं, वो डे हैं लेकिन कैच शायद उन्होंने अंदर फेंका है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन हो रही है और अब हम रिप्ले में मजीद अंदाजा करेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट चीज होगा ये यकीनन अपना तवाज़ो बिल्कुल खो चुके थे और तवाज़न खोने से ठीक पहले उन्होंने बॉल को रिलीज कर दिया अपने हाथों से बिल्कुल और ये कैच करार दिया गया है। रेड लाइट्स ऑन हुई और जितनी तारीफ की जाए फील्डर की वो कम है और
इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है बिला शुबा। ए बी पारो 13 रन बनाकर आउट हुए। यहाँ पर उठा के खेल दिया है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच लेकर एक और विकेट हासिल कर ली है। और मुरसलीन को यहाँ ठिकाने लगा दिया है उबैद ने, तो तीसरी विकेट हासिल कर ली उबैदुर रहमान ने 17 रन देकर। ये चौथा ओवर दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ इसे निकाल दिया है डीप स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर मौजूद हैं, एक रन हासिल किया और इसी के साथ फतह हासिल कर ली नॉर्थ नवाब की टीम ने। 5 विकेटों से ये मैच अपने नाम कर लिया है नॉर्थ नवाब की टीम ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ कटाना है और मैं जीएम कॉर्पोरेट सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और शूज़ के हवाले से पहचाना जाता है। हम लोग आम लोगों के लिए जूते बना रहे हैं, उनके अलावा हम लोग फोर्स के लिए भी जूते बना रहे हैं जो कि कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें भी बना रही है जिसे बहुत कम लोग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी के लिए सियाचिन में जो शूज़ इस्तेमाल किया जाता है के शूज़ वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैस के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग अल खालिद और ज़रार के लिए कुछ पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक ट्री हुआ है चाइना की कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ, और पाकिस्तान में पहली बार ट्रक बस रेडियल जो टायर मुतारफ करवाए हैं वो भी सर्विस की तरफ से करवाए गए, सर्विस लॉन्ग मार्च की तरफ से। इससे पहले सारे टायर पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते थे। पाकिस्तान में मार्केट साइज ट्रक बस रेडियल का तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक साल में, और हम लोग जो प्लान करके इस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2 या 3 साल बाद 0.4 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की बना रहे होंगे। और मार्च में ये इनॉग्रेट हुआ है और इस वक्त लोग अमेरिका को ये टायर पाकिस्तान से बाकी कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है। मीडियाज के हवाले से मैं ये करूंगा कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से ममालिक से लोग होते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है और दुनिया को ये जानने में आसानी होती है। पाकिस्तान भी बहुत सी चीज़ें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नो डाउट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के लिए भी है। Well, hello. My name is Ayhan Shenturk, and I am the Business Development Manager for Profan Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995, and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground stations, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up to 7.3 meter big ground stations. So as I said, that's our main expertise. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a materials science team helping us with the design of our antennas, and we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings or telephone meetings with our contacts in Pakistan,
So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. My name is Abdul Basit, and we are exhibiting ideas from the platform of K Electric. K Electric has recently launched a new company with the name of K Solar, and from the platform of K Solar, we are offering solar solutions for our commercial industrial users. In these solutions, we have multiple models for our industrial and commercial users, which include power purchase agreement. In this solution, all the assets belongs to us. We are going to deploy it on the premises of user, of our industrial user or commercial user. In the solution, the customer has to pay any upfront costs. They only have to pay the monthly energy bill, which will be generated at the end of the month by using solar energy. So this is the first solution we are offering to our industrial and commercial users. And secondly, for the second solution we are offering is of deferred EPC payment. This is one of the viable options in which the client doesn't have to pay an upfront cost for their system. They have to pay the capital cost in terms of an installment for the defined period of time. And the third solution we are offering is the upfront cost, which will be paid by the consumer and at the time of installation. So these are the three options available for our users. And in all of our solutions, we are committed to quality, and we are not going to compromise in quality. And if the users is getting solution from K Solar, so what we are offering is one window solution for our users from survey till the commissioning of system. Only you have to contact K Solar, and we will gonna give you one window solution. You don't have to go anywhere else for any other services. We are going to do the survey, we are going to do the designing, we are going to do the installation and commissioning, as well as we will do the all preparation related to the net metering application, and we will help our users to get the generation license. And once the license is arrived, then we will going to install the energy meter, which will be done by our other department of K Electric, net metering department. So I welcome all our users to please come to K Solar and have a good experience from us, and please try us. And in last, I just want to thank the exhibition, the organizers. It's a really good experience over here, and I wish them a very good luck. मेरा नाम फातिमा है, मैं GMI हूँ FWO में, और FWO का यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे अपने 4 मेजर कंपोनेंट्स जो है, FWO पाकिस्तान में एक मेगा कंस्ट्रक्शन इदारे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ और काम करते हैं जिनको हमने यहाँ पे आज रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और टनलिंग इंस्टीट्यूट का एक सबसे अहम जो है वो काम है, और उसके लिए हम यहाँ पे डिजिटल कंस्ट्रक्शन के जितने पैरामीटर्स हैं उनको सामने रखते हुए डेली कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि कोविड के दिनों 40 दिनों के अंदर 250 बड़ा एक हॉस्पिटल जो है वो तैयार किया था। उसके लिए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सिस्टम को यूज किया था ताकि वो जल्द से कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट की जा सके। CTT यानी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें हम पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। IT की साइड से, तो मेरा ताल्लुक IT से, तो IT की साइड से नेटवर्क पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज ऊपर जो MTech इंस्टॉलिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम जो है उसकी यहाँ पर डिस्प्ले, हमने लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान ने FWO ने पाकिस्तान के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान एक लॉन्ग हॉल नेटवर्क है वो इस्टेब्लिश किया है फाइबर, और कराची टू पेशावर हो जाएगा अगले साल के शुरू में।
और फिर तमाम बोर्ड जो हैं वो हमारी इलेक्टेड होंगी और आप अगर पेशावर से लेंगे और सत्तर आप बगैर किसी जगह पे आप टॉल पेमेंट जो है एंड टू एंड हो जाएगी। और जब सखर हैदराबाद तक की मोटर हो जाएगी तो पेशावर से कराची तक आप सिंगल टॉलिंग के ऊपर सिंगल उसके ऊपर जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं। Formally launched National Defense Mission Seminar 2022, better known by its acronym IDES. Ladies and gentlemen, we entered the National Defense Exhibition industry by organizing the IDES in 2000 at Karachi with 125 international leaders and 150 foreign delegates. During the last 2 decades, IDES has grown steadily in space, volume, exhibitor, and foreign delegates. In IDES 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 231 delegates representing 44 countries. And we are lucky that Ahmed is here who was reaching them, and we had a record participation across the world. The ability to accelerate the idea got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to COVID, which was one of the most catastrophic of our living. World in general, and Pakistan in particular, fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am glad to hear that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15th to 18th November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite a gap of 4 years, we have received booking for more than 70% of the available space statewide. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger in size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from the other invitees. IDEA has established itself as an attractive and grand venue to promote mutual understanding, trust, friendship, and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world by showcasing Pakistan's defense production capability in the conventional realm, aimed at exploring ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing, and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision idea, which is twofold. On one hand, it aims at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with their regional and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, cooperate to build defense ties, and find solutions to problems confronting the region and the world. I wish to make a special mention of Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEAS 2022. I would also like to thank Ministry of Communication and Director General for Pakistan Post for according approval for issuance of commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying the holding of 11th edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the Government of State and Karachi District Administration have all been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his untiring efforts and wholehearted support. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad.
जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है। और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद ही यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिल के ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट्स होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रही है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना एक पीक टाइम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स उसको मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला की पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टेम बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये इवेंट होगा। I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. Pakistan has imported a European manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zori and Matador 47, 48. In our COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. It is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half a kg.
and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनरी हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कटा सके तो ये 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इस इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार, और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन की कन्फर्मेशन आ चुकी जो कि पूरी दुनिया के तमाम रियाज़मों से हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं, और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उस साथ साथ अपने प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी के रूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सके। जिसमें भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर नेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनी OEMs हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। ये एक इवेंट है, इसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह की चीज़ एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो लोग यहाँ पर आएंगे लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है। और तमाम तर जो का बहुत शुक्र है कि अब वो सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है जो हुआ कर, और इस तरीके से। और आजकल जो फ्लड के हालात हैं उसके इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी से फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक़िद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट में होगा, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 है वो आईडी के पहले ही दिन उसका इनेका किया जाएगा, और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इस तरह जो सेकंड टियर का नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा, दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़। उसके अंदर हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। गवर्नमेंट बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास्ट में भी मिली है और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो दोस्त कमेटी मीटिंग्स थी दे वर हेल्ड एट CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ फेम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली और उसका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखे। जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उस चीज़ें बहुत हमारे लिए आम। देखिए, जब ये कंसीव हुआ था आइडिया कि भी आइडियाज़ करना है तो उस वक़्त मकसद ये था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री,
वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टैपो। तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है। लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनके कॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं जब वो खबरों देखते हैं तो कोई गार के ज़माने में चले गए हैं, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इस तरह लोगों को बताते हैं। और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली and positively towards the economy of Pakistan since the time ideas started. And Badar Expo जो है वो और ideas जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर लिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The first exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B actions, joint ventures, and investments, and expects a strategic seminar will also be held to facilitate discussions and challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibit offers a platform for G2G, B2G, B2B actions, joint ventures, and investments in the defense sector. A strategic seminar will also be to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum. हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. It was really great visiting all the country, visiting all the weapons related to many countries here. My father is also in army. We are proud to be a person who's. We are proud to be daughters of a person who's in army. We love Pakistan and it was really a great experience. Really proud to be a Pakistani. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी की तरफ से हूँ और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिसमें हम थ्रेडिंग दे रहे हैं, नेल पॉलिश दे रहे हैं और मेहंदी का आप देख सकते हैं सेटअप है। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है बदर एक्सपो ने और इस तरह की जो है वो एक्सपोज होने चाहिए। ख़ासतौर पे कराची में हमारी जनरेशन को, हमारी फीमेल्स को ख़ासतौर पे बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्राउड है इस वक्त, काफ़ी रश है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेकर। थैंक यू बदर एक्सपो के इस तरह का उन्होंने हमें चांस दिया, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम एक अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। IDES 2020 bring together stakeholders across diverse defense industries. The 4A exhibition offers a platform for B2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDES will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Hello everyone, this is Sun from Narenco, China North Industries Corporation. Our corporation is an international defense company, and today we expected our most advanced defense product like BTV main battle tank and SH-15 howitzer. We are very honored and delighted to exhibit here. Thank you all. ज़ार फूड इंडस्ट्री के स्टॉल पे मौजूद है और यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें आपको दरकार है रमज़ानुल मुबारक से लेके और पूरे साल जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़ार फूड्स कंपनी आपको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम सर? सैयद मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है। हुसैन साहब ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं ना, ये ज़ार फूड कंपनी क्या काम कर रही है, इतना रश आपके स्टॉल पे दिखाई दे रहा है? अच्छा, ज़ार फूड के पास इनिशियली जो हमारा बेस स्टॉक है वो टी का है। अभी क्योंकि पाकिस्तान में एलसी बंद हुई है चाय की, और चाय की कैटेगरी में अभी चाय सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है, 2500 रुपये केजी पे मिनिमम चाय जा रही है। कराची सिंध के गवर्नर हैं, उनकी आवाज़ पे हम यहाँ पे अपनी चाय को लेकर आए हैं सिर्फ 1100 रुपये किलो देने के लिए। हम बेहतरीन क्वालिटी लेकर आए हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए। ये माल मेरे पास चेस पे मौजूद है, चेस डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर बेहतरीन क्वालिटी की चाय है। उसके साथ साथ मैं खीर, शीर, जो भी ईद के सामान है, मसाला जात हैं, सब 30-35% डिस्काउंट में लेकर आया हुआ हूँ और आवाम के लिए लेकर आया हूँ। के स्टॉल पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये वो बुनियादी अशिया हैं जिनके लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बचत सही मायनों में यही भी इनको दरकार है, जहाँ पे चावल से ले It's 9 p.m. IDES 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4A exhibit offers a platform for B2G, B2G, and B2 interactions, joint ventures, and investments in defense sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions of challenges within the defense sector. The 12th edition of IDES will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं SSJDC लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा अली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफ़र भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform for G2G, 2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the private sector. A STEAM seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibit offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. पूरे मुल्क से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से आए, तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर गए हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखिए ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए ख़रीदारी करने के लिए। और ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजामात आपके लिए जो किए गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया। सब कुछ जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया। उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी इसका मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजामात बहुत ज़बरदस्त हैं। नेक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच और गुड लक, अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं, पान के केबिन खुल चुके हैं। हर जगह पे आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से आए हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ आपने कनकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से। कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह? खुश, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? मज़ा आ रहा है। हर साल ने 16-17 साल हो रहे आ रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए। सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? सारे इधर ऐसा तगड़े ने, वो सारे तोड़ आगे अपने जानवर। अच्छा, सारे भी आपके? आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पानी पुनी सारा दे जाने ने, तो बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके ताउन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई ये सानू परेशानी नहीं किसी काम दी है। आज सानू 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी हर साल ही आने आ, किसी साल भी ना परेशानी नहीं आने दी। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे
ये खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा हाँ जी 1 साल के बच्चे? हाँ ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल से पढ़ाई बस आंदे ने। क्या आपने तैयार किए हैं यार 10 महीने में, क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? देखो अगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाबी जवान आ कोई कराची वाले नहीं पंजाबी पूरी मड़ी पंजाब दे वेखोगा वेसेरा बनना विच। ये जरा देखें अदनान, जरा दिखाएं तो सही ना यार, ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे, आप जानवर देख सकते हैं किस। आइए आइए जरा तो इधर आ जाएं, आप मेरे साथ इधर आए ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे हम भी पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। पूरी मंडी में घूमे हैं, ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं 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 नहीं, ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल कौन सी है ये साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस? भाई ये एक ही है मेरे ख्याल है इस साइज की। हाँ एक ही है। कुछ बछड़ा देखो आपको पसंद लगा? अरे बहुत ही जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मजा आया, और हम लोगों को भी बता रहे हैं पंजाब के शेर आपने देखे कि वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने। जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। आप ही शेर ने देखा पंजाब के शेर, दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KP के लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह? खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी VIP हैं, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बहुत ही। बिल्कुल असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा, पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें VVIP ब्लॉक भी है, VIP ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें VVIP भी है, VIP भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनको व्यापारियों को यहाँ पे फराहम की गई है कि आएँ और आके आप बिज़नेस करें, और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फ़ीस फ़ी गाय और फ़ी ऊँट 4250 रुपये है, जबकि फ़ी बकरी कीमत 2000 रुपये रखी गई है। तो फिर एक मुनासिब कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने जानवर लेके आते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराहम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराहम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स, खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं, बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारे इक़दामात यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। तो पहले रहें, उन मसाइल को दूर किया जाए। और इस दफ़ा
इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, लोगों से भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ और आके अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहीमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता है, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आ जाएँ, आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं, और आएँ और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का दिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा। ये बेस होगा और इसके अलावा स्टोरीज सुनाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा और बहुत सारा टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफ साहब जो कि नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके अल-शिफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी की तरफ से, और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप थ्रेडिंग दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, और मेहंदी का आप देख सकते हैं सेटअप है। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है बदर एक्सपो ने, और इस तरह की जो है वो एक्सपोज होने चाहिए। ख़ासतौर पे कराची में हमारी जनरेशन को, हमारी फीमेल्स को ख़ासतौर पे बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ काफ़ी क्राउड्स वक्त काफ़ी रश है, लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को। थैंक यू बदर एक्सपो के इस तरह का उन्होंने हमें चांस दिया, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम एक अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ये बदर एक्सपो की तरफ से जो एग्जीबिशन लगी है बचत बाज़ार की, उसमें इनोवेटिव कंपनीज की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हमारा ये जितने भी स्टॉक आप देख रहे हैं सारा प्रीमियम क्वालिटी लगा हुआ है, मार्केट में हमारा चल रहा है। इस पर हम टोटल जो अपने डिस्काउंट दे रहे हैं वो फ्लैट 20% दे रहे हैं मार्केट के। अगर मार्केट में एक चीज़ 240 रुपये की है तो हम 200 रुपये की ऑफर कर रहे हैं, और ये मार्केट में जो प्राइस है ये 200 का है, हम 150 का यहाँ सेल आउट कर रहे हैं। बड़े का अच्छा एक इवेंट है, और पिछले साल भी हमने लगाया था, इस साल भी हम लगा रहे हैं। तो अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट भी है, लोगों को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, और हम भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना इनपुट डाल रहे हैं। मवेशी मंडी में इंतजामात का आगाज़ हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स अभी खासे दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी
वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर। BTV brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B directions, joint ventures, and investments in the production sector. A seminar will also help facilitate discussion of global challenges within the defense sector. The edition of IDEA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. तासीर अहमद मेरा नाम है, मैं बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। ये हमारा बेसिकली स्टॉल है अलबशीर कस्टम फैब्रिकेशन का। ये अलबशीर ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे पास टोयोटा की डीलरशिप्स हैं, एमजी की डीलरशिप है, जैक फॉरलैंड ट्रक की डीलरशिप है, 2-3 हमारे पास चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं, और उसके अलावा हमारा कस्टमाइज फैब्रिकेशन का काम है। ये जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक्स, रेस्क्यू व्हीकल्स, कार्गो ट्रक्स, लग्जरी व्हीकल्स, मोटर होम, ये जितनी किस्म की गाड़ियाँ होती हैं सब पे हम फैब्रिकेशन करते हैं। और इसके अलावा हम EN सर्टिफाइड भी हैं, CE सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है, ISO सर्टिफिकेशन भी है हम। और इसके अलावा तमाम किस्म के जो ब्रांड्स हैं हमारे पास, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो व्हीकल सेल के अंदर भी हमारी जो है वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा कंप्लीट सोल्यूशन हम ऑन व्हील्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके पास कोई भी गाड़ी हो, वो टोटा हाईएस हो, वो आपके पास कोई फायर ट्रक है या किसी भी किस्म की गाड़ी है, उस पर आपने कुछ भी बनवाना हो तो हम उस पर बना देते हैं। ये हमारा ओवरऑल है। हमने यहाँ पे एक्सपो पे आए हुए हैं, या देख रहे हैं हमने एक फायर बाइक लगाई हुई है, यहाँ पे रेस्क्यू बाइक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहाँ के ऊपर हम फायर बाइक ये लेके जा सकते हैं। इसके अलावा पीछे एम्बुलेंसेज भी हैं और छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी है। ये सब पे हमने जो है वो यहाँ पर हमने स्टॉल में एग्जिबिट की हुई है लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू। मैं एमडी फूड इंडस्ट्रीज़ का CEO आप लोग से मुखातिब हूँ। आज हमने यहाँ पर बदर एक्सपो की जो यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, उसके हवाले से हमने डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह लॉन्च किए हैं यहाँ पर, और हम तकरीबन 15 to 20% तक अपनी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, हमारी एग्जिस्टिंग जी के ब्रांड से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं हम उस पर डिस्काउंट्स दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने प्रिंगल्स का सब्स्टिट्यूट भी लॉन्च किया पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको भी हम बहुत रिजनेबल रेट्स पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। इस तरह हमने और मज़ीद इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के भी हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हमने नुमाइश के लिए भी रखे हैं, और लोग आते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और फ़ायदा भी उठ सकते हैं। और मैं आखिर में बदर एक्सपो का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म अता किया, और मैं लोगों को भी चाहूँ कि इसको आके अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू। इस वक्त हम जा रहे हैं मवेशी मंडी, और सुपर हाईवे से जस्ट हमने लेफ़्ट टर्न लिया है। अगर आपने देखी होगी सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी के बाद फ़ौरन एक बड़ा फेमस अल हबीब होटल आता है, उसके फ़ौरन बाद नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता मुड़ रहा है, जो रास्ता कोयटा को भी जाता है। हम उससे मुड़े, और अगर हम वहाँ से मुड़ते हैं तो फिर आप गूगल मैप में ज़रूर देख सकते हैं कि 8 मिनट का रास्ता, तकरीबन 1 मिनट हम और चलें तो 9 मिनट का रास्ता है जहाँ से हम मुड़े हैं नॉर्दर्न बाईपास से। और आप देख सकते हैं ये रोड जिस तरीके का है, बेहतरीन किस्म का रोड बना हुआ है, तमाम की तमाम सहूलतें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही आप नॉर्दर्न बाईपास से तकरीबन भी 7-8 किलोमीटर चलेंगे, तकरीबन 7 किलोमीटर, तो ये नॉर्दर्न बाईपास का रोड आप देख रहे हैं। यहाँ सुपर हाईवे से हम लोग आए हैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद लतीफ़ ग्रीन सिटी के नाम से आपको ये पीछे बोर्ड दिखाई देगा। ये इलाका लतीफ़ ग्रीन सिटी की जानिब आ रहा है। और यहाँ आप वैसे भी देख सकते हैं मवेशी मंडी, कैटल मंडी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको तकरीबन 7-8 किलोमीटर सुपर हाईवे के बाद यहाँ दस्तयाब होगा। और उसके बाद आप लतीफ़ ग्रीन सिटी को जो रास्ता जा रहा है आप इसके लिए चले जाएंगे। आप जिस जानिब देखेंगे तो फिर आपको मेरे पीछे इधर देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी खड़ी हुई दिखाई देगी, बेहतर अंदाज से काम हो रहा है। और अगर आप इस जानिब भी देखेंगे
तो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी खड़ी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए हैं ताकि आप बेहतर अंदाज से आके सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जहाँ माशी बहरान अपने अरूज पर है और लोग बेयारो मददगार इंतज़ार में हैं, लेकिन एक और बात मुझे समझ नहीं आती कि हम या तो जानते बूझते या अनजाने में गरीबों को ये एहसास दिलाते हैं कि आप गरीब हैं। यानी आप ऐसी लाइनों में लगे जहाँ गुर्बत का एहसास हो। ये मैं गवर्नमेंट साइड की बात कर रहा हूँ। एनजीओ तो जो अपना काम कर रही हैं उनको तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन आज मैं ये अपने उन लोगों से कह रहा हूँ जो इस अंदाज से लोगों को रिलीफ देते हैं कि उसे गुर्बत का 100% यकीन हो जाए कि वो गरीब है। यानी हमें खुशी होती है कि हम बड़े बड़े बैनर लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये रिलीफ बाजार है, ये बचत बाजार है, ये गरीबों के लिए डिस्काउंट है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। हमें उनके इस्तेकाक का और उसको मजरू ना करने का सबसे बड़ा एहसास होना चाहिए। हम अगर किसी को रिलीफ दे भी रहे हैं और वो जिसको दे रहे हैं वो इस मुल्क की वो अवाम है जिसकी वजह से हम इक़्तिदार में आए, तो आज इक़्तिदार में आकर हम उनसे जिनसे वोट मांगते हैं या जिनसे हम ये तवक्का रखते हैं कि वो हमारे लिए खड़े होंगे, तो ये कैसा जुल्म है कि हम गरीब को ये एहसास इस शिद्दत से दिलाते हैं कि तुम गरीब हो, तुम गुर्बत की आखिरी लाइन पर हो, और हम कोई बादशाह हैं जो तुम पर ये एहसान कर रहे हैं कि हमारे लिए हमने यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिए हैं या हम तुम्हें चंद कतारों में खड़ा करके चंद लोगों को कम रेट के ऊपर दे रहे हैं। या तो आप मुफ्त में दें तो आप समझे आपने कोई बड़ा एहसान किया है, लेकिन अगर हम ये देखें कि आज ज़ुहैर नसीम ने जो बचत एक्सपो में ये इंतज़ाम और एहतमाम किया है, ये एक रिस्पेक्टफुल तरीका है जहाँ पर तमाम ही ब्रांड्स मौजूद हैं और इनका यह काम यह है कि हम उसको ये मेक श्योर करें कि वहाँ रेट्स कम हैं, और उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ लेने आने वाला कोई गरीब है। यहाँ हर वो शख्स मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, मुझसे ज़्यादा इज्जत रखता है अपने घर में, अपने ख़ानदान में। तो हम बार बार ये तस्करा ना करें कि ये हमने गरीबों के लिए या कोई मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। यहाँ भी जो हो रहा है वो कारोबार हो रहा है, और जो शख्स भी आता है वो खरीदा है। ये हमारा ज़रूर काम है कि महंगाई को कंट्रोल करें। असल लफ्ज़ ये होना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन हालात में जहाँ माशी बहरान मौजूद हो और हम अपनी आवाम के लिए कुछ ना करें। देखिए, अमीर लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या ख्वाहिश करते हैं, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। हर मीटिंग्स में यही बात करते हैं, लेकिन कभी आप ये सुना है कि हुकूमत ये कह रही हो कि इन गरीब बिजनेसमैनों के लिए हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया? नहीं, वहां पे तो इंटरेस्ट रेट अपना हक समझ के कम करवाया जा रहा है, और गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने बिजनेसमैनों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रिलीफ दिया है कि इंटरेस्ट रेट कम करें। लेकिन मैं समझता हूँ ये लफ्ज हदफ होना चाहिए पाकिस्तान की डिक्शनरी से कि जहाँ आवाम के लिए अगर कोई रिलीफ हो तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि हमने मिडिल क्लास के गरीबों के लिए बड़ा कोई एहसान कर दिया। तो ये एहसान नहीं है, ये हमें रिलीफ देना है। यही हुकूमतों का काम होता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए जो उनका है। जैसे एक बड़े सनतकार का इस मुल्क पे हक है कि वो अपने
इंटरेस्ट रेट को कम कराए, बिजली के नर्क कम कराए, गैस के नर्क कम कराए। तो अगर गरीब को गरीब कह कह के बार बार उसकी तजलील की जा रही है, अगर मैं ये कहूं कि गरीब को गरीब हमारी हुकूमती पॉलिसी ने तो बनाया है, वरना आज एक आम आदमी जब मुल्क से बाहर जाता है तो वो 2-4-5 साल में अभी कैसे बन जाता है? क्योंकि वहाँ हुकूमतें उसको इज्जत दे रही है और उसको मौके फराहम करती हैं जो कि हमने नहीं दिए। मैं ये समझता हूं कि अगर आज भी हम अज़्म कर लें, और मैं ज़ुबैर नसीर साहब यहाँ खड़े हैं और ये मेरी बात की तायीद करेंगे, वरना ये ना कर दें, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी ये अहद कर लें कि हमें कराची एयरपोर्ट से लेकर CBU तक और सेंट्रल में हैदरी तक अगले 5 सालों में 100 बिल्डिंग बनानी है, 100 मंजिला, क्यों नहीं बन सकती? आज अगर हम अहद कर लें तो 5 साल में ये 100 बिल्डिंगें बन सकती हैं, और अगर ये 100 बिल्डिंगें बनना शुरू होंगी तो आपको हर किस्म की मुलाजमत अच्छे पैसों पे इस शहर में मैसर होगी। जब आप दुबई उतरते हैं तो आप ये 2000 बिल्डिंगें देखते हैं, आप मलेशिया उतरते हैं तो 2000 बिल्डिंगें, दुबई में 2000 बिल्डिंगें, इस्तांबुल में 2000 बिल्डिंग। तो मेरे शहर में जो माशी हब है पूरे पाकिस्तान का, जहां पर अगर इमार के अंदर अपार्टमेंट लेने जाएं तो 20 करोड़ रुपए का है, तो अगर ये 100 बिल्डिंगें बनेगी तो ये 2 करोड़ मिलेगा। तो इस पर हमने काम करना है और मैं समझता हूं कि ये पॉसिबल है, और इसको भी मैं गवर्नर इनिशिएटिव का नाम दूंगा। प्राइवेट सेक्टर के बिल्डर्स को मैं बुलाऊंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा और उनको कहूंगा कि कम रेट के ऊपर लोगों को रिहायशी मंसूबे दें। जिस तरह यहाँ आज बजट एक्सपो है, इसी तरह कम रेट पर अगर ज्यादा बिल्डिंग्स बनेगी तो लोगों को रिहाइश भी सस्ती मिलेगी। हमने काम करना है, हमने इस शहर को, इस सूबे को तरक्की देनी है, और ये मुमकिन है। आज कोई चीज ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। हम मुल्क है, पूरा सिंध जो है, हमारे पास जमीनें हैं। अगर हम किसानों को, काश्तकारों को सही बीज, सही फैसिलिटीज दें तो आपकी क्रॉप जो है वो बेहतर हो सकती है, 4 गुना हो सकती है, 5 गुना हो सकती है। तो यहाँ पर अब सिलसिला, जिस तरह हमने गवर्नर हाउस में IT का इनिशिएटिव लिया, अल्लाह ने कंप्लीट करवा दिया। आज 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं। आप मीडिया गवाह है। गवर्नर हाउस के दरवाजे रमजान मुबारक के लिए आज खुले हुए हैं, अब के लिए मीडिया गवाह है। गवर्नर हाउस से राशन ड्राइव आज तक हो रही है, मीडिया गवाह है। आज मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूं कि इस शहर की डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 5 साल में हम 100 मंजिला 100 बिल्डिंगें बनाएंगे। इसी तरह से जो इंडस्ट्री है वो खत्म होती जा रही है। आज मैं जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठता हूं उसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। अगर उनको एड्रेस किया जाए तो क्या जरूरत है कि वो बांग्लादेश में जाके इंडस्ट्री बनाए, उसे क्या जरूरत है कि वो इस्तांबुल में जाए, तुर्किया में जाए। इसी शहर, इसी सूबे में इंडस्ट्री भी लगेगी, इमारतें भी बनेंगी, ज़राअत पर भी काम होगा। और मोदी को भारत का वजीर आज़म है जो उसने अभी 3 दिन पहले बयान दिया है कि मुझे दोबारा वोट दो, क्योंकि मैंने 5 साल के इक़्तिदार में पाकिस्तान को भी आने वाला मुल्क बना दिया है। वो अपनी तकरीर में कह रहा है कि आज वो IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। तो हमें एक गैरतमंद कौम, एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझ समेत सबको ये आज़म करना चाहिए कि मोदी के इस बयानिए का जवाब पाकिस्तान तरक्की करके देना है। ज़बानी बातों से, जमा खर्च से कुछ नहीं कहा। आज मैं यहाँ आने से पहले कर्नल शहीद सैयद काशिफ अली के घर गया, उनके वालिद साहब से मिला, उनका जज्बा मैंने देखा। वो इस बात में खुश हैं कि मेरे बेटे लोगों की जानें बचाते हुए जाए नजराना दिया। उस बाद में नसीर सोमर के पास दारुल जैद हॉस्पिटल गया। वो फख्र सिंध है, फख्र पाकिस्तान है। हमारे पास हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। हमारे पास जफर अब्बास हैं, हमारे पास सैलानी जैसे बशीर फारूकी साहब हैं। इन सबको बिठाना होगा, स्टेक होल्डर्स के साथ मैं बैठूंगा
कोई वजह नहीं है कि मेरा सूबा और मेरा मुल्क तरक्की ना कर सके। सिंध में कुदरती ज़खायर से माला माल मवाद मौजूद है। और एक और मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा तनकीद की जाती है, जफर भाई भी खड़े हैं, कहते हैं जी आप जो इतने से काम करते हैं इसलिए लोग आपके पीछे पड़े हैं कि इनको हटा दें। मैं आपके काम आपके सामने आके खड़े हुए हैं। तो जफर भाई, मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूँ, भी तो सिर्फ कराची के गवर्नर हाउस में IT प्रोग्राम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर ये थर में भी होगा, सखर में भी होगा, ये नवाबशाह में भी होगा, लाड़काना में भी होगा और हैदराबाद में भी होगा। इंशाअल्लाह ताला IT की तमाम क्लासेस इन तमाम शहरों के अंदर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह इस 50,000 बच्चों को हम जो $8,000 का कोर्स करवा रहे हैं बच्चा, और 50,000 ऑन साइट पढ़ रहा है, 4.5 लाख ऑनलाइन पढ़ रहा है। सिर्फ यही कहूंगा कि रोक सको तो रोक लो। आवाम के लिए दिन और रात खड़ा रहूंगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात में मुझे उम्मीद है कि हम IT से ही इस सूबे सिंध को इस पाकिस्तान में IT का बनाएंगे। शहर कराची IT सिटी बनेगा और यहाँ हर पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा बच्ची IT के कोर्सेज करेगा और इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालेगा। और मैं उन सब के साथ शाना बशाना था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं SHADC लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं अपनी लैब के बारे में आप थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफर भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मवेशी मंडी में इंतजामात का आगाज़ हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स अभी खासे दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition is a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures investments in the defense weapons sector. A seminar will also help facilitate discussions on challenges within the defense sector. The 12 of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. पूरे मुल्क से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से आए, तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर के आया हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखे ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए ख़रीदारी करने के लिए। और ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजामात आपके लिए जो की गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया। सब कुछ हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया,
रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया, उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिए सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी इसका मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजामात बहुत ज़बरदस्त हैं। निक मोहम्मद भाई, थैंक यू वेरी मच और गुड लक। अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कंदकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल यहाँ पे बन गए हैं, पान के केबिन खुल चुके हैं, हर जगह पे आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ आपने कंदकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से। कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह? खुश, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बस मज़ा आ रहा है, हर साल होना 16-17 साल हो रहे आ रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं? तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए, सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? अरे इधर ऐसा तगड़े ना, वो सारे तोड़ आगे अपने जानवर। अच्छा, सारे भी आपके? आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पानी पुनी सारा दे के जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके ताउन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई ये सानू परेशानी किसी काम दी है। आज सानू 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी हर साल होने किसी साल भी ना परेशानी नहीं होने दी। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है? तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे, ये खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा, हाँ जी, 1 साल के बच्चे? हाँ, ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल वास्ते पढ़ाई वास्ते आते हैं। क्या आपने तैयार किए हैं यार? 10 महीने में क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं अगे, देखो अगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाबी जवान आ कोई कराची वाले नहीं, पंजाबी पूरी मंडी पंजाब दे देखो सेरा बनने विच। ये जरा देखें अदनान, जरा दिखाएं तो सही ना यार, ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे। आप जानवर देख सकते हैं किस। आइए आइए जरा, तो इधर आ जाएं आप मेरे साथ, इधर आए ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा, ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे हम भी पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। पूरी मंडी में घूमे हैं, ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं 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 नहीं, ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल, कौन सी है ये साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस? भाई ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ एक ही है, कुछ बछड़ा देखो आपको पसंद लगा? अरे बहुत ही जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मज़ा आया और हम लोगों को भी बता रहे हैं। पंजाब के शेर आपने देखे कि वही में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने। जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। आप ही शेर ने देखा? पंजाब के शेर, दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। आप देखते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह? खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी VIP हैं, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही। बिल्कुल, असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा, पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें VVIP ब्लॉक भी है, VIP ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना
कारोबार करने के लिए पहुँचे तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें VVIP भी है, VIP भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनको व्यापारियों को यहाँ पे फराम की गई है कि आएँ और आके आप बिज़नेस करें और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फ़ीस फ़ी गाय और फ़ी ऊँट 4,250 रुपये है, जबकि फ़ी बकरा और फ़ी बकरी की कीमत 2,000 रुपये रखी गई है। तो एक मुनासिब कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने जानवर लेके आते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स हैं। मैं एक बार फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बका पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स, खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं, बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारे इक़दाम यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। जो मसाइल पहले रहे हैं उन मसाइल को दूर किया जाए और इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, लोगों से भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ और आके अपना जानवर यहाँ खरीदें, कुर्बानी के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आ जाएँ, आपको चीज़ बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन रेट में मैसर होगी। राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं और आएँ और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह निगहबान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एशिया की बड़ी मंडी कहें या वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी, जिसमें 3.5 लाख से ज़ायद मवेशी मौजूद हैं। मवेशी मंडी के नाम से ही यहाँ पर आवाम के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी के साथ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं इनके तमाम मुतमिज़ीन जो हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आवाम के लिए सहूलियात मैसर की हैं। बदर एक्सपो हमारे ज़ोएब नसीर यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने सारा मीडिया यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं समझता हूँ कि एशिया की बड़ी मंडी होने की वजह से और कराची के अंदर जो लोग कुर्बानी शौक़ से करते हैं, ख़ूबसूरत जानवरों की ख़रीदारी करते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ मुझे रोज़ाना टीवी पर नज़र आई है। और हर साल की तरह मैं ख़ुद भी पिछले कोई 12-15 साल से इस मवेशी मंडी में आता हूँ। पहले जहाँ लगती थी वहाँ भी हम जाते थे, पिछले साल यहाँ आए हैं और अभी विज़िट भी करना है। ये भी देखना है कि यहाँ जो
रेट रखे गए हैं वो एक आम आदमी की रीच में हैं या नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आखिरी के 4-5 रोज़ होते हैं, इस देखने में ये आया है कि ख़बरें आती हैं कि जो व्यापारी हैं वो भी लुटना शिकार हो जाते हैं, जो ग्राहक आता है उसको भी शिकायतें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के तवज्जुह से आई सिंध को भी मैं ये कहूँगा कि वो स्पेशल अरेंजमेंट सिक्योरिटी के यहाँ प्रोवाइड करें, रास्ते में पिकेट्स लगाएं ताकि ना ग्राहक को प्रॉब्लम हो ना व्यापारी को प्रॉब्लम हो। जो एक फैसिलिटी लोगों को दी गई है उससे वो अफादा हासिल करें। और मकसद सिर्फ यही है कि एक ऐसा फरीज़ा जो हम पे फ़र्ज़ है, जो साहिब सबत लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो कुर्बानी का सिलसिला है वो साहिब सरबत लोगों को पूरा साल जारी रखना चाहिए, चाहे वो सदक़े की सूरत में हो, अल्लाह नाम की सूरत में हो। क्योंकि इस वक्त जहाँ माशी हालात इतने मुश्किल हों, वहाँ एक मिडिल क्लास और एक गरीब शख्स के लिए बकरा या गाय का बैल का गोश्त खरीदना नामुमकिन हो गया है। अल्लाह ताला ने एक फरीज़ा है जिससे लाखों लोग फैज़याब होते हैं और कई महीने तक ये गोश्त इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर जो यहाँ जिन्होंने ये सारे इंतज़ाम किए हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी मौजूद हैं, बाकी भी उनकी टीम मौजूद हैं, मुबारकबाद मुस्तहिक हैं। और इंशाल्लाह मैं विज़िट करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ क्या रेट्स रखे गए हैं, क्या चीज़ है। शुक्रिया आप सबका। IPS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2B, and B2B regions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be facilitate discussions of challenges within the defense sector. The Dinner of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं SSJDC लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा अली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से, बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे, और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफ़र भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्काउंट की बात हुई तो आपको वो 20% डिस्काउंट मार्केट से कम प्राइस में, मार्केट से कम प्राइस में, इसलिए यहाँ पे इतना रश भी है और हम ले भी रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रमज़ानों में सबको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी इतनी इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो दिस इज़ वेरी गुड। आप जो ये इतना सामान लेके जा रही हैं तो मुतमईन होके जा रही हैं? बिल्कुल, हमने पहले डिसाइड किया कि हम क्या लेंगे और फिर मैंने यहाँ से आके लाइन में लग के लिया इतना सारा सामान। यहाँ पे आटा चावल आपको मिल रहा है, कोई ऐसी चीज़ आप समझती हैं कि और स्टॉल्स होने चाहिए? और होने चाहिए, बाकी ब्रांड्स भी होने चाहिए। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लोग बहुत स्पेसिफिक ब्रांड्स यूज़ करते हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तेल के ऊपर, हम दूसरा ब्रांड यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि सस्ता यहाँ पे मिल रहा था तो हमने स्विच किया। अब लोग, चूँकि इन्फ्लेशन है तो लोग अपने ब्रांड्स पे स्विच कर रहे हैं, ये बात है। तो ये बचत एक्सपो से आप मुतमईन होके जा रही हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा होनी, सिर्फ रमज़ान में नहीं और भी होनी चाहिए। हमसे ज़्यादा बिलो द बेल्ट लोग रहते हैं जो इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा शिकार है, उनके लिए ये होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये कुकिंग ऑयल लेके आ रहे हैं तो मार्केट के लिहाज से डिस्काउंट मिला? बिल्कुल डिस्काउंट है। ये आज ही के रेट है 3500 रुपये का, ये मार्केट में रिटेल में मिल रहा है। और यहाँ मैंने जो है 2530 रुपये का मैंने लिया, तो मुझे 500 रुपये मुझे बच गए। बाकी ये आलू प्याज पे भी ज़्यादा है और बाकी और चीज़ों पे इतना मुझे डिफरेंट नहीं लगा, लेकिन आलू प्याज और तेल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया उन्होंने। It's 10 p.m.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good evening to you people wherever you are in the world. We are live here yet again for match 27 where Clifton Capulars are up against Liari Legends from DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi. Yeah, a little while ago, both of the captains were there in the middle with our colleague Danish Anish. And the news from the center was that Liari Legends have won the toss and opted to bat first. Here we go. It's match 27 and we are all set. The players are just about to get ready. He bowls a full toss this time and it's a welcome to the crease. Hamidullah to start. Qari Hamidullah straight away got into his class act. This is a big swing and he's got the connection all right. It's a first by the left-hander and it's a good one. Typical left-handed leg-sided swing. He goes again. Another one. Two. That's even bigger. That's landed on the second tier. He goes for the massive shot but doesn't connect. And this time it's Farhad Abdali who doesn't make any mistake. And look at the celebrations. They are relieved, Clifton Capulars. Badar is gone for 15. 26 for 1 is the score. And by taking gambles, you can do that. This time it's an outside edge, and this time it's been taken at short third. Catching has been good in this innings at least. Farhad comes and gets a wicket. He's gone for 4, 31 for 2. This time it's a connection. It's Hamidullah who's got one in the middle of the bat. And there you go. It's half a dozen the result. Over square leg. It's a leading edge chance for the bowler himself. Imran is going to take it. Once again, another wicket has gone down for Liari Legends. Qari Hamidullah just not timing that sweep shot whatsoever, ending up giving a dolly of cash to the bowler. Hamidullah went for 14 on 9 deliveries, 39 for 3. Big heave on the leg side. Looks like he has got plenty on it. What a connection. This ball has been deposited into the stands on the leg side. Shot asking to be hit, getting the elevation and the distance. Another exists to the captain. Not good bowling from Imran. Shot again. It's flat, it's hard, it's long, and that's going to be yet another 6. What a start this is from the captain. 3 sixes in the over. Full toss. Might be given as a no ball. It's going to go all the way for 4. We'll have to wait for the umpire signal. Yes, the left arm is aloft. Not only it's a no ball, but it's a boundary as well. Bowling the last over of the innings. Outside edge and taken. Well, that was dying to the wicket-keeper, Umar Baja, behind the stumps. Still managed to take it. A wicket of the very first ball to Mansoor. Ashraf Pathan's cameo comes to an end. 23 of 9 for the captain. Full toss. Thumps it down the ground all the way for Maxim. That's a good action for Irana Mohsin. If you bowl in the middle on his body, definitely you're going to get hit. Slower one, picked up, it's up, and it's over. Really good hit this from Dawood. He was waiting for that slower length, and as soon as he got it, he had no hesitation. It's pitched up. Once again, Dawood has deposited that over long on for yet another gigantic 6. And a perfect way to finish the innings. 3 maximums coming in that last over of Mansoor. Liari Legends have put up a very good score. They have managed to score 92 runs for the loss of 4 wickets. शाह स्ट्राइक पर हैं। पहली गेंद आने को है इस दूसरी इनिंग्स की। राना मोहसिन असद शाह के लिए लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर बीट हुए।
फील्डर मौजूद थे सर्कल के अंदर विकेट कीपर के पीछे, वरना ये 6 रन होते, लेकिन 2 रन फिर भी हुए हैं। इस गेंद का ड्राइव किया, बड़ा खूबसूरत ड्राइव, और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री से बाहर, 4 रन। इस गेंद को ओवर द टॉप ऑफ साइड में, और गेंद को कवर्स और पॉइंट के दरमियानी पोजीशन पर 6 रन के लिए बाहर डिस्पैच कर दिया। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ी खूबसूरत गेंद, एज हुआ और विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया, और सोहेल फहद मियां चन्नू की बड़ी विकेट लेने में कामयाब। 7 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस फहद आलम। इस गेंद को खेले, मिड ऑफ को बीट किया, और गेंद गोली की तरह बाउंड्री से बाहर, चौका। बड़ा खूबसूरत शॉट, ओह शॉट यार, गेंद घास के साथ एक तरह से चिमट कर रह गई है, और फिर रगड़ खाती हुई बाउंड्री से बाहर, 4 रन। इस मरतबा ऊंचा शॉट, वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, जोरदार और शानदार छक्का, काफी बुलंदो वाला स्ट्रोक। और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पे लॉफ्ट किया, फील्डर ने हवा में जंप किया और कैच करने में कामयाब। अहमद विकेट लेने में कामयाब हुए उमर की, और 39 रन पर दूसरी कामयाबी। बाजवा 1 रन बनाकर आउट हुए, 39 for 2। इस गेंद को घुटने का बेंट करके ऊंचा खेले, 2 फील्डर आए, मगर गेंद दोनों के ऊपर से बाउंड्री से बाहर, छक्का। Outside edge, gone. Tahir Pindi goes once again outside the off stump. He chased it. Massive outside edge, big deflection, and good take behind the stumps. So brief innings is over of Tahir Pindi. Outside the off stump, he lifted. Is it long enough? Just enough. Wide outside the off stump, and Asad Shah chased it beautifully. And what a finish of the over. Change of pace, going for the run, could be tight. Oh, gone, suddenly gone. But wicketkeeper is not happy at all. He wanted him to throw to the batting end. The wicket falls here. He goes for none, 4 for 63 on the board. He goes for it, has it lofted beautifully, over long off. Not quite, he's gone. Good catch. He is yard short of Shah. He tried his best to clear the long off boundary. Well picked up by the fielder, and Ahmed has got the breakthrough. It's a big one. He goes for it. Has he struck it well enough? Fielder coming up. I think it goes for 6. Just enough good connection from Arbaz, who came to the crease, timed it well, and cleared the boundary. He goes for it. Chance or 6? Forget about chance, it's a huge one. Lovely connection right off the middle of the bat. Length ball put away by Kamran. Got him! Hit the timber. Beautifully bowled. Lovely line, lovely length. And Arbaz has to walk back. Well, taking all the time before the run-up. Shows off now. Salman hitting the stumps. Arbaz goes 6 of 2. Goes for the big shot. Hard and flat will be caught. No, in the gap. It's a boundary. Good one. Very full. Plenty of pace behind the ball. He's coming back for 2. And comfortably taken. Now scores are absolutely even. You are spot on, Kainat. So 90 for 6 exactly after 6 overs. There is no lead. Nobody's ahead. Nobody's behind. Good evening and welcome back to all of you folks wherever you are across the globe. We welcome you once again from the DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi, where the second match of the night is off and running. First innings is done and dusted, and the first innings, both of the sides
couldn't separate each other. Now let's play. Let's play, boys. Outside the off stump. Will be given as a wide. And here goes Pena announcing his arrival with his first maximum. It's all gone. This is Pena, we all know. Yeah, that's the delivery he was waiting for. You're right, but this guy seems to be a master in doing that. And he's a master if you pull him there. That's a he's all right in the stands. That's Nizar, we all know, his first 6 of this innings. Could have got few runs as well. There we see the owner of the HA Dabangs and Clifton Popular. Oh, that's wrong line, wrong length, and pays the price with a boundary. Does Farhad Abdali. So a boundary to finish that over. 2 done, it's 20 for none. He miscues one that is in the air, and it's been accepted. Easy one for the fielder at backward point, and Pena is gone. Well, technique again comes into play with those type of shots. He gone for 8. एक और बड़ा उम्दा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है छक्के के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद और फरहाद की इस गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर गेंद के पीछे भाग गए हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचकर उनकी हिम्मत जो है बढ़ गई और उन्होंने अपने कदमों से गेंद को रोकने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए। इसी अवस्था में दोनों बैट्समैनों ने क्रीज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गालिबन यहां पर ये रन आउट की अपील की जा रही है। दाऊद को लियारी लेजेंड के वापस जाना होगा 7 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के के साथ 13 रन बनाने के बाद वापस लौटते हुए। उमर बाजवा इस ओवर में पहली मर्तबा आए गेंद की और इस गेंद को उठाकर खेले हैं और फील्डर गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। यहाँ बड़ा शानदार शॉट है निज़ार लफ्टी की जानिब से और इस बार उठाकर खेले हैं, गेंद हवा में और तैरती हुई ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। उमर बाजवा एक मर्तबा फिर आए गेंद की और इस बार गेंद को कनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है और ये गालिबन इस ओवर का दूसरा छक्का होगा। यहाँ एक बार फिर से यहाँ सुलर बाजवा की जानिब से और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं अशरफ पठान 6 रन के लिए। अशरफ पठान फुल फॉर्म में रहे तो इस ओवर 6 छक्के मुझे मुश्किल दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन इस बार अशरफ पठान ने अपनी विकेट की कुर्बानी दी है जबरदस्ती और साथ ही वाइड बॉल का इशारा भी है अंपायर की जानिब से। 2 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद डिपार्चर अशरफ पठान का। एक बार फिर से तैयार हैं, सामने मौजूद है निज़ार लेफ्टी। इस बार निज़ार लेफ्टी की जानिब से है, कोई मौका नहीं यहाँ पर फरहाद आलम अब्दाली के पास टिप मिड विकेट के ऊपर। इस ओवर में आखिरी मर्तबा और इस बार जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे विकेटकीपर गेंद के नीचे और उन्होंने गेंद को कैच किया। 96 रन का अब हदफ मिला है इस मैच को जीतने के लिए क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम को। 95 रन 3 विकेटों के नुकसान पर लियारी लेजेंड्स ने बनाए हैं और आखिरी 12 गेंदों पर 47 रन बने। Here's the first ball. And here's the first big shot. It's into the gap. That's going to run away for 4. Typical Almia Chunnu start this. It's up in the air. He hasn't timed it. There is a fielder at long off who is trying to get underneath that, and he has taken it. Wow, what a comeback this is from Rana Mohsin. The revenge has been sought. Fahad Mia Chunnu dismissed. Pitched up. Hit away down the ground. There is a fielder out there at long on, but the ball has gone past him. He goes again. This time getting the elevation and the distance, the captain. And that ball has landed over the roof. Slower one. Picked up. It's up in the air. He hasn't timed it. Fielder getting underneath that. And he has taken it in the
Well, 6th or 7th attempt finally. And once again it's Umar Bajwa who disappoints. Bajwa goes for 1, 19 for 2. Meanwhile, Sohail is continuing. Powerfully struck on the outside. Look at how fast that ball has traveled across the boundary ropes. Well, that traveled like a bullet. Full toss. It's up in the air. Rana Mohsin will just watch that ball sail over his head. And you also could ask from the fielder. That's what you told me. Shot. Wow, that was some hit from Asad Shah. Once again, the ball has landed on the roof. Well, his name should be printed on that roof because that's how many times he has hit that. Full toss. He has hit that up in the air. He hasn't timed it well enough. There is a fielder who is trying to get underneath that, and Daud Suleiman takes a really good catch. In fact, that has been signaled as a no ball. Wow, that is interesting. Flicked away. Not the best of timing. Has he got the placement right? Yes, it goes for 4. Flicked away. High in the air. Somebody wants it. Should be taken. Gone. Asad Shah goes. Salam has got the breakthrough, exactly what his captain wanted, and it's a big one. Pulled away. He has got the timing right. Yes. He's found the fence. 1 bounce into the boundary. He is off the mark with 4. क्रिकेट के उनका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एक कल तक का जो मैसेज था वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उनकी एक जुमला के यार तुम लोग बहुत जबरदस्त खेलो, इसी स्पिरिट के साथ फिनिश करना, इसी स्पिरिट के साथ मैच खेलना, और तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नजर आ रही है. Outside the off stump, in the air, flat. 1 bounce, 2 bounces into the fence for 4. Beautifully played by Tahir Bindi. Went for it. Much higher, much longer. 6 more. Gone. Goes for it. Onside. This is it on. Comfortably taking. Kamran goes. Well, it's all happening. It's a wicket. Salam, the bowler, making a comeback. And cameo is over from Kamran lefty. He is walking back. He goes for it. Big shot. Is it long enough? He's got plenty of height. It's over the rope for 6. Nawaz, beauty. Oh, what a time to middle one. It's Nawaz in the building, announcing his arrival at the crease. Goes for a run. Could he run out here? Oh, he misses. Will they come back for 2? Scores a level now. Scored a level. Pressure on Larry Legends. Going back for 3. Gone this time. Nobody was in the frame, but the batsman was way out. But in the end, after a couple of runs, run out took place. They have wickets in hand. Obviously, he missed a vital opportunity. It's the red light, the confirmation, official confirmation. Short backward point. Everybody is ready to stop a single here. One important one. Look at Have that. a look at those butterflies around the bat. Looking to stop 1 run. Here we go. Easily done. Victory goes to Clifton Popular. It goes for the boundary. Tahir Bindi finishes the job. And look at that celebration. Everybody, every supporter of Clifton Popular, they're on the ground. What a match. Yeah, back foot punch. A proper cricketing stroke by Tahir Bindi. Kept his calm, kept his cool. And saw his team to the victory. What a game we have had. वेलकम बैक. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से केटीपीएल सीजन 3 कराची नाइट्स वर्सेस लैरी लेजेंड्स, जहां पर मुकाबला है और लैरी लेजेंड्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया.
Here we go और आप एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। लियारी लेजेंड्स एक इंतहाई अहम मैच खेलने के लिए तैयार। पहले बल्लेबाजी करेंगे वो कराची नाइट मुकाबले पर। जी हाँ, बड़े अहम मुकाबले में इससे पहले उन्हें शिकस्त हुई है क्लिफ हैंगर पे जब पॉपुलर आखिर में जीत गए। और इस मैच की शुरुआत ही छक्के के साथ की है हमीद उल्ला। बड़ा जबरदस्त आगाज और ये वो आगाज है जो चाहते थे जोहेर नसीर KTPL के रूहे रवा। और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है, मिडल हुई गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बिल्कुल स्वीट साउंड ऑफ द बैट। एक मरतबा फिर अली शेर आए और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है और ये फलक बोस तीसरा छक्का इस मैच का हैट्रिक। और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर आगे हैं तो फील्ड गेंद भागेंगे जरूर लेकिन वो गेंद को उठाने के लिए। तो अली शेर का एक बहुत ही महंगा ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा जहां उन्होंने 25 रन दिए। इसी दौरान शफीक आए और शफीक की पहली गेंद को पिक कर दिया है और कोई फील्डर यहां पर मौजूद नहीं है। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर क्या गेंद तक पहुंचेंगे? बिल्कुल महफूज हाथों में ये गेंद महफूज हो गई और नजीर लेफ्टी की इनिंग अपने अख्ताम को पहुंची। और अब वापस लौट रहे हैं और लियारी लेजेंड्स का 32 पे एक खिलाड़ी आउट हो गया। और काजी की पहली गेंद को डिस्पैच कर दिया है छक्के के लिए। अंपायर और बैट्समैन हो राजी तो फिर क्या करेगा काजी। एक मरतबा फिर इमरान और ये दूसरा लगातार छक्का। 3 बार तो काजी करवाते हैं। हाँ इन्होंने 2 करवा दिए। वाह, बहुत जबरदस्त बैटिंग, कोई शक नहीं इसमें। तो काजी साहब यहां पर बहुत मुश्किल में है और अब तक 4 छक्के वो इस ओवर में कंसीड कर चुके हैं। और एक और जोरदार शॉट, 6 रन से कम बात बनेगी नहीं लेकिन यहां पर फील्डर ने इसको कैच में तब्दील कर दिया है। 47 रन बनाकर 12 गेंदों पे ये आउट हुए और 60 रन पे 2 खिलाड़ी आउट। इससे बेहतर आगाज हो नहीं सकता और विकेट लेने के बावजूद कारी इमरान जो है उनकी प्यास बुझी और उन्होंने दूसरी विकेट भी ले ली। इस तरह आउट हुए बिना कोई रन बनाए दाऊद सुलेमान। 60 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, 3 ओवर्स मुकम्मल। It was short, it was wide. He absolutely nailed that on the offside, Hassan. He'll have to wait for the umpire signal. In fact, the arms are aloft. What a hit that was. Full toss. It's the treatment it deserves. It's up in the end, it's over the boundary ropes as well. He goes once again. Wow, just hear the sound of the bat. Wow, that was some hit from Hassan. Another full toss, hitting it straight back past the bowler. The result is going to be the same. No bit bowling this from Imtiaz Imti. It's the 4th maximum of the over. He goes for it. He absolutely slaps it. And all the fielders are just going to watch it sail over the fielders at 5th maximum of the over. Extraordinary batting this from Hassan. They are going to be the 4th side. And the onslaught, in fact, that has been taken. Wow, that was a good hit. But it went straight to the fielder at deep mid-wicket. Shoban Seto walking back without even troubling the scorers. It's a 94 for 4. This time he's tried to belt it. And this time it has been taken. Finally, Ubaid Lefty has managed to take one at long on. And that is how Hassan has now been dismissed. He bowls it short. He slaps it. Once again, the ball has gone towards Ubaid Lefty at long gone. The ball just bouncing in front of him. They are looking to come back with the second run. And there is a collision between Haris Ali and the runner. So they'll get 2 runs in the last ball of the over. That means Liari Legends have finished on a very strong score. They are finished on 112 for the loss of 5 wickets.
अब इस मैच में अच्छी फतह दरकार होगी अगर आपने क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए। तो क्लोज हैं लियारी लीजेंड्स इस वक्त, जो रन्स भी वो बोर्ड पे सजाने में कामयाब हुए। इस मरतबा उठा दिया है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा। और एक आसान सा कैच लेकर यहाँ पहली विकेट हासिल कर ली है उस्मान जान की। और विकेट गवा बैठे ये क्रिकेट के एक फुल टॉस गेंद पर भी विकेट चली जाती है और अच्छी गेंद पर छक्का भी लग जाता है। आई थिंक वो कराची में पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक स्टार हैं। तो कराची के असद शाह हैं, आपका हारिस अली खान है, यासिर मुश्ताक हैं। आई थिंक आई फॉलो ऑल ऑफ देम एंड दे आर ऑल माय फेवरेट। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइडलाइंस एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू कॉम बॉक्स। अब तक 14 रन बनाए हैं, एक विकेट गवा चुकी है। इस पर दबा गेंद पड़ने के बाद एक्स्ट्रा कवर की जगह है उधर बार, और ये गेंद भी जाएगी 4 रन के लिए। तो खूबसूरत अंदाज उबैदुर रहमान का। हाँ बिल्कुल, यहाँ एफर्ट करनी होगी बॉलर्स को भी। इस पर दबा हिट लगा दी है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा। और गेंद चली गई है 6 रन के लिए। इस पर दबा उठा के खेले हैं, देखना पड़ेगा। और गेंद जाएगी मिड विकेट की बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। गेंद को ग्राउंड से बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि कहां गई है। इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, जोरदार अंदाज में, खूबसूरत शॉट, छक्का। और इस मरतबा हिट लगाने में कामयाब हुए और गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब और बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। इस गेंद को हिट आउट करने में कामयाब हुए हैं। जोरदार और ऊंचा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री से दूर, छक्का। 71 फॉर 1 मौजूदा स्कोर। और इस गेंद को अप्पू ने उठाकर खेल दिया। बड़ा जबरदस्त अंदाज इनिंग्स को मुकम्मल करने का। अंपायर के हाथ फजा में बुलंद और कमर पे हाथ रख लिए भी सलाम ने, और फिर उन्होंने अप्पू को कहा वेल डन। 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स में बनाए हैं। इस तरह 35 रन की बर्तरी लियारी लेजेंड्स को पहली इनिंग्स बुनियाद पे हासिल हुई है। Welcome back and good evening once again, as we are after for yet another innings, the third innings of this last and third match of the night. Larry Legend, they're playing second game of the day, consecutive games, and Larry Legends are 35 runs ahead. Here we go. And there you go. On the legs. Hit me delivery and hit me is the answer by Hamidullah. First boundary. Well, he's toying with the bowler and it's paying for him at the moment. He's launched it and he's launched it in the hands at the moment. Well, he's been goner. He's been goner on that occasion. Long on grabs the catch. Made no mistake here, and Qari Hamidullah goes for 4, 1 for it. This is a proper connection. This is Hassan Painda, and it's his first 6 of this innings. Fine shot, picked it up from outside the off stump, beautifully struck. और मैं खुद कॉलेज का पार्ट हूँ, स्कूल का पार्ट हूँ, तो उसमें हमारे पास जो है वो जी, तो उसमें हमारे पास जो है वो हमारे स्कूल के लेवल पे इंटर रीजनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जो हमारे ग्रास रूट लेवल से लोग या बच्चे यहाँ पर आएंगे और इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेंगे। एंड ऑल्सो आप जैसे पिछले सीज़न का भी रेफरेंस दे रहे थे कि पिछले सीज़न से आप सीज़न तक मज़ीद बेहतरी आई, इम्प्रूव होगी, और टैलेंट लेकर आप क्या समझ रहे हैं ये लीग कितनी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है मुख्तलिफ ग्रास रूट लेवल के टैलेंट को रिकग्नाइज करवाने में? Goes through the offside. That one hit like a train. Eventually it will get to the fence. Well, this is Hassan's territory. This time he's given it a go, and it's a helicopter, reminding me of Mahendra Singh Dhoni with that stroke. Another 6 for Hassan, and that brings up the 50. What a way to bring up half century of the side. This time he's waited for it, and waited for it for this, because he sends him over square leg for yet another maximum. That's a bad line, nicely put away. Although, and that's gone for 4. That's gone for 4. I thought it would have been stopped somewhere in the outfield.
but it couldn't. And he has spread that away and played that way beautifully. And here comes his half century with a grand six. What a way to bring it up. He goes again, bigger and better, and it's dropped right in front of us. Oh, thank God. We are behind the glass. They are asking for the more trouble. And Nizar, lefty this time around, whacked that away beautifully for a six. And he has blasted that away onto the onside. It's gone country mile again. Six more. Absolutely. And there we go again. Hassan Panda is in a tremendous form. Nizar has got that away and cut that away terrifically. Six more into the offside. Hey, Hassan, you little beauty. What a good shot. Oh, they can't really stop him because he's really taking them to the cleaners. And goes again. In the air, going, and gone. Wow, what a batting. And he goes again and adds six more. He's not stopping tonight. What a way to end the proceedings. Hassan, you beauty. 85 of 23 balls. Wow, what an innings. A monumental effort. 176 runs will be the biggest target to achieve for Karachi Knights. It will be very tough. So Haris will face the first delivery. The final innings is about to commence here. As Ahmed Kulfi is absolutely ready. He has got the new ball in his position. Inside edge. Is he gone? Umpire is unmoved. That is quite interesting. We heard something. Maybe the bat hit the ground. Nothing happened. 177 in 35 balls now. Big shot, nice and clean, absolutely brilliant. What a connection there is. That's sailed over, straight as an arrow from Haris. Top class stuff. It was a fabulous shot. Missed it. And could be a boundary behind the stumps, missed by the keeper as well. Nobody got there. We have to wait for the mark signal. Yes, leg by given. Whatever, they will take it. 4 valuable runs for them. Big shot over mid-off, has cleared the boundary. Not quite one bounce, 2 bounces into the fence. Finally, a good decent contact from Ubaid lefty. Pulled away by Haris. He's found the gap and he's found the boundary well. So boundary to end the over. Oh, full toss, waited beautifully, spanked away down the ground. Good decent connection on this occasion from Ubaid lefty. Half a dozen to his name. That was a rank pad full toss. Swivel away. Will get a boundary. Haris is the man who's got that boundary. That's down the ground, and that's massive. That's a 6. A very good hit by Haris. He's been in good form. This time it's a proper connection. And yes, result is also in the favor of the batter. He has hit that Ubaid lefty. He goes again. That's even a better connection. And
then it eventually goes over the line. I said better connection because that was the longest part of the ground. So, well, this time I have with me Mr. Haris Ali Mani, who is team owner, Liari Legends. Thank you, sir, for joining us. Thank you. अभी बात कर रहे थे आप, कुछ चंद ही बॉल्स हैं, कितनी उम्मीद बाकी है आज के मैच जीतने के लिए, पॉजिटिव हैं आज के मैच को लेकर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इस सीज़न में सीज़न 3 में लियारी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है टीम ने. This time it's Usman Jan who's got hold of that, and it's gone all the way. First 6 of this innings for Usman Jan. 4 deliveries left. And that's even bigger. That's a good hit. Usman Jan with his second 6. Oh, what a way to finish things off. Lam gets his man. It's the timber. It's a wicket of the last ball. Harris was puzzled. Wonderful ball to finish the match. And so victory goes to Liari Legends, a comprehensive one. They won it by 81 runs. Harris was very fight with this all together. Yorker on leg stump. And celebration has begun, and their spot in the semi-final hasn't cemented. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you wherever you are across the globe. Here we go. The wait is over. The first semi-final, the big one we have got in our hands. DHA Dabangs are taking on Malir Malangs all the way from DHA Sports Club Moin Khan Academy. And the news has been that DHA Dabangs captain Yasser Mushtaq had won the toss and opted to bat first. Right then, we are all set for the first semi-final of this UBL Amin presents KTPL Season 3. Here we go. Nicely bowled and respect earlier on given by Vikas. Semi-finals first hit in front of your eyes, and it's a high one. Oh my goodness gracious me, you gotta be kidding me. Too many butterflies under the ball and none of them could catch the ball. What's going on? A genuine chance by the fielder to catch this one. He doesn't need second invitation, I tell you what. It's gone for 4, 1 bounce, but he's used that pace of Majid Goli. There you see. This time he's got hold it. And he's got plenty of it because it's 6 over square leg. First one by Khurram Shehzad. Go to the offside. How good is that? What about the timing and placement? Khurram Chakwal, you little beauty. Oh my goodness gracious me. You gotta be kidding me. It's all about the timing. Nearly hit our cameraman down there. It's gone for the maximum. You won't see a better stroke than this. It's gone over Vaish long on for yet another maximum. It was flat and it was long. My word, this guy is unstoppable tonight. Well, this time it's Waqas Sher who's in here, and 1 bounce into the boundary for extra cover. There you go. He's good there. He's good everywhere. 1 bounce into the boundary. Didn't get entirely out of the screws, but still manages to get up 4. Because his partner is unstoppable tonight. This is Khurram Chakwal's night, I tell you what. On 47 with that 6.
Hammers it down the ground all across the turf. It's in the gap between long on and mid wicket. DK himself standing there long on. It's just going to be a single. Talking about Mali Mullins, well, after the first 5 games, they were the leading of points table. As we see, 50 comes up for Khurram Chakwal. 50 of just 15 deliveries, and he can raise the bat to the dugout. Starts off with a short delivery. That has been nailed over square leg. That's going to go all the way for 6. That has been the story of the innings so far. Goodness me, how clean is this? It's a long hit from Khurram Shahzad. Slower delivery. Wow, that is a very good hit. That is still in the air, and finally it has landed, but way beyond the boundary ropes. It's length, and when you bowl length to a guy of that caliber, that ball is going to disappear. Bad delivery. Juicy length offered to Khurram Shahzad and beautifully put away. It's short, it's wide. This time it's Chota Vicky who has deposited that ball over the side screen. That's a magnificent hit once again. Fuller in length once again. Khurram Chakwal has just smashed that ball over long off. Wow, that is some hit. Juicy ball, over pitch outside the off stump. He has absolutely launched it, and launched it in a magnificent fashion. Caught it away on the leg side. There is a field out there in the deep. They will definitely look to come back for a couple of the last ball. And the wicket keeper couldn't gather the ball. Plenty of damage has been done, and Mali Mullins did not pick up any wicket. 118 for none. It's a marathon performance. It's a huge performance from DH Dabang in the semi-final. और इस बार कादिर कश्मीरी का गेंद ब्लॉक होल्ड में मिला मिमरान, जिनकी शानदार फॉर्म जारी है, शानदार छक्का। बॉल तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मिमरान का उतना ही शानदार स्ट्रोक गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए सामने की जानिब। ये ले जी, खर तेज गेंद, क्या जवाब दिया है यहाँ मिमरान खान खटक ने। इस बार गेंद मिल गई रडार में, जहां चाह रहे थे मिमरान। मच नीडेड बाउंड्री फॉर मली मुल्लिंस। टेप बॉल में इसको कहते हैं, बिल्कुल मुंह में दे दिया। और बोल्ड कर दिया, जबरदस्त इन स्विंग डिलीवरी। अगर ठीक है पहली गेंद पे आप बच गए, लेकिन दूसरी गेंद पे नहीं बचेंगे। दाऊद खान पठान। डीके गॉन फॉर 7, 28 पे 1। और फौरी बैकफुट पर गए और ऊंचा शॉट खेला, पर शानदार कैच लॉन्ग ऑन पर। एक वक्त पे हवा में उछले, पर बॉल को हाथ से जाने नहीं दिया। 2 गेंदों पर 2 विकेटें दिला दी। यहाँ पर पेस बहुत अच्छा था और कैच भी उतना ही अच्छा था। करें आप कादिर कश्मीरी की तारीफ बनती है, लेकिन खुर्रम चकवाल की भी क्या बात है। कलीम 0 पर आउट। मतलब यॉक करने की कोशिश की है, स्ट्रेट शॉट, स्ट्रेट एज एन एरो, और बॉलर के सर के ऊपर से खेला है। पावर मौजूद थी तो 4 रन। बोल्ड करना। इस मरतबा हसनैन की बड़ी अच्छी गेंद, और मुख्तार के पास उसका कोई जवाब नहीं था और क्लीन बोल्ड हो गए। और इस तरह से एक और विकेट गिर गई है। मुख्तार 2 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। हसनैन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया है। 45 रन 3 विकेटों नुकसान पर। और इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में गेंद लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। 6 रन। जी हाँ, जितनी तेज होगी उतनी ही तेज दूर तक जाएगी। शॉट पे डिलीवरी थी उनके बाहर। शॉर्ट राइजिंग बॉल, इस मरतबा पुल या हुक करने की अटेम्प्ट थी उनकी, मगर गेंद को एज कर बैठे हैं विकेट कीपर यासिर मुश्ताक के हाथों में और वापस आ रहे हैं आउट होकर। जी हाँ, ये स्लो बाउंसर थी और थी तो खासी ऊंची, लेकिन इतनी स्लो थी कि टाइमिंग सही नहीं हो सकी। 30 रन बनाकर मिमरान आउट हुए। 55 पे 4। नए बैट्समैन उबैद सामना कर रहे हैं, और उबैद ने पहली गेंद पर जोरदार अंदाज से लॉन्ग ऑन पोजीशन पर खेला है। फील्डर मौजूद थे बाउंड्री पर, उछलकर उन्होंने अपनी जंप को टाइम करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर।
अगली गेंद एक मतलब फिर ऊंचा खेले है, क्या 600 का स्ट्राइक रेट बरकरार रहेगा, देखना होगा। गेंद हवा में फील्डिंग के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। एक और छक्का, स्ट्राइक रेट 600 का बरकरार, 2 गेंदों पर 12 रन। और इस गेंद को ऑन साइड में हिट करने में तो कामयाब हुए, मगर काउ कॉर्नर से फील्डर ज़रा वाइड मिड ऑन की जानिब आए। दूसरे रन के लिए बैट्समैन पहुंचने में क्रीज में अपनी कामयाब हो गए। अंपायर ने बॉलर से गेंद ली और इस तरह 6 ओवर्स के बाद 74 रन 4 विकेट पे बनाने में कामयाब हुई मलीर मलंग्स। 44 रन की लीड उन्होंने कंसीड की है डीएचए दबंग्स को, यानी डीएचए दबंग्स जब अपनी सेकेंड इनिंग्स शुरू करेंगे तो 44 रन के फ़ायदे के साथ या सबकत के साथ आएंगे, जो कि यकीन काफ़ी बड़ी लीड है। Welcome back once again from DHS Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi, where UPL KTP Season 3 is going towards the end, and the first semi-final is being played between DHS Dabang and Mali Malangs. And overall, DHS Dabang dominated so far, and they got a lead of 44 runs. It's a healthy lead in the first semi-final. So it's all set. First ball of the new innings. Outside the off stump, they tried to chase it initially. Big shot, land ball, put away in style. What a wonderful blow. Goodness me, how good is that from Chodawicki? Out, could be out. Oh, he's dropped it. It was a tough one from toe end of the bat. And the fielder dived forward. It was never easy. I think he's hurt himself. And his comments in innings in style. It goes for 6, I guess. It's a flat one. Beautifully timed. That was some shot. Wrist work was there. It goes offside. Chodawicki. One bounce into the net for 4. What a start it is. Pulled away. Not good up the middle. Good boundary. 4 more runs are flowing here for DH Dabang. Big full toss. Has he got enough length? Should be taking it long off. No mistake. So finally wicket falls. Full toss hit high on the bat. No timing at all. And Chodawicki has to walk back. Waqas Sher went for 25 on 11 deliveries. 50 for 1 DH Dabangs. Oh goodness me. 2 men are converging. Chance or 6. It's over the rope. What a way to begin the innings. Arsalan, the man in form as I mentioned, picked it from outside the off stump to pick up half a dozen. He goes again over long off. 6 more. Comfortably over the holdings. Terrific batting from Arsalan. Yes, he got that away and got that away in style. And it has gone for 6. Magnificent batting. Again, it is in the air. And I think it has come down right in front of our commentary box. Wow, Arsalan is absolutely having a go at everything. This one is hit away and hit away beautifully for a beautiful 6. Oh, Arsalan has given this a go. Fielder is paddling back a little bit. Oh, has he grabbed it? Yes, he has. He paddled back a bit and then grabbed that one nicely, so the wicket goes down here. Oh, wow. This is going into the hands of the fielder. Oh, it is, yes. Umar Shahzad goes for 1. 105 for 3. And batsman got excited there as he got that away and got that away all the way for a 6. Out of the middle of the bat, 6 more. This is in the air. Has he timed enough?
Oh, yes, he has again. What a great timing on that occasion by the batsman. And he goes again. And goes well as well. Another 6. So 6 is coming like a singles here. Last ball of this innings is coming up. But it won't be last ball, because it's going to be a wide, I reckon. Yes, it is wide called, although batsman is being run out as well, and the newcomer will go, but ball will be bowled again. Yeah, 2 runs of the wides will be added to the total, but Salu has to take a long walk back to the dugout. And Khurram gets that away into the leg side. There's a man back at the long leg boundary who comes up a little bit. They are turning back for the second. Oh, and now they're turning back for the third. And this is going to be out. Not umpire has referred it to the third umpire. Let's see what will be the verdict of the third umpire. He should begin as out, but a couple of runs would be enough for them. So they have finished their second innings at 129 in their allotted 6 overs. It means Malir Malangs will be requiring 174 runs for the victory in 6 overs. Rise Abdul Qadir Abbasi, well, what time he's having. It's just his 3rd game, and so far he has created so much impact. Big shot to the onside. Nobody's out there, but it doesn't matter. He has cleared the rope and also the boundary. Beautifully played. First 6 of the innings. Got him. Clean him up. Beautiful with the beauty here. Abdul Qadir was right on the block hole. Yorker. And Mimran has to walk back. And he got 6-1. 6 to his name. He chipped it beautifully over the ring. 1 bounce into the fence. Oh, lovely shot by Meesum. What a way to get off the mark. That was some hit. Outside the off stump. He goes for it over offside. Nice and safe. 1 bounce into the boundary. और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी ये पॉपुलर हो जाएगा. एम्बियंस बहुत अच्छा है अभी स्टेडियम में, और उसके बाद फिर शायद नेशनल स्टेडियम चला जाएगा. मैं समझता हूँ कराची को क्या पूरे पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. Flicked away to the onside. Has he got the timing right? 1 bounce into the fence for 4. He has 4 given. Nicely timed. Stylish and well put away. Very impressive, Abdul Qadir. Flick away. Ritual comes into play. Got this time. No mistake whatsoever. And Abdul Qadir struck in the last ball of his spell. DK has to walk back. Good catch in the outfield. So 2 wickets have gone down. It's 35 for 2. DK goes back for scoring 19. And time to go for us downstairs once again with Hina Didar. कोई फना कुछ है, कोई जुनैद जानू है. Yes, panda है. तो वो बड़ी एक यूनिक चीज़ है, डिफरेंट है, और इट्स वेरी यूनिक. Yes, Tarishi, thank you so much, sir, for joining us on the sidelines. And now let's go back to Combox. ये 2 बिल्कुल डिफरेंट किस्म की शॉट गिनती क्या है पोजीशन की जानिब, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. एक और जोरदार छक्का इस दौरान हसन लगा है. 62 रन हो गए 2 विकेटों के नुकसान पर. ये फिर शॉट है टेप बॉल का, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, और हमेशा बहुत ही कम बैट्समैनों को दिखने में मिलेगा कि एक्स्ट्रा कवर खेलेंगे. स्पेशली टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रीजन, ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि इस मौसम सरमा में कराची जैसे माहौल में मौसम में ये एक्टिविटी प्लान की गई है. और मैं इसका क्रेडिट एक्सपो को भी देता हूँ, और पूरी जो कराची की जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है और एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं उनको देता हूँ. और इस मरतबा भी ऊंचा खेले हैं, इस मरतबा भी आउट हो सकते हैं अगर फील्डर कैच करे तो. कोई गलती नहीं की. अच्छा कैच लिया ये, और ये फॉर्मेट देखें, जैसे हम कह रहे हैं कि टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, 3 स्लिपें लगी हुई थी यहाँ पर.
Catch out, easy catch. Ms. Fahim Siddiqui, who is senior journalist and president of KUJ. Sir, thank you so much. आपने हमें ज्वाइन किया. Well, usually journalist खबरों के पीछे भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन I'm sure क्रिकेट के शौक में मैदान में दौड़ लगती होगी आपकी भी. बिल्कुल ऐसा ही है. और यहाँ पर जो मैं आया हूँ तो क्रिकेट के शौक में ही आया हूँ. और ये जो कराची में आपने मेला सजाया हुआ है, जबरदस्त मेला है. क्या रंगारंग मेला है. और मुझे बता रहे थे जो है कि 82 ममालिक में देखा जा रहा है. ग्रेट. 84 प्लस. यस. और उसके साथ अगर हम ये कहें कि क्रिकेट, हम तो क्रिकेट नेशन को वो है ना, क्रिकेट सर, लवर है. ओके, हम आपको दोबारा वेट करेंगे जरूर. यहाँ मैच खत्म हो गया है. We'll go back to com box. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. 102 रन से कामयाबी हासिल कर ली है. चितबंग ने मलिक मलंग को शिकस्त हुई है. इस पहले सेमीफाइनल में 72 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन 6 ओवर्स मुकम्मल हुए सेकंड इनिंग्स के और 101 रन से चितबंग ने ये पहला सेमीफाइनल सीजन 3 का जीत लिया है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. It's 11 p.m. Welcome back from DHA Sports Club Moin Khan Academy in the second semi-final of UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. Clifton Populars are up against Liari Legends here at DHA Sports Club Moin Khan Academy. And this also promises to be an extravagant contest between these two very strong sides. If we talk about the toss, it was Clifton Popular, and their captain Asad Shah has no hesitation in deciding to bat first once again. And he'll be raring to go in the second semi-final. We are all set for the first ball. Rana Mohsin up against the opposition skipper Asad Shah. He's going to come around the wicket first up. Starts off with a full toss. It can well and be a no ball. Yes, it has been a signal as a waist high no ball. Might have slipped out of his hands. Yeah, it looked like if it slipped out of his hands. Outside the off stump, playing it over extra cover. It's up in the air. One bounce and into the fence. Making full use of that free hit, Asad Shah. He goes straight. Wow, that is some hit from Asad Shah. Take that one, Osset. Absolutely gorgeous hit that one was. He banished that one from that presence. It's short. It's pulled. My goodness, how far that ball has went. For a moment, I thought he was a little late onto that stroke, but still got so much bat onto it. Oh, Zishan, take a look at the reflexes he had. Low full toss. Picked away on the leg side. Asad Shah's love affair of hitting maximum in this tournament continues. And look at the spectators. He goes again. This time it's flatter and longer. Brilliant way to end the over. This from the captain. This time it's Fahad Mia Chunnu who has decided to go big. There's a fielder trying to get underneath that, and he has taken it. Wow, what an anti-climax this. Fahad Mia Chunnu was kept silent at the other end, and that has resulted in his wicket going down. Alhamdulillah, Popular is there now. और मैं I wish them good luck to Zuhair Saab and his team, Badar Expo and everybody. ये देखिए 6 लग गया अल्हम्दुलिल्लाह. चले जी, इसी के साथ हम आपको थैंक्स कहेंगे और कॉम बॉक्स की जाने वापस जाएंगे. Goes again. It's straighter. And the fielder at long on will be just a mere spectator. Oh, that was a gorgeous hit again. Wow. Right out of the meat of the bat. It goes offside.
It's high and handsome. Where will it land? I think it's landed beyond the rope. But a fine strike over cover. It played with real authority. Lifted. It's high in the air. Who wants it? Two men are converging. Landed safely beyond two. Oh dear, they made a mess of it. They could have saved. They could have saved boundary again to Clifton Popular. And Asad Shah has brought up his half century. What a wonderful show. Lifted. Has it got the timing right? It's high in the air. That's gone way over, I think. Oh yes, it's a big one. Asad Shah continues to amaze us. TV artist Matira is present as well. She is enjoying this contest. Big shot to the onside. Has it got the distance? Yes, a big hit. It's a crowd catch. Tahir Pindi picks up a maximum here. What a start of the new over. In the air, could be out. Missed time shot. Oh, dropped. He has dropped a sitter. That's me. Should have been taken at this level. He goes for it. Has it got the good connection? Yes, it's a big one. Wonderful finish from RMD. In fact, but overall, it's a good over from Rana Mohsin. 10 runs off the over. That's a good total. 1-9 the first innings. 6 overtime done and dusted. First ball, it has gone high up in the air. The fielder at long on is trying to get underneath that. And the ball just goes out of his reach, but they still get a couple of the very first ball. Who would know better than you? It's short. He has tongued that Qari Hamidullah and has sent the ball into the crowd. Once again, shuffling across the crease, hitting it flat. Has that gone all the way for 6? The umpires will definitely take a look. Yes, the answer aloft. What a hit this is from Qari Hamidullah. And I'm so excited क्योंकि मुझे लगता है that ख़वातीनें बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं and sports and all of that. So taking the stand बहुत ही अच्छा होगा for the women. छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे tournaments ही ना प्यारे-प्यारे खूबसूरत सितारे पैदा करेंगे. You rightly said, and we're super excited about the game as well. We have just witnessed a wicket going down. Farhad Abdali. Well, finally the wicketkeeper has managed to take a catch, and Nizar lefty dismissed. Liari Legends have lost their first. It's 27 for 1. बहुत मुश्किल होता है और हम देखने वाले को तो और मज़ीद मुश्किल होता है. ओए होए 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 क्या हुआ? It's a 6. In cricketing terms, it's known as a 6. Slower one, picked up. It's hard, it's flat, and it's long. Hamidullah is a hope for Liari Legends at the moment. It's full toss, picked away on the leg side. My goodness, that's a flat hit. And once again, that has sailed over the boundary ropes. If Hamidullah keeps on going like that, Liari Legends are definitely going to get some lead. फहद की इस गेंद को बैट्समैन ने ऊंचा खेल दिया. कारी हमीदुल्लाह का जोरदार छक्का. खूबसूरत क्रिकेट और इतने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और अपना नाम खुद बुलंद कर रहे हैं. एक और जोरदार शॉट. कारी हमीदुल्लाह के इरादे और अज़ाइम बड़े खतरनाक हैं. एक और छक्का. इस मरतबा ऑफ साइड में ऊंचा खेले. फील्डर मौजूद, कैच लेने में कामयाब. बड़ी अहम कामयाबी. कारी हमीदुल्लाह खतरनाक हो गए थे. 47 रन बनाकर लौट रहे हैं और इस तरह 58 for 2, 47 बनाकर कारी हमीदुल्लाह आउट. इस गेंद को ऑन साइड में उठा दिया. फ्रंट फुट पे आते हुए और गेंद तमाशाइयों के बिल्कुल सामने और तमाशाइयों ने डांस करना शुरू कर दिया. एक और छक्का. कम ऑन. और ये वो चीज है जो बार बार बॉलर करते हैं अगर बचे हैं. He got away with that one. अब रन आउट चांस भी हो सकता है.
रन आउट चांस स्टिल है क्योंकि अंपायर ने तीसरे अंपायर या टेलीविजन अंपायर की जानिब रेफर किया है कि वो ये देखकर बताएं कि बैट्समैन पहुंचे हैं कि नहीं. यस, रेड लाइट कम्स इन. तो एक और विकेट जहां पे गिरी है 67 के स्कोर पर. हवा में, लेकिन वॉज दैट ऑफ द बॉडी, लेकिन इधर रन आउट का चांस है. यस, अंपायर ने इस मरतबा जहमत नहीं उठाई तीसरे अंपायर को भी रेफर करने की, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन रन आउट हो गए हैं और अशरफ हैं रन आउट होने वाले बैट्समैन. फ्रंट फुट पे आके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बेल्ट किया है गेंद को. बड़ा खूबसूरत का पसंद का. और इस छक्के के साथ इनिंग्स का इख्तिताम हुआ. लियारी लेजेंड्स ने 78 रन स्कोर किए 4 विकेटें गंवाकर, और अभी भी 31 रन पीछे हैं पहली इनिंग्स के टोटल से, जो कि क्लिफ्टन पॉपुलर ने सेट किया था. Welcome back once again from DHA Sports Club Moin Khan Academy. Second final is being played between Liari Legends and Clifton Popular. And now second innings is about to begin. They are 31 ahead, none for none. Ahmed Kulfi is ready. Fahad Miachanu is ready with the bat. Ahmed Kulfi is with the ball. He streams in. And straight away bowled a full toss. And I reckon straight away bowled a no ball or not. Let's see. Yes, that was a no ball. This is not the start they would have liked. And he hit that one over the top. It bounced away to the point boundary for 4. Wide off the off stump, not right line. It was full. Length was okay, but line was a problem. I do, we can say, and like I'm not a big fan of cricket, but I do support since my father loved it. So yeah, this is why I'm here, and I'm also supporting Clifton Popular today. Fahad Miachanu hit it in the air. Oh, he put it down. No, oh dear, oh dear. What have you done, Mr. Covers? Oh my God. And now Fahad is telling, if you drop me, I would whack you like that. Absolutely gave it a tonk. What a hit. Fahad Miachanu whacked that away over backward square leg, in fact over conventional square leg, and it's gone for 6. Terrific. Oh, he got that away, and got that away over mid-wicket for another 6. What a lovely shot, brilliant shot. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं PSL खेल रहा हूँ और मैं PSL की कोई टीम बाय की है. मैं I was astonished to see कि यार कमाल है, मतलब कमाल का क्राउड है, कमाल के जो है टीम है, कमाल का ऑर्गेनाइजर है. It's third season और season wise ये लीग improve होती गई है. So this is big achievement for KTPL. It is very wonderful just to see, just to be here और enjoy करना is just phenomenal, honestly. मेरे लिए तो बहुत मजा. Ah, yes! It's a maximum. I like them there. Oh, yes! Oh, my word. This is carnage. Absolute carnage here. Unbelievable hitting by Asad Shah. It really is. I mean, I am running out of words to describe this master knock. KTPL की नज़ीर भाई और जितने भी मिलके काम कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर्मेट दिया है पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, और क्रिकेट को एंजॉय करें, खेलें. एक और छक्का लगा दिया फाद ने. बिल्कुल, एक और छक्का लगाया और यहाँ हम आपको थैंक यू कहेंगे और we'll go back to the com box. He has killed that. He has definitely killed that a long way. Overload on. What a way to bring up the 100 for the team. He hardly seemed to have hit that. I tell you what, it looks as if he's got a knife in his hands. He's really slaughtering them. Big time. It's a sword in his hands, Fahad Miachanu. Bowl him! Unbelievably got his man through the legs
and it wasn't on the cards, I can tell you. It was a slow delivery. Well done, Sohail, you little beauty. You miss, I hit, says Sohail lefty. Fahad Alam walks back after scoring a magnificent knock of 47. Whipped away. Very good looking stroke in the gap. He's got himself a boundary. Umar. Well, that's what he can do, Umar Bajwa. Goes through the offside this time. He goes over the top and gets the connection all right. It's a big six to finish things off. What a way to end proceedings with the battle, Clifton Capulars. And their lead is now of 162, which means that 163 will be the target for Lear Legends to chase down. इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए ऑन साइड में अच्छा शॉट फील्डर दौड़े जरूर लेकिन गेंद को रोकने में वो नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन्स इस गेंद को ऊंचा खेले खतरे में है फील्डर गेंद के नीचे विकेट लेने में बहुत कामयाब और उन्होंने सेंड ऑफ भी दिया बैट्समैन को खुशी का इजहार इस तरह हसन की बड़ी कामयाबी पॉपुलर को मिल गई 3 बॉलों पर बड़ी विकेट 1 पे 4 कारी हमीदुल्लाह ने गेंद को खूबसूरती के साथ हिट किया ऐसी बहुत सी हिट्स दरकार रहेंगी अगर जीतना है लेकिन ये बार पहली बड़ी हिट है कारी की छक्का अच्छा शॉट इस मरतबा भी गेंद को खेलने में कामयाब हुए कारी हमीदुल्लाह का खूबसूरत अंदाज ऑन साइड पे एक और छक्का पीछे गिरी हुई गेंद और उसका फायदा उठाया कारी हमीदुल्लाह ने शॉर्ट गेंद जिसे स्क्वायर लेग यानी खेले रन आउट शॉट पक्के रन आउट हो जाएंगे कारी हमीदुल्लाह इंतजार निकले नहीं और कारी दौड़ते चले आए और इसे भी फर्स्ट एंड साफ जाहिर है जो इस वक्त लियारी लेजेंड्स की है और इस तरह एक और विकेट जो है वो लियारी लेजेंड्स की गिर गई बहुत ही उम्दा ओवर इमरान का इस बात में कोई शुबा नहीं अब तक और जोहेर नसीर का सूरज शॉट बैकफुट पे रॉकेट होते हुए गेंद को बैकफुट स्क्वायर लेग से बाहर छक्का ओह गुड हिट ये देखें इस गेंद को ऊंचा खेले हैं बैकफुट स्क्वायर लेग की जानिब और गेंद रोल करती हुई लॉन्ग बाउंड्री से बाहर चौका इस गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड में और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर एक और चौका Goes big, does Zohair Nasir. Has he connected well enough? Yes, he has. It's his second six. He's enjoying his batting. So you see, everybody seems to be enjoying this. Jubil Amin presents KTPL Season 3. Hitting it away on the offside. There's no protection out there. It's going to get a boundary in his lefty. Down the leg side, it's up in the air. And it has gone all the way for 6 again. He's just enjoying his time out now in his lefty. Slower one, picked up on the leg side by Nizar lefty. He's got the height and the distance. Once again, the ball landing into the leg side, into the crowd. Oh, he goes once again. My goodness, how well has he timed that? Wow. He's putting up a show here tonight, Zohair Nasir. Tell you what, he's got something in his armory. What do you mean? It's Zohair Nasir with his bat. You're not a maximum. Come on, you can hit them. Oh, he has been knocked over. It was a full toss. He was coming down the track, yorked himself, and the ball landed in the base of the middle stump. But a brilliant cameo comes to an end from Zohair Nasir. 28 of just 11, dealt in just maximums. Outside edge, that should have been a regulation chance. It's all happening for Clifton Popular. Yeah, this is a field we can witness in test match cricket. Ahmed Kulfi is clearly disappointed, going out for a golden duck. It's 88 for 4.
Down he comes. Up she goes. Out of the ground. 6 more. Ashraf Patang saying it to the opposition. Centre fielders back in their position. Pitched up. Makes it into a full toss. Hits it. Over, long gone. Back magnums for Ashraf Patang, but that's not going to be enough. They scored 100 for the loss of 4 wickets, but still they have suffered a huge lead of by 63 runs in the second semi-final. Won that second semi-final and advanced to the final. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब नहीं है, मैं डोमेस्टिक सेल ऑफिसर अहमद फूड से। तो हमने यहाँ पे बचत एक्सपो लगाया, बचत एक्सपो में अपना स्टॉल लगाया हुआ है अहमद फूड का। तो हमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो बचत है वो है, जैसे आप सब रस लेंगे 800 ml, वो मार्केट में 430 है और हम आपको दे रहे हैं 250 रुपये का। और ऐसी केचप है जो मार्केट में 40 का, हम आपको दे रहे हैं 320 रुपये का। तो काफ़ी हम बचत दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप आइए लाजमी, यहाँ पे हमारा अचार भी है 600 रुपये का मार्केट में दे रहे हैं और यहाँ पे 400 रुपये का हम यहाँ पे आपको स्टॉल पे देंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो बहुत ही आप यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में ले सकते हैं। तो जैसे कि अहमद के सब आइटम है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, इसको प्रमोट करना चाहिए और इसराइली जितनी प्रोडक्ट है उसको बैन करना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा एकदम यहाँ पे कराची के लिए उठाया गया है। सफ़ेद पोश लोग, मिडिल क्लास और जो भी आएगा उसको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अस्सलाम भाइयों, क्या है? अच्छा भाइयों, हम हैं अलनूर राइस मिल, पंजाब, रहीम यार खान से। ठीक है, हमारे कराची में 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ऑलरेडी हमारा चावल पूरे कराची में। लेकिन इस बार हम बचत एक्सपो में, जो कि बदर एक्सपो वालों की तरफ से था, जिनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम कराची की आवाम की खिदमत कर सकें। तो ये अपनी एक अपना जो प्रिय प्रोडक्ट है, जो कि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में अलनूर राइस मिल, अलनूर इंटरनेशनल और अलनूर ग्रुप आता है। तो मैं आपको एक अपना प्रोडक्ट दिखाने लगा हूँ, जो कि हमारा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये डबल स्टीम, डबल पॉलिश 1121 प्योर कायनात 1121, जो कि ये अगर आप देखेंगे, इसको जूम करें, ये चावल आप 10 पर 520 रुपये किलो। ठीक है, बाकी अगर किसी मार्केट में 480, 450। और ये हम चावल सिर्फ कराची वालों के लिए जो इस बार आए हैं 330 रुपये किलो, चाहे 1 किलो लें चाहे 50 टन लें। ठीक है, हम सबको वेलकम करेंगे। हमारे पास पीछे लॉट पड़ी हुई है, मिल डिस्ट्रीब्यूटर्स को वेलकम करते हैं, रिटेलर को वेलकम करते हैं, आम पब्लिक को वेलकम करते हैं। आए, ये नदीर मौका है, पूरे साल फिर से आपको ये चावल 330 रुपये किलो में कोई भी नहीं ला के देगा। ये हमारा आपसे वादा है। अगर आपको चावल पसंद ना आए, आप पीछे दिए गए नंबर पे बताएं कि आपको चावल पसंद नहीं आया। कराची में आपको चावल चेंज भी कर देंगे। कराची में ऑलरेडी 5 से 10 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं राइस मिल्स के। तो आप बिस्मिल्लाह करें, एक दफ़ा आएँ। और आखिर में एक और दफ़ा शुक्रिया अदा करूँगा बदर एक्सपो वालों का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening everyone. It's KTPL Season 3 Grand Finale. Clifton Popular taking on DHA Dabangs, where DHA Sports Club in Academy. DHA Dabangs won the toss and they are batting first. Here we go. Players are ready. Everything is in order. Everything is in readiness for the first ball to be bowled from the far end or from the ocean end. Irfan Nona to start the proceedings. Soda Wiki is ready. One steam. Here's the first ball of the final. Outside the off stump. And he started off with a wide. Runs on the board. Soda Wiki has got that away. And here comes the first big hit of the final. That's down. Shoda Wiki has got it in the air and got it towards deep mid boundary for 4. Good hit. He got that away over the top of covers and raced away like a crash bullet to the boundary for 4. Oh, he's in some form. Khurram Chakwal has played that away. This is Khurram Chakwal. It's on for the journey. He has hit it again and hit well. Oh mine, Khurram Chakwal already smashing them out. A magnificent shot. 2 sixes in a row. Khurram Chakwal is level best as he bashed that away over long off. And look at crowd. Khurram Chakwal, you little beauty. Grand finale. 46 for none in 2 overs. And Choda Wiki has picked it away and picked it away over cow corner. Another 6. And again, better and bigger. Choda Wiki is making the mincemeat of the bowling. Wow, shot yaar. Wiki has it and grabbed it. What a good catch. Oh, what a great catch it has been. Choda Wiki drove that one very hard, but Fidder picked that one from the air. Magnificent effort. Is this the first? Just in the tail. Is this the first turn in the match? Dear Salan. He got that one away over the top of covers and it bounces away to the boundary before like a trailblazer. Oh, good shot. Khurram Chakwal put that away and put that away in style. Another 6. Went for it. Has he got enough bat on that? He has. Wonderful. First 6 of the over. Drop the ball short. Has he got the elevation? It's flat. All the time. Wagner Chinu picked up a catch. He was nice and relaxed. Right at the edge of the boundary. A huge one. Arslan Jamshed went for 11 of 5 deliveries. 79 for 2. DHA Dabangs. Chance. Leading edge. Who wants it? Should be a still catch. Got him. Over goes without scoring. What an over it has been. Imran picked up a wicket. 2 in the over. And he is standing over from Imran, and the short stay for Umar Shahzad goes without troubling the scorers. 3 for 79 on the board. Flick of the wrist from Khurram Chakwal. And it's gone all the way. He's unstoppable. What a form he's in. Once again, a terrific shot of the wrist. Big full toss. He goes offside. Smashed away for a flat 6. Wonderful shot again from Chakwal. Bad delivery put away. Smashed away to the onside. What a strike that is. He has absolutely nailed it into the crowd for half a dozen. From the ball short, smashed away. Khurram Chakwal has made him pay. What a blow that is. Short outside the off stump. Bad delivery on this occasion. And what a good strike that is. Up goes the arms. Waited, smashed away, down the ground. 6 more. Yes, it's a big one.
What a bad performance. He's already brought up his half century in the previous ball. Big shot on the onside. That is gigantic. That is huge. That is tremendous batting. 9 of just 17 balls. 6 overs have been done and dusted in the first innings, and look at score. What a big score they've posted. 3 for 128. Well, DHA, the Bans dugout must be really happy that the boys have shown 128 in 6 overs. फर्स्ट बॉल आने को है और मिड विकेट पे खेले फहद मियां चन्नू, फील्डर मौजूद, कोई रन। खासा है कादिर कश्मीरी का कि एक तो जबरदस्त पेस से बॉल करते हैं और साथ साथ इनको पिच पे मूवमेंट भी मिलता है। और इस गेंद को खेल दिया असद शाह ने। गेंद हवाई रास्ते से होती हुई बाउंड्री से बाहर। शॉट का सिलसिला लगता है कि आज रुकने वाला नहीं। बड़ा जोरदार शॉट इस मर्तबा फहद मियां चन्नू की जानिब से। फहद का पहला छक्का। फहद मियां चन्नू ने ड्राइव किया और गेंद गोली की तरह डीप कवर्स बाउंड्री से बाहर। 4 रन। यही करना पड़ेगा, बॉल को अपने मेरिट पर खेलना होगा जब आप जहीर कालिया का सामना कर रहे हो तो। इस मर्तबा मिड ऑफ को क्लियर किया फहद मियां चन्नू का खूबसूरत शॉट। हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब छक्का। और इस मर्तबा जोरदार शॉट, छक्का। शानदार अंदाज में बैट स्विंग दिखाई अपनी यहाँ पर असद शाह ने। इस किस्म के शॉट्स खेल के ये टॉप स्कोरर बने हैं अपनी टीम के लिए और इस टूर्नामेंट के। और फहद मियां चन्नू ने कहा कि भैया बहुत हो चुका, अब मेरी बारी है। जहीर कालिया को डिस्पैच किया, लॉन्ग वे बैक, छक्का। इस दौरान अगली गेंद फहद मियां चन्नू goes down and goes 20 mile। जोरदार छक्का फहद मियां चन्नू का। जी हाँ, उमर ने स्टार्ट लिया, शॉट ऑफ लेंथ गेंद और बड़ा ही दिलकश शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से। बहुत ही खूबसूरत क्राउड के अंदर जाके गेंद गिरी, बहुत ही खूबसूरत शॉट। तो पहले बॉल पे 6 रन ले लिए इन्होंने। उमर क्या करते हैं, एक दफ़ा फिर बहुत ही खूबसूरत शॉट और ये भी मेरे ख्याल से सोहेल लेकर मिड विकेट के ऊपर से। इस दफ़ा और भी बड़ा छक्का, बल्कि मोइन खान एकेडमी जो कि इंटरनेशनल सतह का ग्राउंड है, ग्राउंड के बाहर बॉल फेंक दी गई। शॉर्ट गेंद थी, सोचा इसको कि खेले, लेकिन लगता है कि एज कर बैठे हैं। जहां विकेट कीपर ने क्रैक किया और यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए उमरी पेसर। उनकी विकेट नंबर 22। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए उमर। 5वां जोरदार खूबसूरत छक्का लेकर उन्होंने इस ओवर का इख्तिताम किया है और इस ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 85 पे 1। फहद मियां चन्नू 45 पे। इस गेंद को फहद ने स्विंग किया, फील्डर मौजूद, डाइव फॉरवर्ड किया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर और अच्छा कैच लेने में कामयाब हुए और 87 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 2 गिर गई है और फहद मियां चन्नू 45 रन बनाकर आउट हुए। बहुत बड़ी तादाद को आप मौका दे सकते हैं कि वो आएँ और इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें। इस दौरान जोरदार शॉट ताहिरी पिंडी का और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। 100 रन पूरे हो गए आरिफ साहब। आखिरी बॉल लेकर एक बार फिर हसनैन और इस मरतबा भी अच्छी गेंद, लेकिन फाइन लेग के फील्डर से फंबल हुआ। उन्होंने गेंद को रिकवर किया। दूसरे रन की कोशिश है, रन आउट चांस, लगता है फिर अवेल नहीं कर पाए और इस मरतबा 2 रन के साथ लगता है कि इक्तिफा हो गया है। जी हाँ, इन 2 रन के साथ स्कोर हो गया 110। इस तरह 18 रन की बर्तरी जो है DHA दबक्स को पहली इनिंग्स की बुनियाद पे हासिल हुई है। 110 रन बनाने में कामयाब हुई यहाँ पर टीम
जो है वो क्लिफ्टन पॉपुलर की। Welcome back once again from the DHA Sports Club Moin Khan Academy, Karachi, where the all-important final is going on. The first innings have been done and dusted, and the defending champions, DHA Debangs, have excelled by retrieving a lead of 18 runs in the first innings. We are all set for the start of this third innings. Irfan Nana to Chota Wiki. Let's play! Let's play, boys! Nicely bowled, full toss, just the angle going away. These sort of fumbles are not required. Asad Shah, the captain, was there on that occasion. But they're off the mark, Waqas Sher and company, nevertheless. That's hit away hard and flat. One bounce over extra. First boundary of the second innings by Waqas Sher, and it's a good one. And bowling full toss, hit hard and, oh my word, not an exactly wicket-taking delivery, but he will take it all day and all night. It's Irfan Nana, it's drama already. Get off the mark, Clifton Populars. Waqas Sher, early in the piece, goes for 4. 4 for 1. Play in the vacant region, and the ball is going towards the boundary because that is vacant region. That's why eventually it gets to the fence for Irslan's boundary. Oh, he has swatted that away flat, and in no time he's gone to the boundary. 4 more. Hey, what? That was not a slower delivery, but he just hammered away down there the leg side. He's brave enough, and he's getting the success as well, but not this time because it's Khurram who gets into the act. Thumped it down the ground for yet another boundary. Bowled him! How about that? Round his legs, and I like that salute. Wow, Irfan, you little beauty. Tell you what, I've been waiting for a dismissal since the very first day of the tournament, bowling a batter on his legs, and we are talking about Khurram Chakwal, who has been simply outstanding. Takes a big fish. Khurram goes for 9. 2 wickets down for 27. टूर्नामेंट को देख के अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओसाका लाइटिंग ने इस मैच के लिए नुमाया इस टूर्नामेंट के नुमाया काम किया है। बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने क्रिकेट के लिए ओसाका किरी के नाम से टेप इंट्रोड्यूस कराई है। वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द इवेंट लिया गया है जब फरहाद की गेंद पर फहाद मियां चन्नू ने जबरदस्त अंदाज में सलमान खान का कैच किया और वो 1 रन बनाकर आउट। और यहाँ पर उठाकर खेल दिया है उमर भाई शेहुपुरा। ओह माय गुडनेस, क्या कमाल का कैच लिया है टीम कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जबरदस्त कैच, पिछली इनिंग में भी आपने देखा शौकत से खूबसूरत कैच जो है वो लेकर विकेट दिलवाया था। तमाशाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं और उमर शहजाद बिना कोई रन बनाए आउट। और यहाँ पर उठाया है गेंद को और जाएगा ये बिल्कुल मीलों दूर। अरसलाना चिपट फख्रे पाकिस्तान, जिला गुजरात से ताल्लुक है और पाकिस्तान नेशनल बेसबॉल टीम के ये बड़े अहम खिलाड़ी हैं। 57 रन की लीड और इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। बड़ा खूबसूरत और जोरदार शॉट अरसलान का। डीएचए मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ अ कमबैक हियर। 45 रन हो गए छक्के के साथ। 4 ओवर्स का खेल भी मुकम्मल। इस पर तबा उठा के खेल दिया है, देखना पड़ेगा और गेंद यकीनी तौर पर रह जाएगी तमाशाइयों के बीच में। ये है KTPL कि जो जिस तरीके से हमने लोगों के अंदर जाना था, लोगों को बताना था कि देखो हमारा ये एक ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स था जो गली मोहल्लों में खेला जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हम इसको ग्राउंड्स के अंदर लेके आए। 15 साल हो गए, सो नॉट बीइंग मतलब 15 सालों में ऐसा क्राउड नॉट इवन इन द सबर्ब। आई हैव टू गो एज CEO आउटसाइड टू हैव 2000 पीपल इनसाइड टू गेट इट। सो इमेजिन कि जो स्किन है और जो लेवल है और जो इलेक्ट्रीफाइंग है। क्लिफ्टन पॉपुलर उठा के खेला है मुस्तफा ने, प्लेयर करने में कामयाब हुए यार। स्क्वायर रीजन के बाहर
और बिल्कुल अंपायर ने इशारा किया है कि इट्स अ बाउंड्री फॉर मुस्तफा हनीफ। उठा के खेला है एक बार फिर से और ये बॉल तमाशे के बीचों बीच कॉलेज। मुस्तफा और सलान एट द फिगर ऑफ द इनिंग्स। यहां पर एक बार फिर से उठा के खेला है डीप मिड विकेट की जानिब। फहद मियां चानू के साथ बैक टू द बॉलर और यहां एक रन मिलेगा। बड़ा कामयाब ओवर है ओवरऑल ताहिर की जानिब से। आखिरी 3 गेंदें बड़ी अच्छी करने में कामयाब हुए। पहली 3 गेंदों में 18 रन उन्होंने पड़े थे, एक चौका, 2 छक्के और एक वाइड बॉल के 2 रन, मगर आखिरी 3 गेंदों में मैच 2 रन दिए। इस तरह डीएच दबंग्स ने अपनी इनिंग 87 रन 4 विकेट पे मुकम्मल की है। 105 रन से उनकी बढ़तरी हो गई है। इस तरह चैंपियन बनने के लिए क्लिफ्टन पॉपुलर को 106 रन दरकार होंगे। Abdul Qadir Abbas is going to start the proceedings in the final innings. Just couldn't time it. Hitting the bottom half of the bat. Starts off with a dot ball. No timing at all. Try to heave it. Intentions is pretty clear because the target is way above 100. Hitting it over extra cover. This is bread and butter stroke for someone like Asad Shah. Typical of Mr. 360. Boundary to start the innings for himself. What a start that is from Asad Shah. He went over extra cover. A well-controlled shot. Lofted beautifully. Pick up. Not many batters can hit a shot like that to Abdul Qadir Abbasi. That has sailed into the crowd. Stunning. Absolutely stunning from Asad Shah. Flick of the wrist and travel over boundary. What a start that is from the captain. He hits it up. It's over long off. Wow, that is a big hit from Fahad. That's how he announces his arrival. Welcome to the crease, Zaheer Ahmed Kalia. What a shot that is. He goes over extra cover. That's a flat hit into the crowd. Bad delivery, put away style. What a magnificent shot. Once again, tremendous contact. Zaheer Kalia, what can he do next? Once again over extra cover. Wow, what a hit that is. Elevation and the distance. Not the first time we have seen a crowd dropping a catch. You little beauty. My word, that is a classy shot. Picked up. Down the leg side. Wow, that is another one. That's a monstrous one. And look at the joy in the dugout. This is staggering. The first one was too good, but this is something special. Wrist work over long on. What a shot that is. He'll have to work a little harder because Fahad Miachinnu is absolutely amazing now. Length is offered straight away. Abdul Qadir over the wicket. He stayed deep in the crease, and what a shot that is. It's short, it's pulled, it's flat, and into the ground she goes once again. Sixes are literally flowing like a river. Goodness me. Murtada Wahab Saab is present here. Mayor Karachi witnessing this cracking final. Sitting along with Mr. Zuhair Nasir. It's up in the air. He hasn't timed it. Can this be taken? Oh my goodness! Oh my goodness! This is Zaheer Ahmed Kalia. What has he done? The crowd, in fact, the whole team is running out to him. This is a sensational catch. And look at the reaction of Fahad Miachinnu. Will they come back? And what a scintillating performance from Fahad Alam. 42 of 14, last ball of over number 3. He hits it straight. Wow, that is as straight as an arrow. Umar Bajwa also announces his arrival. He has been struggling, but not tonight. Remarkable shot. Absolutely remarkable. Just a hint of a helicopter shot. Asad has whipped that away into the leg side and picked the gap, and it's gone for 4. Hasnain streams away. Oh, this one is pumped and pumped over the corner. What a timely 6 for Asad. He comes. He got that away and got that away through the offside. Where has it gone? It has gone all the way.
He slapped Zahir Kalia for a magnificent six. Asad Shah, you little beauty. Here he comes again. And he has hit that and hit that. Where has it gone? Oh no, it hasn't gone anywhere. And fielder is looking very upset as well. We will have to. Here he goes. He has hit that into the leg side. Oh, what a fielding. What a fielding. Who was the fielder? And it could be a run out. It could be a run out. It is. It is a run out occurred. Although umpire has sent it upstairs, I think they want to see who has been run out. I tell you what, pressure is mounting. Umar Bajwa gets out for 10 of 7 balls and it's 95 for 2. Every eye is in the middle. Umri goes away. And Asad got away. Oh, the top is running away. Asad gone to the boundary. Oh, yes. For drama. Drama still on. 7 required of 2 balls. My God. 5th ball of the over. Asad has played that away. Protection is a take one. Will they turn back for the second? Run out chance. It is. It is. It has come down to the final ball. And Asad will have to face the final ball. And Asad and his team will need 6 runs for the victory. Javed Miyadad smashed the Sharma in 80s for a 6. Since everyone is up on their feet, it's commentators' turn to come and up. Get up on your seats. Here's the final ball, and Asad has hit it in the air. And oh yes, Asad has smashed that one out of the came out. Oh my God, what a scene there! It looks like we were in England many years ago. Crowd used to come to the ground, used to hug the pads of their favorites and their ideas. Oh my God, oh my God. KTPL is ended and it's Clifton Popular. They are the champions of KTPL Season 3. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। UBL अभी कराची प्रीमियर लीग सीजन 3 की चैंपियन क्लिफ्टन पॉपुलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक महमूद भट्टी, डिप्टी जनरल मैनेजर पीईसी। पीईसी जो है वो पीआईए का एक इदारा है जो एविएशन से रिलेटेड जो है पार्ट्स वो बनाता है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड पार्ट्स बना रहा है और दूसरे डिफरेंट एविएशन ग्रेड के सर्टिफिकेशंस है हमारे पास जो, और हम जो है चौथी दफ़ा इस आइडियाज़ 2022 में पार्टिसिपेट करने से पहले भी हम 3 दफ़ा आइडियाज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हुए हैं और अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4th exhibition offers a platform for G2G, B2G, and E2B interactions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEA will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B directions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The Collection of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day edition offers a platform for E2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. बुरा समझूं उन्हें, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on challenges within the defense sector. The Collection of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, 2B interactions, joint ventures and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. डिस्काउंट मिला 25% का डिस्काउंट ना। इस समय हमारे एरिया में ये 250 का पड़ता है, तो ये 225 का पड़ा है। तो ये डिस्काउंट तो मिल रहा है ना आपको यहाँ पे? जी जी जरूर मिल रहा है। तो आने का फायदा तो हुआ ना? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। और क्या बचत समझ लें 250 की जो चीज़ है वो हमें 225 की पड़ी। बिल्कुल, यानी बचत एक्सपो बेहतर है। जी एक्सपो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। क्या आपको डिस्काउंट मिला? सर ये मुझे 2530 का मिला है। और ये मार्केट में कितने का मिलता है? सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता।
Introducing Dhabeji Special Economic Zone, a project of Government of Sen. This global industrial city connects to Central Asian, Middle Eastern and African markets, with access to China and the rest of the world through ports, and a state-of-the-art zone that nurtures creating jobs and boosting exports. Dhabeji Special Economic Zone represents a defining moment in its evolution. It's 12 a.m. Welcome back from the DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi, where the second match of tonight, DHA Dabangs are taking on Clifton Capulars. And news from the centre is that Clifton Capulars have won the toss and they have opted to bowl first. A little surprisingly for me at least, but we'll see what they have to offer. It's going to be another very good game of cricket. Looks as if it's going to be Farhad Abdali, the man on your screen, will be starting the proceedings. He's a left-hand quickie. And taking strike is going to be KC, Khurram Chakwal. There we go. And there you go. In the slot, and welcome to the bowling crease. And sails over eventually for the maximum. This is Casey for you. As is another one. This time he goes over cover. And that's all the way as well. Couple of sixes to start the proceedings. Entertainment already, Zisham. And again, flick of the wrist and away she goes. That's another one. 3 of 3. He's non-stoppable at the moment. There you go. It's a no ball. Ali saw to the wound and it goes all the way. 4 of 4. Well, this is an onslaught, and so far the bowling side have no answer to that. 4 maximums to start off the campaign, 4 maximums to start the innings. Gotta got that Yorker right. It's not going to help. The length deliveries are not going to help his cause. It's a couple of bounces and over the boundary for 4 through mid-off. He goes big. This time it's Umar. And it's gone all the way. That has to be the biggest of the night so far. It's 37, would you believe, after first over. And there you go. Have a look at that for a shot. It's gone for 4, not gone all the way, but it was an amazing stroke of cricket. It was slow in pace and it went high in the air. Now somebody has to get underneath it. Someone lining underneath it and makes a good reverse cut. And it's the end of Khurram Chakwal. Will be much relieved, Clifton, to see the back of this guy. At the moment, Umar is going to be on strike. And Umar goes big this time. It's very high in the air. And it's safely gone all the way, I reckon. Yes, it is. Another maximum. Full toss, put away on the leg side. It's going to be a flat. No, one bounce into the fence. Is it? Yes, it is. The finger is going to go up. Well, the persistence with that line and angle eventually helping the bowler's cause. 63 for 2. Shot. He goes big, and this is what Waqas is known for. It went a country mile over mid-off for a half a dozen. Come on, umpire, put up your both hands. He goes big, he goes long, and it's a Waqas airliner once again, but lands in the hands. Unbelievably caught. They're losing wickets in clumps as well. They're hitting sixes and losing wickets, so it's a mix-up. End of the third over. It's 72 for 3. Another one, even bigger and better, and it's gone many a miles. Balls are traveling and visiting the boundary ropes regularly. Oh, Yasir Mushtaq has hit it in the air, and that's exactly you are talking about. And finally, bowler got it right, and Yasir Mushtaq gifted a catch at the long on boundary, and 4th wicket falls. Oh, he caught that away. And cut that away magnificently. It has gone all the way. Siptan, umpire, raised his arms and signaled it a half a dozen. Edged it. Going to be out. It is. Fielder was there at the flying slip, one may call it, who took that one clearly, and another wicket falls.
facing Irfan. And he straight away launched that one. And launched that one out of the park. Another 6. What a way to start his innings. He hooked that one away onto the onside. Fielder was down at the long leg boundary and he caught that one beautifully. He had to run, had to cover a bit of territory to get into the ball, which he did pretty well. And at the end caught that one very, very nicely. 1 or 2 for 6 now. And straight away, he caught that one over wide mid-on for a 6. It's a lot of 6s. In fact, too many 6s. That was a very good ball. And it's going to be a run out. It's going to be a run out. Yes, it is. 114 for 7. Single on the last ball of the innings. And it called leg byes by the umpire. So they have finished their innings, I reckon, at 120 for 7. It's a very good score in 6 overs. The umpire calls it play. Fast bowler is going to start the proceeding from the gymnasium end. He's going to come around the wicket first up. Hit away on the offside into the gap. That might go all the way for 4. Yes, it does. So an excellent start as well for Clifton Popular. First ball has been dispatched for a boundary on the offside. This time he's taking the aerial load. Is that going to be the first maximum of the innings? You betcha it is. A boundary and now a maximum. And even Clifton Warriors are up and running. Short pitch delivery. That has been smoked on the leg side. That is going to go into the stands. What a way to get up the mark with that too from the captain. Hitting it up in the air. It's into the gap. One bounce into the fence, or is it a maximum? Yes, it has been signaled as a boundary. So once again, Fahad starting the over with a boundary on the offside. A big shot attempted. Down the ground it goes, and it goes over the boundary ropes as well. Once again, a 4 followed by a maximum coming from the batter, Fahad. Pick up shot on the leg side. That's going to travel to Journey as well. All the batters from both the teams are showing no mercy whatsoever to the ball. Shot of the day to me. Against Fahad. He goes straight. He goes long. And he goes for yet another maximum. That has been the story in this over. It's the third of Zohaib. 26 of the over. Another swung away on the leg side. It's into the gap. That's going to go all the way for 4 as well. So that's the over they were looking for. 3 maximums and 3 boundaries make that 30 coming from that over of Zohaib. So it's going to be Awais Salim starting the third over. 4 fields outside the ring. Starts off with a short delivery, put away on the offside. Beautiful batting once again. This time coming from the batter, Fasad. Now he decides to go big as well. And that's going to go way over the stadium. And the crowd really enjoying it. Very good striker of the ball. He goes big this time. Doesn't get the elevation, but certainly in the gap for boundary. Down to mid-wicket. First boundary in this over. He goes big. And he goes massive. And he comes down, but out of the ground. What a shot to start the proceedings. Welcome to the bowling crease. I'm very much excited about it. और आप देख रही हैं पीछे के कराची रोशनियां बहाल हो गई और everybody is enjoying this match और खास तौर पर देखिए क्लिफ्टन पॉपुलर्स का खेल रहा है। ओके, यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्लिफ्टन पॉपुलर्स की एक विकेट गिर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Well, this is a game, you know. इसमें गेम ऐसा होता है। But if you bowl that length, then you're going to go the journey, no matter it's meat of the bat or not. And it goes all the way with all the pace of the bowler. He picks that one away, but straight to the throat of deep square leg fielder. Another wicket goes down. It's Haq Nawaz, who's the latest exit. Second wicket goes down now. He goes big, and this is what we were expecting of Umar Bajwa. He's a big striker of the ball, and that is the evidence.
He chips one in the air and he's been caught brilliantly. Very good catch there by Khurram Chakwal at long on boundary. So Bajwa goes for 6 after 2 deliveries faced. He goes big this time, does Tahir, and he goes long as well. Over square leg for a big 6. There he goes. And I wonder if that is a wicket. There you go. Your prediction comes true, Kaina. Yeah, they've managed 113 runs of their quota of 6 overs and lost 4 wickets, which means that they will have to trail by 7 runs. Welcome back to the DHA Moin Khan Academy, where the KTPL Season 3 is being played. And the third innings of this match about to be get underway. DHA Dabangs has the lead of 8 runs. And for what do you make of this 8 runs lead? But lead is a lead. And straight away, he had a wild swing at that one. But I think he changed his pace a bit. He bowled a slower one back of the hand. Left arm from round the wicket, and Vicky has caught that away. Over mid-wicket all the way for 6. Tremendous shot. Wasn't a long hit, but half a dozen. This one is picked away for a massive 6. 6s are being hit in every part of the ground again. He's a real class act, no doubt about that. And he goes again and goes good enough for yet another 6. This one is going and gone away for 6. That was some hit. And he goes again. But fielder is there at the deep backward square leg, and he caught that one beautifully. Chota Vicky went for the big hit again. He has to walk back. Big wicket, 50 to his name, 34 for 1 on the board. Meanwhile, Hassan is going to continue with his second, the left arm seamer. Picked up. Is it long enough? It's sailing over the boundary ropes. Yes, it is. Perfect start to the over, this from Khurram. Another slower one. This time he decides to go straight over long over and see you later, says he to the ball. Back-to-back 6s for Khurram. And now they are up and running once again, DHA Dabangs. 34 for 3 was not that threatening for Clifton. Once again goes straight, goes long for yet another 6. It's the hat-trick of maximums now, this time all long gone. Length. He goes flat. Is it another one? Yes, it is. Oh, someone please take it. Someone in the crowd, please take it. They'll be looking to make the grandest of comeback. He tries to go big. He has sliced it up in the air. Is it going to be taken? It has been taken. Second wicket goes down. They are 62 for 2 at the moment. And he decides to go straight. There's a fielder down there at long gone, but the ball is going to go over his head. A bit of a counter punch now from Arsan. He tries to go big over long off and he gets plenty on it. Another 6 from Arsalan's bat. The lead in the first innings of about 13 runs. It's in the air and it's been caught. So Khurram Chakwal has to take a long walk. So Khurram Chakwal will be walking on his way back to the pavilion. 42 of just 15 tonight for the big star. Once again, perfect execution of that yoga. It's going to be just one. In fact, they're looking to come back with second run out opportunity at the bowlers, and it's a suicidal run out. There was no way he could have come back for the second run on that occasion. That just did not even cross the inner ring. I wonder what the chemistry was going on between both of the batters. Full toss picked away on the leg side, and a much needed maximum for DHA Dabangs. Missed out his length this time by just a few inches. Felt like he was almost waiting for it, Arsalan. He goes for another one. Full extension of the arm. That's the shot of the night. Over long gone for a gigantic 6. Oh, forget about the distance. How was it about that height? So the innings of DHA Dabangs is over. 105 is the equation. Clifton Popular, they have to get 105
They did well in the second innings. First ball of the final innings. Full toss outside the off stump and plug the gap and could be a boundary. Chases on and finally ball has got to the fence. So boundary to start the over. That should have been stopped. It wasn't struck very hard. Umar again. Smashed away over long off. He has cleared the boundary quite comfortably here. It's not a long strike, but he smashed it well enough to pick up a maximum. He goes leg side. It's high in there. Will this be taken? It's a tough one. Who wants it? And second, what a wicket that is. It's a huge one. Fahad has to walk back. It's a leading edge and well judged catch indeed. It was a tough one. Picked up an important wicket of Fahad. Boundary and 6 followed by a wicket. Umar again. It's high in the air. Where it's going to land? Is it a chance or is it the maximum? It's got him. 2 wickets in 2 balls. Would you believe it? Dream start for DH Damangs. It's 12 for 2 on the board and they are extremely happy. Hat-trick ball. Pulled away. Will this be taken or it goes for 4? Nicely struck. Importantly, it's a well-placed shot. He goes leg side as a Shah and it's got the distance. He's just cleared the hoardings and he starts off with the maximum. Beautifully played. Outside edge and gone. No doubt whatsoever. Massive deflection. Finger goes up as well. And Tahir Pindi just came and went. He knows it. He has to walk back. He went after the bowler. He wanted to smash it over long off. Now he's walking back to the pavilion. He goes big. He goes high. And certainly has cleared the boundary by a long, long way. That has cleared the stadium. What a start that is. Beautifully played. Pick shot by Haq Nawaz. What a start. Went for the big shot. And he took on in with absolute power and class. No doubt whatsoever. Up goes the arms of umpire. He goes leg side. Is high. Is it long? Certainly. It's just cleared the boundary. It should be a maximum. He was right at the edge of the boundary. It was top edge. What a good strike. What a good strike. It has sailed over the rope comfortably. Haq Nawaz is on fire. He gets a full toss and he hits it hard, hits it long, and it's going all the way. Oh, now all the way, it's in the lap. Oh my word, it's Guram Chakwal again. You just can't keep him out of the action. And Asad Shah walking back after 12. It's 56 for 4. Full toss, picked up into the stand. That at least 6 rows back. He goes for another one. Once again, it's high up in the air. And that's way over the boundary ropes as well. Here we go. And there you go. If you bowl a little shot, you're going to go the journey. It's a 1 bounce 4, but they'll take it. Length, as I talk about length, he bowls 2 full, and he goes the journey again. That's another maximum. And now they're getting closer to the victory target. Now it's a different story altogether. Shot. Starts with a good delivery, and he's been thumped down the ground. There is a little bit of fumble, and I think he's signaling that ball has hit the skirting. It's gone for 4. Needs to bowl the perfect of the ball. He bowls a full toss. It's up in the air. Third man fielder drops it. Goodness gracious me, that should have been taken. Ah, you gotta be kidding me. It's just the first game. It's a full toss. He has hit that on the leg side. It's gonna be taken. Mustafa has done it. He has provided an all-important breakthrough of Haq Nawaz, who is gonna perish after scoring 24. It's 93 for 5 with just 1 ball remaining. Yeah, even the delivery in which he got out, Daniel Shirazi is the new batter in. This from the captain. It's shot. It missed everything. It's going to be a dot ball, and the defending champions have done it. They have defended this total against Clayton Popular and have managed to win this game by 11 runs. Well, the defending champions registering their first victory of this season 3 in this KTPL. Here's the match summary. The first innings, the bank made 121, courtesy 37 runs
by Khurram and 3 wickets taken by Arfan. Clifton in reply made just 113. Fahad once again another half century for him. Mustafa was pick of the bowlers with 3 wickets, and in the second innings the Bun made just 96 runs, whereas Clifton Populars were 11 runs short. Good evening to all of you across the globe, wherever you are, and it's day 3 of KTPL, day 2 season 3, and today's first match is going to be between Johor Jawans and Gulshan Gohars. Earlier on, the news from the center was that Captain Syed Nasser of Johor Jawans has won the toss and has opted to bat first without any hesitation. So here we go. First ball of the night. Oh, it was a full toss, but way away from the batter. We'll have to re-bowl as it's a wide way out to the off stump. There's a lot of difference in tight ball and cricket ball, but this time it's in the slot and thrashed away. Oh, mid off a boundary. First boundary of the night, and it's Nasser, the captain. And there you go! We are here for this stuff! It's going all the way to the boundary. It's a beautifully struck. Not in going out of the middle. Was there a nick? He's gone for the umpeel and finger is raised. So the first wicket goes down for Johns. Umar gone for 3. 16 for 1 at the moment. So Basit lefty is the new coming batter at number 3. And he has to face that delivery, which he sends into the stands. Wow! Well, he announces his arrival at the crease with that big blow over mid-wicket. He means business tonight, his best Basit lefty. Ball toss, that's the treatment, 6. That's big one, that's even bigger. He's not going to stop one bit. He goes big and he goes high, somebody getting underneath it. And somebody takes a brilliant catch. Celebrations from the bowler. And it's Basit lefty who leaves the arena at the score of 12 with a strike rate of 200. And he has got him. Bowler was generating a lot of pace. Batsman did swing his bat at that one, missed the line of the ball, and it did hit these stumps. And so Nasser is gone. And gone for after making 11. And he has got that away. And it bounced away to the mid-wicket boundary for 4. Fielder, I think, should have stopped that one, but he made a mess of that one. And there you see, he lapped it away over square leg, and it's gone all the way for 6. There was authority there in that stroke. With great smoothness, and he goes again. Better and bigger. It lands outside the boundary for another 6. Oh, that can worry them. That can worry them. Way down the leg side, rest away for 5 or 6 wides. That was a bad ball. This will go. This will go. Blazed away through the offside for 4. That's a very good shot. They take 1. It's a leg by. 75-3 is what they have got in 6 overs. Saddam Shah coming back after injury. He's been the top bowler in 2019 and 2020. Here he comes.
Straight away, that has been hit down the run. All there was a fielder down there at long gone, so they'll still just get a single. Once again, picked up in the air. There is a fielder at deep mid-wicket, but the ball is going to go way past him. A boundary for the left-hander. He goes again on the leg side. Fielder at square leg is after the ball. Ball might just trickle past the boundary ropes. So back-to-back boundaries to Bahadur. So the chase is definitely on. Starts off with a short delivery. Taimur Mirza decides to go big and he hits it way over the boundary ropes on the leg side. First maximum of the innings. Well. It's TM in the house. Fuller, he decides to go straight and he goes long, does Taimur Mirza. Second maximum to TM in this over. Don't search for the Yorker, especially when you don't have enough pace. Short. He goes big again. This time long on. That's a magnificent hit from TM. Back-to-back maximums. He goes big. He goes straight. It's up in the air. Mid-off was inside. And that's going to go way over the boundary ropes. There you see the ball just landing from the orbit. Perfect start to the over. A 6 of the very first ball. Fuller. This time he goes over extra cover. It's into the gap. That's going to run away for 4 as well. Overcompensating this time. Previous was wide down the leg side. This time it was too wide outside the off stump. Rashid now bowling to TM. It's going to come over the wicket. Once again, it's the leg ball, and that's going to travel into the stands. That went good 4 rows back. Down the leg side, clipped away. One bounce into the fence. There is no stopping him tonight, that's for sure. 50 also comes up for Gulshan Gohars. Watch it coming over the wicket. Starts off with a full toss, picked away on the leg side. It's into the gap, one bounce and into the fence. Horrible delivery. In fact, it has been signaled as a no ball as well by the on-field umpire. I think इन्होंने जिस तरीके से टीम को मैनेज किया है अनलकीली लास्ट टाइम जो है वो हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके थे लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर नजर आएगी आपको. Full toss put away and everybody's a spectator. That has been smashed way back over the boundary and once again umpire raises his arms. So low one well picked up. And once again, same result for Taimur Mirza. He's just 1 away from an outstanding half century. 6 to end the over, 82 for none after 4. Smashed hard, it's high, it's handsome, that's gone way back. See you later. What a strike that is. And 50 is up for Taimur Mirza, an outstanding half century. And he just consumed 15 balls to get to this landmark. He goes leg side this time. Once again, he doesn't need to run. This is scintillating batting from Taimur Mirza way back into the stands. Taimur Mirza, he's into the 60s now. Once again, pitched up. Thank you very much from Taimur Mirza. Hat-tricks. Goodness me, this is real carnage. Bahadur lefty, beautifully played. Towards the side. Sublime shot from Bahadur lefty. This right and left in combination. Once again, he goes high. Is it long enough? Is it long enough? No, it is not. It's well taken at the boundary. 2 fielders was converging and there was a certain chance and the fielder judged it well. He kept his cool and finally an opening partnership has come to a close. Bahadur lefty has to walk back. Final ball of the innings. And he finishes up with a maximum. Yes, one of the biggest sixes of the innings. Of course, the arms. And Taimur Mirza finished his innings with 75, blistering performance from a superstar. Welcome back to the DHA Sports Club Moin Khan Academy where KTPL Season 3 is taking place. And I think Gulshan Gaur have done a very good job as well by taking the lead of 43 runs. First ball of the 3rd innings of this match is coming up. A left armer streaming into us. And first one has been smashed away. And batsman
knows that it will go all the way for maximum. मिलते जुलते नाम है, लेकिन जो मैं अभी तक बढ़तरी देख रहा हूँ वो गौर की है। तो जवान की तो नजर आ रही, क्योंकि उनको 47 का एक्स्ट्रा हमने टारगेट दिया है। तो पहले तो उनको 47 पूरे करने हैं दोबारा मैच में आने के लिए, और यकीनन जब 47 पूरे करेंगे तब इनके टारगेट का पता लगेगा। In the air and taken at back foot point quite easily, and the first wicket falls. So the opening stand has been broken. George Javaz in a spot of ball. They are now at 25 for 1. With Shah Razaz working back after scoring 5. He edged that one, and another beautiful catch is taken. That's a very, very good catch indeed from the fielder at short third. So the captain is walking back to the pavilion without even troubling the scorers, and George Javaz is all sort of trouble. They are 25 now for 2. Umar is taking strike, and he's going to bowl the hat-trick ball. He streams in, crosses the umpire, and it is in the air. Wicketkeeper is trying to get under. Oh, he made a mess of that one. I think he misjudged that one. Hat-trick could have been taken. Thank you so much, Rana. And there you go. It's a 6 of the left-hander's bat. What a time to jump into the commentary box. With me is Kainat. As we can see, a flat hit this time through mid-off, wideish mid-off. It goes all the way after a couple of bounces. They need more of these. And keeping your shape just like that. That one has been smashed out of the screws. It was 6 written over it when it left that. What a cracking sound of the willow. Oh, he goes again this time. Not exactly very intended, but this is what it happens in tape ball. Out of the screws, but he gets the desired result. Maximum, to say the least. Yeah, he's getting under. Full tosses are not going to help the bowler's cause. That one went into the night. Oh, we have lost the ball. Please get the ball back. And have a look at that shot. That is shot of the night so far, in my opinion. Mere flick of the wrist, and away she goes for a half a dozen. That's gone. That's out of here. Please get the ball back. Well, it blinded me. In fact, when the ball was in the air, I thought it was out of here, but it was in the lap of the fielder. Comedy of errors in the commentating bench, I would say. Anyways, there was an action, so it was a bowler's victory. Falak Bashir goes through the extra cover. One bounce into the boundary. That's high. Where is it going? It's going in the square leg fielder's hands. So Falak Bashir has to take a long walk back to the change room as they lose their 4th wicket. All right, it's going to be Arib, the new coming batter, who's going to face... Look at that, not catching in the middle of the bat. No timing behind that. They will look for 2 here. Have to hurry, but they get it comfortably in the end. A better throw could have got the interest a little too high, but they managed to pick up the couple to end the innings. So 6 overs now have been officially bowled. So they have managed 92 for 4 in their quota of 6 overs. As we see Taimur Mirza with Bahadur Ali making their way to the center. They've got 50 runs to defend, and it's not going to be that easy for the bowlers. I still believe the first ball has been hit away on the leg side by Taimur Mirza, and that has gone way into the stand. So an excellent start once again by Taimur, starting exactly from where he left in the first innings. He had a perfect seat in house. He decides to go straight. He goes long, and he goes over long on as well. So both the openers opening their account with a maximum each. What a glorious shot. First ball and smashed it on the ground. He picked the ball very well. A slower one once again decides to go big. This time the long on fielder is going to take it. So an anti-climax this to the innings of Bahadur lefty. A 6 and a wicket. So wicket falls. So they need more wickets like that
to keep the batting side away from the victory. 6 to his name, 13 for 1 on the board. There's one ball still to go. Jahangir running up. It's a length delivery. Blazed over long off. That's a magnificent hit by Taimur Mirza. Another 6, this time to end the over with. Low full toss. He has decided to go big and he has got plenty on it as well. This time 6 coming from the bat of Essen. Real consolation, real relief for Essen. They just try to play straight or towards the onside. Well played, that's gonna be 6. Beautifully played, no trouble. Short delivery and punished once again by Taimur Mirza. 6 more to his name. And now they need just 15. He decides to go big on the offside. There is no fielder up there. In fact, if there would have been even, it would have still sailed over his head. Back-to-back 6s to Taimur. Has he timed it well enough? Has he timed it well enough? Not quite. 1 bounce, 2 bounces into the fence for 4. It's a boundary to Essen. And now they are not far away from the victory. Once again, it's lifted up. It's high up in the air. Who's trying to get underneath that? Is it going to be taken? It has been taken. A really good catch indeed by the fielder at deep mid wicket to get rid of Essen. A very well judged catch indeed. Kept his eye on the ball, kept his cool. So that wicket has delayed the victory of Gulshan Gaur. 12 to his name, 43 for 2 on the board. Of UBL Amin KTPL Season 3. Lofted over extra cover. That's going to be a boundary. Beautiful hit this from Ilyas. Was there an outside edge? Yes, the finger has gone up. What was he thinking, Taimur Mirza? An unusual way for Taimur Mirza, the way he got out. 24 to his name, but he's done his job for his side, 49 for 3. But he does not need any second invitation. Abdullah pulling the first ball down towards leg side for a boundary. And that is it. That is how Gulshan Gaurs have registered their first victory in this UBL Amin KTPL Season 3. A commanding performance both with bat as well as with the ball. Welcome back to the DHA Sports Club Moin Khan Academy, where the KTPL Season 3 is taking place. And the latest match is between Liari Legends and Mali Malangs, where Mali Malangs won the toss and they have elected to bat first without any hesitation. Shahjahan is very much ready. He's in, right arm over the wicket. Oh, batsman did have a go at that one, but Shahjahan knows how to baffle the batsman, how to castle the batsman. Shahjahan again. This time it has been bashed away and bashed away in the stands. Here comes the first 6 of this game. Goes again and goes big. It has gone all the way. Another 6. Daud Khan is looking relentless. He's looking ruthless. Yes, he was. And this one is going. Where it's going to land? It's land outside in the spectators. And look at the jubilation in the dugout. 26 runs off the over. And this one is whipped away and whipped away magnificently. There were another 6. Oh my God. And he got that away and got that away over mid-wicket. That's a huge one. That's a colossal hit, FS. That is a big ball. Gigantic one. That's been caught behind. Bowler made a very good comeback.
and wicketkeeper did the rest by taking a very good catch, and the first blood is drawn. Smacked it. It's a flat batted hit. That's go way over deep mid wicket for a magnificent hit once again. A 6 to start the over with. Maleed Malangs, 56 for 1. Another big hit. And he has timed it well enough. Yes, he has. Back-to-back sixes to Imran. A good start to the over from Salam. Oh, once again, terrific contact from Imran. It doesn't matter. It doesn't matter. This time the ball goes way over long off. 3 back-to-back maximums from Imran. This one is the biggest. Once again over the offside. There is no protection out there. 2 bounces and into the fence ball goes. Nothing is working in favor of Salam in this over. 3 maximums and now a boundary. This time he connects, but hasn't timed it well enough. There is a fielder and they're getting underneath that, but he did not even get his hands to it. And they're coming back for the third one as well. I think it's real good running. Outside edge and taking the time in the second attempt though. But what a magnificent spell this has been from Rana. Once again ending the over with a wicket. This time, once again, the dangerous batter Imran, who has been dismissed. 85 for 2 on the board, and Imran is walking back. Just 5 remaining in this innings. He tries to blast it on the outside. It's a flat hit. That did not go high off the ground, but still carried to journey. Once again, the ball hitting the legs. This has been an exceptional last over from Sohail. How well has he come back after being hit for a 6 on the offside? Just 7, in fact, just 8 runs conceded in the last over. And Maleed Malangs are going to finish their first innings on 93 for 2 in their allotted 6 overs. So here we go. Down the leg side, misfiring. It was a bullet, but off target. A couple of runs given in the form of wide, and that's not on. Is the bowler. There he goes through the covers. This should go across the boundary for 4. The left-hander expanding a bit. His first boundary, Nizar lefty. There you go. If you bowl there, you're going to end up over the boundary for the maximum. Wow. Here is Ali continue his bowling spell. And welcome to the bowling crease. Simple as that. In the slot. And there you go. Oh, Ali, come on. Welcome back, and there you go. That's another fine stroke. A good bit of football skills there on the boundary line, managing to stop the ball with the boot. And it's comedy of errors. What's happening at a non-striker? Look at that. Oh, there was a big mix-up. That was very comical as well. Very nice and very neatly, and the first blood is drawn. He's launched that one, though, and that's going to carry all the way. It was long, it was high, it was handsome, it was all like it was maximum. That is picked and hit out of his presence for the maximum over square leg. Brilliant pickup once again. Straying onto the pads and paying the penalty. He definitely is swiveling around, but the fielder made a mess of it. That really was an opportunity at deep backward square. Oh, nicely picked. It was slower in pace and in the slot, and he gets his man because the lack of pace has done the batsman on the occasion. Ashraf Pathan goes for 10, and they are now 49 for 2. Straight down the ground. It's high. It's handsome. Is it long? Yes. Forget it. It's huge from Daud. It was right in the slot, and what a strike that is. Drop the ball short, and great shot in fact from Hamidullah. Picked the ball really well. It wasn't an easy shot to execute,
but he finished the over with a magnificent maximum. Starts off with a short delivery, once again put away on the leg side. It's up in the air and it is going to land. Oh, it has been taken. What a brilliant take that is. What an outstanding catch. What a brilliant catch that is. One of the best catches of the tournament so far. Daud Sulaiman goes for 6, 65 for 3 on the board. Straight away he announced his presence. Subhan and caught! He caught. What a wonderful catch. 2 in a row. Would you believe it? Well, this one is even better. He's walking back. Golden duck to his name, but he is disappointed. 65 for 4 on the board. A pickup shot. How well has he timed that? That is going to go way over the boundary rows for a maximum. They needed that. No full toss. That's a skimmer. Oh, he jumped in the air to take that one once again, but this time ball was timed just well enough. This time he has gone an outside half of the bat. The fielder is trying to get underneath that, and he's going to take an easy catch. The bench has been taken by Fadl. He gets the big wicket of Hamidullah. He has the last laugh. He attempts it. Perfect execution, although they're going to get a run. But that's really good bowling. His overthrow coming back for the second. And will they come back for 3? Could be run out here. And it's gone, I think. I think wicket falls once again at the bowling end. Yes, the batsman is walking back here. So wicket number 6 down here. Time for the last ball of the innings. It's a short delivery, played straight, played flat. Has that gone all the way for 6? We'll have to wait for the umpire signal. Yes, the arms are aloft from the on-field umpire. And that means Liari Legends are going to finish off their innings on 89 for 6. Welcome back to DHA Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi. It's almost halfway done. It's Mali Malangs versus Liari Legend. The situation has been even Steven. Just 4 runs separate support sides. And Mali Malangs are 4 runs ahead. So ball number 1 of innings number 3. Outside edge, just try to play towards the onside. In the end, just a single with the soft hands. Catch it as a cry. Will this be taken? Gone this time. No mistake whatsoever. Sherjan this time made no mistake. The second time he got the opportunity, and what an over it has been. 3 for 1 on the board. Mimran goes back for 1. He goes offside. He is clear the infield. That should be a boundary. Wit was offered and nicely managed by Kaleem, and it's the first boundary of the innings. Is there an edge? Is there an edge? Up goes the finger. Everyone was excited when the ball passed the outside edge. So wicket again. Sohail has been so impressive, and now he's been rewarded. And Kaleem goes for 6. Full toss. Once again, hasn't timed it properly, but has gone for 4. That should have been saved at the square leg boundary. A much needed boundary. Went for the big shot. Has he got enough on that? Yes. It's a crowd catch into the stands. A relief for Daud Khan. No ball. No ball signal. He has beaten the short fine leg fielder and has run away for the boundary. So gift here for Mali Malangs and Daud Khan. Last ball of over number 3. Free hit. Still alive. Full toss. Has he got the treatment? It's a big one. Into the stands for the maximum here. He finished the over in a grand fashion. Squatted away on the offside. It's into the gap, and since there is no fielder out there on the offside, he's going to collect a boundary as well away. He picks it up. Over long off. Has he timed it well enough? Yes, he has. This time a flat hit. It's this time he has been holed out.
doesn't get the elevation or the distance this time away, and a very good change of pace by Shah Jahan. He picks up another. And Awais making his walk back after making very fine 17. Squatted away on the offside, over backward of point. Hasn't got a proper connection. The ball will just trickle past the boundary ropes. The fielder was a little slow in getting off the blocks. जी हाँ, काफ़ी थ्रिलिंग हो गया आज और इसमें बहुत अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली है, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई हैगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में अभी तक वाइट बॉल्स बहुत कम हुए हैं, इतने सारे स्पॉन्सर्स और तो ये वाकई काबिल तारीफ है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि Daud Khan decides to go straight as an arrow into the side screen he goes. That's another 6. Now he's moved into the 40s. It's a low full toss. Hit away on the leg side, into the gap and into the fence she goes. A 6 followed by a boundary. 99 for 3, 1 ball remaining. Sohail charging in. Pulls it right into the block. Oh, there might be a chance of a run out. It is a run out. A run out at the wicket keeper's hand means Malir Malangs are going to finish off their innings on 99 for 4. And they lead by 103 runs. Karim Hamdullah is ready to face the first ball from Majid Gholi. Might be given as a wide, yes it is, although he was moving inside the crease there, because of which Majid Gholi is a little surprised by that decision which has been made by the umpire. And there he gets a connection he was waiting for, and there you go, it's the maximum. First, not the last, by Nizar. And there you go. This time a pickup, it's high in the air and it's going towards the boundary. Eventually it will reach the boundary because it was perfectly in the gap at fine leg region. Outside edge and a very good catch indeed. That's a remarkable catch. That is probably one of the catches of the tournament. Nizar Ali's taste comes to an end. 11 of 10 for the left-hander. Tonight it's 25 for 1. That is going down the leg side and going for 6 wides. Is this the opening of the gate which the chasing side is needing? This has been a terrific piece of bowling, but it's still raced away to the boundary. This has been played away towards the fine leg boundary and it reaches the boundary. So first ball of this over has given them 13 runs. He has got that away and got that away into the stands. This is what they're looking for last few overs, and finally Daud got one away. And he has got that away and got that away into the gap and picked up a 4. Here is the final ball of this over. If it doesn't bowl nowhere wide, it's gonna go towards the fine leg boundary and got there. Another boundary to end the over. So 72 for 1 after 5 overs, starting the final over. And first one is lofted and lofted over deep square leg for a 6. That's what they wanted on the first ball of this over. Ubaid again, and he got that away and got that away over wide, long on. Another 6 still on. Let's see, here we go again. And he tried another one, and he has been able to hit that one into the hands of the fielder. He tried the third 6 in a row, but he failed the time around, and Ubaid has picked up a wicket. Or away from the no ball. Is it going to be a no ball?
And fielder has done a very good job. Has he caught? And gone. Now we can see it. Ashraf Pathan has to walk back. 84 for 3 on the board. This is going towards the boundary and gone all the way for 6. So they have ended their inning at 91 for 3 and they lost this match by a margin of 12 runs. It's 1 a.m. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum once again from DHA Sports Club Moin Khan Academy Cricket Ground for match number 5 of UBL Amin KTPL Season 3. It's going to be Gulshan Gohars up against Karachi Knights tonight in the second game of tonight's schedule. Karachi Kings, in fact, Karachi Knights have won the toss and have decided to bat first against Gulshan Gohars, who started off their campaigns on a winning note last night against Johar Jawan. All set for the first ball of this match number 5 of UBL Amin presents KTPL Season 3. Karachi Knights are batting first against Gulshan Gohars. Starts off with a fuller pitch delivery, which was just gently played towards mid-wicket for a single by Ubaid Lefty. That was a first. He tries to go big on the offside. There is no fielder out there. It's going to bounce twice, in fact once, before it goes past the boundary ropes. So the first boundary of the inning from the bat of the captain. Tries to go big. And tell you what, that is a monstrous hit from Ubaid Lefty. That has gone into the dugout of Karachi Knights. Down the leg side, it's up in the air. It's a leading edge. It's gone way over the head of the fielder at fine leg, and that's going to go past the boundary ropes as well. Pretty unfortunate this for the bowler. Willing to hit a few more boundaries in this over. This time he connected that well. This time it's going to go way over the boundary ropes. In fact, umpire is signaling it as a boundary. Might have bounced just inside the ropes, but just get the feeling he timed it too well. This time he goes straight. He goes massive over long off. That is some hit. And finally a catch has been taken in the crowd. Well, that's why it's so important to play on the merit of the ball. Just like that, I was
exactly talking about that, and oh my word, he nearly pulled out a blinder on the boundary line, but the end just tips it over the bar for the maximum. Left-hander gets one in the slot. It smiles in the air. Does it have enough legs? I don't think so, because it's been caught on the boundary. Well, I thought it's going out of the stadium, but again, it's on boundary. Well, lefty makes a long walk back to the change room. Oh, look at that. That's in the air somewhere in the covers, and it's been caught. Nicely pouched. And guess who? It's TM who's taken the catch. Usman Jan, 3 runs for 4 deliveries. Oh, that's miles in the air. And it's not going to clear mid-on even. Hassan Chitto, the fieldsman who makes no mistake. And another one goes now. 27 he's made of 17 deliveries. There are 3 wickets down now. There you go. He goes through the offside. Will he manage to clear the field? And no, he doesn't. Another one goes. Now, wickets are tumbling here. All of a sudden, there are 4 down. Junaid Juni gone for 1. Oh, and the music is a full toss, which has been belted brilliantly out of the ground, and it's going to be a no ball as well. This is the thing which they were waiting for. And there you go. It's gone somewhere. I don't know where. It's in the lap of the fielder. But it was a free hit, so the batter will be not out. Because the batters are going to go that way. That is out of here. See you next day and next night. There you go. We are going to see some stuff tonight. It's gone miles in the air and it's out of here. It's on the trot. Look at the dugout. Well, definitely it is. Make up everything. Oh my God. How can you lift a ball from your feet all the way over the boundary line? It needs immense power to do that. It was a great shot in the end to finish it off with a 6, 82 for 4. 82 रन्स का टारगेट है सामने। दानिश अगर हम देखते हैं यहाँ और जिस तरीके के बैटर्स इस वक्त गुलशन गौहर के मैदान में आ रहे, जिसमें तैमूर मिर्जा टीएम भी शामिल हैं और टीएम ने जो कल इनिंग खेली थी 75 रन्स ऑन जस्ट 21 बॉल्स विद 10 6, आई थिंक ये बहुत ही क्रूशल होगा यहाँ टीएम विकेट जल्दी लेना। और अगर विकेट ले जाए तैमूर मिर्जा या बहादुर अली की तो नेले पे दैला। पहली गेंद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट यहाँ मिड ऑफ पे खड़े फील्डर की। इस तरह ये फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई रखना होगा क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा बोर्ड पे नहीं और सामने बहुत ही डेंजरस बैटर है। कब तक खामोश रखेंगे तैमूर को? इस बार क्या हासिल करने में कामयाब, 4 रन हासिल किए तैमूर मिर्जा ने। इस बार फिर गैप हासिल करने में कामयाब हुए तैमूर मिर्जा। एक और 4 रन, जिस तरह 4 डॉट बॉल्स थी 2 चौकों के साथ इख्तिताम किया तैमूर ने इस ओवर का। और आउट बहादुर अली। ओ, पहला नुकसान उठाना पड़ा यहाँ। फुल टॉस था, बहादुर अली इसको जोरदार अंदाज में छक्के के लिए पहुंचाना चाहते थे लेकिन सीधा शॉट मिड विकेट पर थमा बैठे बहादुर अली। 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर वापस पवेलियन जाते हुए 16 पर 1। इस बार तैमूर मिर्जा का प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, शानदार छक्का। तैमूर इतने जेन्युइन बैटर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली और इस बार आउट होने का खतरा है यहाँ। गेंद हवा में, लेकिन हवा में गेंद बाहर ली। हसन चिट्टा का शानदार शॉट। Taimur is, and there you go. Taimur has got that away, and fielder got under the ball. In fact, it was Hassan who hit that one in the air, and fielder got that one beautifully. And Hassan's cameo is over. It's not a happy man. 38 for 2 on the board. This one is whipped away. Again, there's a protection at the deep square leg. He gets another one. Wickets are falling like 9 pins here at DHA.
Well, low full toss has done the trick for Ali. 38 for 3, Gulshan Gohar. Full credit to the bowlers so far. They have done a very good job. And now Taimur Mirza has gone after him. It's going, and gone many a miles. He got that away and got that away magnificently. That's a big hit. It's gone all the way. जी अली 3 विकेट्स और उसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ बहुत अच्छे बॉलर्स हैं हमारे पास और कोशिश यही है कि हम कम से कम जो है स्कोर पे इनको रोकें आगे जाके जो है हम अच्छा टारगेट दें. Taimur Mirza has hit that one away and hit that one away all the way towards the backward square leg for 4. Just 4 short of what would be a terrific half century. Got that and got that away miles again. He's on fire and he gets his 50 in style. Taimur Mirza tried to head a go at that one, missed it altogether, and bowler had the final off. He got a wicket, but good job by Taimur Mirza. 50 of 22 deliveries, 83 for 4 on the board. He has hit that one and hit that one very, very nicely. And it's gone all the way for 6. What a way to finish the innings. 89 for 4 they have. So it means they've got a lead of 7 runs. Welcome back. We are live from DHA Sports Club, Karachi. So Karachi Knights managed to score 82, and whereas in reply they took the lead of 7 runs, did Gulshan Gohars. Karachi Knights will be looking to score around about 90 or 95 so that they will end up with a healthy lead. Swing and a miss to start the proceedings in this innings, 3rd innings. Not there, certainly. If you bowl there, even if it is a top edge, it's going to carry all the way for the maximum. There you go, in the slot and into the night sky. They had so much elevation on that shot to bed lefty. One was length. Swing away on the leg side. This time he connects and he connects it well enough. Sailing over the boundary ropes for another maximum for Ubaid. 34 for none. Still halfway through the 3rd over. Picked up on the leg side. That's going to sail over the boundary ropes once again. Ubaid has been very severe on anything on the leg side. 8 deliveries have been bowled already. Another swing on the leg side. That's going to sail over the boundary ropes. And to add salt to the wound, it had been single as a no ball. When will this over come to an end? और इस गेंद को ऊंचा खेले और खूब खेले और गेंद हवा से बातें करती हुई नीचे आ रही है. स्ट्रैंड्स में आके गिरी छक्का. इस गेंद को खेले, गेंद हवा में है, कहां जाके गिरेगी? बाउंड्री से बाहर. एक और छक्का. ओह, बेल्ट किया हवा में, अभी भी हवा में और दरख्तों के दरमियान जाके गेंद गिरी. एक और छक्का. वाओ, शॉट यार. और देखे क्राउड की खुशी. और इस गेंद को भी हिट किया. बहुत खूबसूरत शॉट, मिड विकेट से बाहर. एक और छक्का. छक्कों की बरसात. ओह, सीटियां बज रही हैं. वाह. एक और जबरदस्त कनेक्शन यहाँ उबैद लेफ्टी का. गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्री के दरमियान. 6 रन. शानदार स्ट्रोक. बार अपील हुई और खुद चल दिए थे उबैद. यहाँ पर अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उबैद जाने से अंपायर का इंतजार नहीं किया. इस तरह ये पहली कामयाबी हासिल की. गुलशन गौहर ने उबैद लेफ्टी आउट. और इस गेंद को ऊंचा खेले, मिसक्यूड है. गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आने की कोशिश, नीचे आकर बड़ा शानदार कैच. इस तरह बहादुर अपनी पहली ही गेंद पे विकेट लेने में कामयाब हुए. तैमूर मिर्जा भी खुश दिखाई दे रहे हैं. उस्मान जान 34 रन बनाकर आउट 11 गेंदों पर with 4 sixes at a strike rate of 304.56.
इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक, क्या इनफ कनेक्शन है कि गेंद बाहर ट्रेवल करे? अंदर ही है। ओ क्या रिबाउंड कैच लिया। जी हाँ, एक फील्डर से गेंद छूटी, दूसरे ने काम तमाम किया। शानदार कैचिंग। इम्तियाज इम्ती 4 गेंदें खेल गए, खाता भी नहीं खोला, नुकसानदेह साबित हुए कराची नाइट्स के लिए। आखिरी इनिंग्स की और बहुत अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। और ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप किया, अब रन आउट शांत करे आए और रन आउट करने में कामयाब हो गए। अंपायर ने फौरन उंगली फजा में बुलंद की। इस तरह 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 90। 6 ओवर्स के बाद 3 विकेट के नुकसान पर ओवरऑल लीड हो गई 83 की। 84 का टारगेट है गुलशन के सामने। The last innings, and it's going to be a thrilling one. None other than Taimur Mirza is making his way to the middle. So it's the first ball of the new innings as Bahadur lefty will be on a strike here. He goes for it, full shot. Has he got enough on that? Yes, he has. That has gone way over the boundary, well connected. What a start for Gulshan Kaur. He goes for it, beautifully picked up. And 6 more to his name. What a start that is. 12 runs of the first 2 balls. 2 different shots. He goes for it. Good swing of the bat. He has found the placement to pick up a boundary. Goes straight, goes high. Someone is getting in under the ball and is taken. Good catch. Good catch. It's Zubaid lefty who covered a lot of ground. He was very calm, very cool. And it's a big wicket. So cameo is over. It's high in the air. He hasn't got the timing right. He is in trouble. Will this be taken? Oh, good catch. Terrific take. My word. 2 wickets in 2 balls. 18 for 2 on the board. Will be on hat-trick. Taimur Mirza takes him on and takes him on with absolute flair. What a good shot that is. He cleared the hoardings comfortably. He goes for it. It's hard, it's flat. 6 more. Terrific. Unbelievable. How can you keep quite a player of team's class and team's caliber? He goes for it. Picked it up from after the off stump and smacked it over long on. This is tremendous. Watch out. There will be a lot to come. This time using the pace of the bowler down to fine leg in the vacant region for another boundary. Full toss. And the bowler has got the punishment once again. It's hard and flat. He is unstoppable here. Going for the quick single too. He's trying to retain the strike and quite wisely so. I think they have asked for a referral for that run-out appeal. TV umpire has to make the decision. Finally, we've got the decision. Ilyas Jani has to take a long walk. But Taimur Mirza has launched it. Is it long enough? Oh, that should have been saved. That should have been saved. The fielder had a chance to get it off to pull the ball back, but the ball has gone over the boundary. 4 more. Starting off with a big shot on the leg side, it's into the gap. That's going to race away to the boundary ropes. Taimur Mirza is not stopping. Another big hit. That sounded really good. Once again, the ball is going to disappear into the trees on the leg side. He's showing no mercy whatsoever to any of the bowlers tonight. A full toss, similar direction, a flat hit, another 6. He's cutting loose now. Taimur Mirza, and with that 6, he also come for the superstar of table cricket. 52 off 16, giving himself room, playing it over extra cover. My goodness, how good a shot that is. One bounce into the fence. That's going to be a boundary, and that is it for Gulshan Kauhars. They managed to win this game comfortably by 7 wickets.
Bismillah Rahman Rahim. Good evening, everyone. Here we are at DHA Moin Khan Academy, KTBL Season 3, Johar Jawans versus North Nawabs is today's first game, where Johar Jawans have won the toss and have elected to field first. He's going to take the attack from the far end. Here is the first ball, and batsman had a wild swing at that one, but it goes to keeper as he didn't make any contact. This time batsman has given it a go, and he has given it a go over long on for 6 outside the awesome. That was in his radar, in his arc. Here comes the first 6 of the night. There we go, there we go. He has put that away and put that away over the corner. Another 6 to end the over. There we go again. But he pitched it up and it has been tonked away onto the onside. One bounce into the wide mid-on boundary. He edged at one, but there isn't any protection at third man. Ball running away to the boundary for 4. Doesn't matter how they come, as long as they come. Another boundary. Shafi has hit that one in the air. It is coming down towards the long leg. Has it cleared the long leg boundary? Yes, it has. Another 6. Some was Shafi Agha, the captain himself. Look at that. On the legs. And he goes again. It's going to be caught. Fielder placing himself under the ball, and he takes it. He takes it, a very good catch. He took a very good catch, I would have said, and the first wicket goes down. So captain goes. Bowler always play a stubborn kind of a strokes. He got that away onto the onside, down towards the square leg for 4. This time it's coming down towards the fine leg boundary. There isn't anybody down at the fine leg boundary. It has gone for 4 again. This time he's got the connection he desired for. This will give him half a dozen. It's a big blow. Wonderful, wonderful, but the Harper's bowler is on fire. Saddam Shah is back into the attack, and he comes back with a massive wicket of bowler. This time he doesn't connect as he would have liked, and he's been caught to wideish long on. Very good catch and a good comeback by Saddam Shah, who was expensive in his first over. Finally a departure for Hafiz bowler. This time flicked away by A.B. Paro, and he's off the mark with the boundary. KTBL committee is watching this contest. Catch it as a cry. It has gone for 4. Nobody was there. Placed it beautifully. Boundary here to end the over. This time he goes through the covers. It's a very good strike, and it's well stopped. Or is it? No, it hasn't stopped. It's gone for 4. He will go leg side, and he will collect a 6 he was waiting for. Wow. He goes for it. Is it long enough? Yes. Once again, he has cleared the ground by a long, long way. Up goes the arms of umpire. What a batting performance here. Batter length, very full. Will he come back for 2? Will he come back for 2? He slipped. Oh, there could be run out here. Mix up, and at the batting end, run out took place, and he's not happy with his partner. Unfortunate way to get out, but he has to leave the arena. Swing and a miss. And single taken as a result of bye. So good comeback here. So finally the innings has come to an end here. So 88, they managed in their quota of 6 overs. Johar Jawans, 88 is not a bad score as far as format is concerned. And here's the first ball of this innings.
And straight away it is going down towards the fine leg boundary. And there isn't anybody down there, so it's 4. Once again, some serious pace on offer here. This one is going and going all the way at mid-wicket boundary for 6. Now that is just insane. How could you hit that with square leg? Just flicked it. Did not even use his arms at that time. Oh, that's a colossal, humongous. He best that one from that presence. That's a terrific shot, a massive one. Another one goes over corner. Another. Here's this first ball of the second over. It is in the air. Fielder is trying to come under the ball. He has come in and then he caught that one gladly. So the first wicket goes down. Falak gone for 5. It's 23 for 1. Nasir, the captain, is taking strike and he has hit it in the air. Fielder is paddling back a bit and he took a very good catch. Another wicket goes down. So 2 wickets in the same over. Bowler doing a terrific stuff here. That was a simple catch. Nasir walking back for a duck. But batsman now replied him with a beautiful shot. He pulled that away. Front of square or backward of square, I reckon. Down to the boundary for 4. Oh ho ho. What is that? What is that? That's a biggie. Another 6. This is in the air. He pelted that one straight down the ground. Right below our commentary position 6. A proper bazooka. Down he goes. Mid-wicket tried his level best to get around, but he couldn't. 4 more. Runs coming thick and fast here. Pick up shot on the leg side. Once again, this time the ball is going to travel to Journey. What an awesome stroke this is from Basit lefty. Once again, a top shot attempted. Has that gone all the way for 6? Another maximum to Basit lefty. Now bowling to Basit lefty, who has been simply exceptional. Once again, trying to hit it a little too hard. Chance for a fielder. And taken. What an excellent catch this is from the wicketkeeper. He was running backwards. Had to dive in front. Took an excellent catch in the end to get rid of Basit. So Basit lefty has been parried. He's going to walk back after scoring 38 of 13 deliveries. And with that, it's 71 for 3 Johar Jamans. Shahid Afridi now bowling his last ball. Once again smashed down the ground. It's into gap. And that has gone all the way for. Wonderful placement this time from the right hand. So all the angles are covered up for the right-hander, who decides to swing. And has he managed to hit it over extra cover? He's falling underneath that. Just couldn't hold on to it. The umpire is going to check, but the ball might have crossed the boundary ropes. Yes, it did. Once again, a pick-up shot on the leg side. How well has he timed that? Just look at the wrist power from Shahrazad on that ball. He goes again on the leg side, and I think he has timed it well enough as well. Yes, he does. So 3 maximums to finish off the innings. And Johar Jamans are going to finish off on 109, getting a lead, getting a valuable lead of 21 runs here in the first innings. Welcome back once again to THS Sports Club, Moin Khan Academy, Karachi. KTPL Season 3 is in full swing. Johar Jamans is taking on. So it's a 21 runs lead picked up by Johar Jamans. So action will continue here in THS Sports Club. So they are 21 runs behind. So innings number 3 is about to begin. Heaved away to the onside. And there's an action. So North Nawab off the mark. And they are off the mark with a single. Big full toss, smashed away to the offside. Will he go all the way? One bounce into the fence for 4. So first ball boundary for Hafiz bowler, and no ball has been signalled. Flick of the wrist. Is it long enough? Not quite taken. Comfortable catch at mid-wicket here. And Shafi is absolutely disappointed. He doesn't want to move. He thought it would go all the way. But he has to depart now from the middle. Saddam again.
Low full toss, smacked away down the ground. One bounce into the fence for 4. Lovely shot and a much needed boundary. He goes for it. It's hard, it's flat. Nobody's out there. And once again, he picked the same region. Consecutive boundaries here for AB Paro. Last ball of the over. He goes for it through the onside. Catch it is a cry. Will this be taken? It's a tough one. Oh, he missed it. Goodness me. Well, he's misjudged it terribly. North Nawabs, they need a couple of huge overs. Full toss. Punished. That is out of the park. What a good blow that is. Full toss. Ideal height for AB Paro. Outside edge gone. Caught behind. No doubt whatsoever. Finger goes up. Massive deflection. And it's a huge wicket. So the dangerous bowler this time goes for just 7 of 5 deliveries. Just don't let the batter get underneath like that. How long has that gone? I think it's 1 bounce 4. He has decided to hit that big. Has he cleared the fielder at long? Oh, just by the barest of margin. And with that 650 also comes up for North Nawabs. Pretty packed leg side field. Starts off with a full toss. Hit away on the offside. It's a flat hit. Even the fielder at long off couldn't take that one. So a boundary to start the over with. A leg delivery. Swung it as hard as possible and he's going to get 6 runs for that. And it was dropped in the crowd as well. For the team. That was a full toss. Once again trying to hit that a little too hard down the leg side and it's going to be a run out. It was a slow and low throw which finally managed to hit the stumps. Third wicket has now been done. North Nawabs are 80 for 3 with Yahya Khan walking back after scoring just 9. Has he knocked him over? Yes, he has. Just get the feeling it was the bat who hit the stumps. Because the ball was well outside the off stump, but it's a wicket nevertheless for George Javans. Zain Pathan, 0. Low full toss, hit away on the leg side. It's in the air. Square leg fielder is trying to get it on, but he's not going to get there. A boundary, a very crucial boundary indeed for the batting side. Last ball of the innings coming up. North Nawab lead by 64. It's going to be a wide. They're running for it. We might see another run out. It's going to be AB Paro. Yeah, he's going to be dismissed. AB Paro walks back after scoring well-constructed 40 of just 19 deliveries. It's 85 for 5. Yeah, he has changed his angle now coming around the wicket. It's up in the air. There is a fielder at deep extra cover, but still he's very far away from it. The point fielder was running backwards. Couldn't get to the ball. They're going to get 2 runs. In fact, yes, you're going to witness another run. It's all happening in this last over. So 2 runs conceded of the last ball, then a wicket fell. The North Nawabs are going to finish their second innings on 89 for 5. Well, they scored 88 in the first innings. Could just score 1 more run in the second. And technically means that now they lead by just 68 runs. George Javans' openers are out there to give it a go. 71 is what their target is. Shah Raza, who batted supremely well in the first innings. Here's the first ball of the final innings of this match. And he did throw kitchen sinks at that one. Third man was there inside the circle. I think it dropped just in front of him. But that was a good ball. Batsman chased that one. Oh, it is in the air. Fielder is under the ball and takes it quite easily. What a beauty of a ball. Batsman didn't have any clue at that one. Basit has to make his walk back. And he has hooked it away. And hooked it away beautifully round the corner, down to the long leg boundary for 4. This is in the air. Fielder is under the ball. Could be caught. Could be caught. It is caught. It is caught. Another wicket goes down. Will it go right down to the wire? Will it be a cliffhanger? 2 wickets in the first over, Danish. Shah Raza goes for 1 and the second wicket falls. This one is driven away. Almost drilled away towards the boundary for 4.
He edged that one. Fielder is under the ball. Irshad gets another one. We are watching tremendous piece of bowling from Irshad. He held on to it really well. Syed Nasser will have to go back for 10 of 8 deliveries. But this time batsman has lofted him, but lofted him straight into the hands of the fielder. As I was saying, can he get another one? He got another one. Oh, he's knocked him over. Try to go for the big heave, left-hander. Another one bites the dust. Jawans are in all sorts of trouble, and the bowling side are turning it on. They're very young, the crease. It's high in the air. Has he got enough legs on it? I think it has. It's a very good connection. Oh, right in the block hole. This is what you can do with that type of delivery. There's a chance of a run out. Oh my word! Another one goes. Well, it's all happening, and Jawans are going nowhere at the moment. That's high. It should be taken now. Paula is getting underneath, a little bit of collision, almost a collision, but in the end the catch has been completed. So wicket for Sairam, a reward of some very good accuracy and very good, I would say, experimentation in this over. 7 to his name, 29 for 7. Swing and a miss. This time within the stumps. How could we run out here? Yes, no, yes, no. Asif Farhan has a chance, finally a run out here. So wicket falls, Farman has to walk back. Lots of confusion. The wicketkeeper produced a throw and the run out happened at the bowler's end. Well, there was a comedy of errors in the middle between both of the batters. Farman goes for one. Lost the toss, been asked to bat first, and batted well they did. In the first innings, made 88 runs. And then the opposition got a lead as well of 21 runs. And that's it. It's all over. North Nawabs have been able to register their first victory in their first game against Johor Jawans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you wherever you are. Another exciting night ahead of us where DHA Dabangs are taking on Malir Malangs for match 6, night 4 of the Karachi Table Premier League season 3. As this has been done and dusted, DHA Dabangs and Captain Yasser Mushtaq has decided both first. Looks as if it's going to be Umri Pacer to start the proceedings. This guy's got some serious pace to work with. Back with a point. Extra cover, mid-off, mid-on. And here goes Umri. Nicely bowled, good delivery to start with. They'll get off the mark, but it wasn't a convincing manner. Full toss, wrong line, it's high in the air, it's going towards the boundary, and it's gone. It's gone for 4, one bounce into the boundary, using all the pace of Umri Pacer that he has. It was a poor delivery, wasn't that? And this time it's a proper flake, but it's one bounce for again. So didn't get the desired result, the batter, but still it's good enough to earn him a boundary. Oh, look at that. It's high in the air. Has it traveled the distance? Yes, yes! First 6 of the night. What a way to finish the first over. It's been an expensive one from Umari. He's been taken to the cleaners. And there you go. Length again. But he has protection for no use.
I think it's crossed the boundary for 4. Oh, where has that gone? Pick the bones out of that! That has gone many a miles, and it's a no ball too! Oh my gosh! There you go, it's a free hit anyways. It's miles in the air. And oh, eventually it was a tantalizing one for the fielder, but it goes all the way in the end. Pathan's on fire. Oh, there we go. He stood and delivered all the way at wide on bound for 6. Oh, well bowled. Very well bowled. As we were talking about that, they got to do something. The first wicket goes down. Very full delivery. And again, it has some pace on it. 63 for 1 in the 4th over. And he straight away announced that he's there and put that away over mid-wicket for a 6. Another one, but this time it could be caught. And it is taken by man at the cow corner. It was in the air for a long while. Took that one very cleanly and gladly as well. Clean goes for 6. 69 for 2. And the beautiful trophy that they all have been fighting for. This is in the air. Fielder is under the ball. Ball is coming down. And he kept his cool. Then took that one very easily and nicely at the end. Another wicket goes down. So bowling side making a very good comeback. Not only they are keeping them quiet now, but also picking up regular wickets. Awais Pathan goes for none. 3 down for 72 now. Fine leg did pretty well. To stop, and it could be a run out or not. Let's see. I think umpire's going to refer it to the 3rd umpire. Yes, he has referred that one to the 3rd umpire. Let's see what will be his verdict about this one. Yes, he's gone by a good margin. It's you need from any bowler. Wickets are tumbling regularly now, 73 for 4. Yes, he has hit that and hit that well. That's exactly what the doctor ordered for him, and he smashed a 6. He goes again. Even better and even bigger. Here it comes down outside the boundary. 2 6s in a row. Last ball of the innings coming up if he doesn't bowl wide. And this has been spanked and spanked well and way over deep forward square leg for 6. What a way to finish the innings. They'll be very happy with the score. 9-3 for 4 in 6 overs. Here we go, MG. वेरी वेल बोल्ड. पहली गेंद यॉर्कर लैंड पे थी. छोटा विकी. वकास के पास कोई जवाब नहीं था. इस बार प्रॉपर कनेक्शन. फील्डर वहां मौजूद नहीं. 4 रन हासिल किए छोटा विकी ने. फुल टॉस गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया छोटा विकी ने और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर. शानदार छक्का. इंक्लोजर में गेंद गई. खुर्रम चकवाल का प्रॉपर कनेक्शन. गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. जोरदार छक्का. खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया. एक और प्रॉपर कनेक्शन. खुर्रम चकवाल एक और. खुर्रम चकवाल की क्या ही बात है. मिलाकर देते हैं. एक और 6 हासिल किया. अली गेंद करेंगे. और अच्छा कनेक्शन यहां पर खुर्रम चकवाल का. छक्कों की हैट्रिक यहां खुर्रम चकवाल की जानिब से. शाइकी ने क्रिकेट खुशी से झूम उठे. छोटा अली को बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं यहां खुर्रम चकवाल. इस बार छोटा विकी का ये कनेक्शन. गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर. एक और छक्का. एक्सपेंसिव ओवर अली छोटा का जिसमें 4 छक्के लगे. और इस बार छोटा विकी के आउट होने का खतरा हो सकता है. नहीं हो सकता है क्योंकि छोटा विकी है. और गेंद पहुंचाई सामने बाउंड्री के बाहर. एक और छक्का. इतनी दूर और इतनी ऊंची गई कि किसी को नजर ना आई.
और जबरदस्त कनेक्शन, छोटा विकी का एक और छक्का, तो फिर छक्कों की बारिश यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन दबंग की जानिब से दबंग बैटिंग। और इस बार आउट हो सकते हैं क्योंकि गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है, देखना होगा। कैच लेने में कामयाब, मच नीडेड विकेट फॉर मली मलंग। छोटा विकी आउट। 30 रन, 11 गेंदें, 1 चौका और 4 छक्के। और आते ही उमर ने अपने इरादे जाहिर किए, पहली गेंद पे 16 छक्का और इस तरह जबरदस्त बैटिंग जारी यहां डीएचए दबंग की। He goes over extra cover, typical of Chakwal. And that travel could at least 20 meters, even beyond boundary ropes. This time he goes leg side. It's high, it's handsome, and it's all the way over square leg. Oh, it's a leading edge, and someone should get under it. Oh my word, it's Chota Ali who's made the mess of it. That could be very costly, I can tell you, Zishan. Down the leg side, a pickup shot that might go all the way for 6. Yes, it does. That has landed into the pavilion there on the first floor, just behind the commentary box. Let's see कि क्या होता है, लेकिन I hope for the best for this evening. Yes, DHA दबंग से नोमान हबीब सपोर्ट कर रहे हैं। वेल छक्के और चौकों की बरसात हो रही है, एक लंबा छक्का डेफिनेटली, और यही टेप बॉल की खूबसूरती है कि 6s और 4s हमें बड़े देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत इवेंट हो रहा है। जी, ने ऑर्गेनाइज किया, उनके हवाले से भी कहे। सारे जो लोग हैं, उन सब लोगों के लिए जो मेरी बेस्ट विशेस है कि आप लोगों से भी ऐसे इवेंट हो, प्लीज इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि ये लोगों का जो टेम्परामेंट बना रहे। He's going to come around the wicket first up, Obed. It's a flat hit, and that is going to way over the boundary ropes over long on. What a start to this over by Khurram Chakwal. A full toss, there to be hit, and he's going to punish them all day along. Khurram Chakwal, what a way to bring his half century. 50 of just 16 balls. Still 3 balls remaining. Fuller. Look at that bat swing and look at that distance. The ball has covered. That took an eternity to come down. The ball, this time coming from the bat of Omar. Last ball of the innings coming up. He's disappointed. He has struck it nicely on the onside, but there is a fielder out there. He's charging for the second run. And they're going to get there in the end. So a perfect end to the innings for DHA Dabangs. They managed to score 24 in the last over. They have got a very healthy lead of 40 runs, and they're going to finish off on 133 for the loss of just 1 wicket. Welcome back to DHA Sports Club, Moin Khan Academy, and the great match that's going on between DHA Dabangs and Mali Malangs, and plenty of fireworks we saw as DHA Dabangs posted a massive score. They got a lead of 40 odd runs. That's a huge lead. Get the trial runs and then get the lead. This is very important for them to win because they want to have that start again. First ball. He goes for it and beats mid off. This could be a boundary. He tried his best, but certainly it wasn't the best of efforts. Has he nicked it? Has he nicked it? Yes, he knows it. He's walking back. The wicketkeeper made no mistake whatsoever. And it's a huge blow. DK is gone. 4 for 1. Omar again. Pulled away. And could be on. Straight to the fielder. Goodness me. 2 wickets in 2 ball, and Umar is on a hat-trick here. Kaleem has to walk back. He just came and went. Hat-trick ball. Chance. That was off the edge, I reckon. Beat the fielder, and ball goes for 4. Big shot. Is it long enough? It's high. It's handsome. And it's launched it over the rope. 6 to finish the over. Nice shot. Has he found the boundary? That's well played. No protection. It's high in the air. He has been deceived. Should be taken. Gone. Not to catch. Slight change in pace here. Well foxed. And Mukhtiar has to walk back. और
और इस बार मिमरान का जोरदार छक्का, यहां पर मच नीडेड बाउंड्री फॉर मलीर मलंग्स। और जैसे ये जुहैर साहब का जज्बा देखने वाला है पूरा इस टूर्नामेंट में, और उनकी जो क्रिकेट के लिए लव है, और स्पेशली यूबीएल भी आपको पता है इसकी हिस्ट्री है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हम टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं अपने लेवल पे वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, ये सब जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पावर हिटिंग के लिए, क्योंकि आप क्रिकेट समझते हैं क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी बिल्कुल, पावर हिटिंग एक और छक्का लग गया, ये देखें अभी आपसे बात हो रही थी। जी जी बहुत ही दिलकश शॉट एक दफ़ा, और वो बहुत ज़्यादा फॉलो भी होती थी। नाज़ाबाद सुपर कप था, कराची जिमखाना का भी टूर्नामेंट था, तो उस लिहाज से ये एक और टूर्नामेंट क्रिएट हो रहा है और मेरा ख्याल है कि कई साल चलता रहेगा और कई साल एंटरटेन करेगा। एक और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं आप लोग जो कर रहे हैं, इससे आई फील दैट दिस विल एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ टैलेंट इन द कंट्री। सो आई होप कि इस तरह के और इवेंट्स हों, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Lead by some good runs. This is going, and it's gone out of here. What a magnificent blow. And welcome FS. And he swings this away. Fielder does try a lot, but it doesn't succeed. It has gone for 4. Runs everywhere. Got that in the air. Miles, who's coming under the ball. Long off. Oh! He juggled with the ball, and ball goes to the boundary as well. But he played magnificently well. Got that away. Over backwards leg. 6 more. Runs are coming thick and fast. 2 balls to be bowled. He has lofted it, and lofted it in the stands or on the grass bank. What a terrific 6. What an amazing batting performance. Wicketkeeper collected the last ball behind the wicket because batsman didn't get the bat on that one. 112 for 3, where they finished their second innings, and Imran remained not out at 73. Ubaid not out at 12. I think they did a decent job. So 73 is going to be the target for DHA Dabangs. What a magnificent batting performance it was from Ali Malang, especially in the last 3 overs. Still remember they were 34-3 in the first 3, but magnificent batting performance by the lower order, and they made sure that they now have given a very respectable target to the opposition. So Khurram Chakwal is on strike. Majid Goli is all set to bowl the first ball of this run chase. It was a length delivery which was there to be hit on the leg side, just couldn't connect it. Short delivery, chance. Is it taken? Yes, it is. The finger has gone up. What a pin start this is from Ali Maram. It's Khurram Chakwal we are talking about, who has been dismissed for a duck. Really developed all across Pakistan, and our branch network is also growing, and our penetration in Islamic business is growing. But cricket is better, as I always say, product nahi hoti to promote your brand. That association is 50 years old, and ULME is going to start it all over again with table cricket as the first pilot project. So I'll interrupt you here और अपने viewers को बताते हैं यहाँ पर एक और विकेट गिर गई है. Well, exciting बहुत होता जा रहा है मैच. It's a pickup shot. Has he timed it well enough? There is a fielder who is getting underneath that. Is it going to be taken? It is! It's the third wicket. The third batter has gone to the dugout without troubling the scorer. Outside the off stump, he had a full swing at that. And the fielder is just going to watch the ball sail over his head. First maximum of the innings. And no surprises coming from the bat of Chora Vicky. Full toss, has he knocked him over? Yes, he has! Completely boxed him with a slower one. Majid Goli is on a roll. Chota Vicky, known as Mohammad Waqas Sher, has now been dismissed after scoring 11. It's 17 for 4. Slower one, picked up on the leg side. It's a bit of an anticlimax. That could go all the way for 6. Getting an outside edge. Has that been taken? It is. What an excellent catch by the wicketkeeper. He can do nothing wrong, Majid Goli. It's his 5th wicket already. Darsalan Jamshed came and went, hit a 6 and has now been dismissed. It's 23 for 5. अली नए ओवर के साथ और इस गेंद को ऊंचा खेले, लॉन्ग ऑफ की जानिब, गेंद हवा में, फील्डर के हाथों में, एक और विकेट. बॉलर्स की रात लग रही है यहां पर. 6 खिलाड़ी आउट है 25 रन्स पर.
बैट्समैन ने इस मरतबा ऊंचा खेल दिया इस गेंद को और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के तरफ। फील्डर ने अपने आप को प्लेस किया और बड़ा खूबसूरत कैच। वाओ, जितनी तारीफ करें वो कम है। शानदार कैच लिया, एक और विकेट। आज दबंग बॉलिंग परफॉर्मेंस है मिलियर मलंग्स की इस इनिंग्स में और इस मरतबा बैट्समैन ने गेंद को हिट किया है। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, आ गए और कैच भी ले लिया। एक और विकेट। कोई स्ट्रोक ग्राउंड से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं और फील्डर्स कोई कैच गिराने के लिए तैयार नहीं और 8 खिलाड़ी 27 पे आउट। इस गेंद को ऊंचा खेला, लॉन्ग ऑफ की जानिब जंप किया, लेकिन इस बार बैट्समैन ने कहा भैया कितने कैच करोगे, अब मेरी बारी है। लॉन्ग ऑफ से बाहर छक्का। मैच नीडेड 1। एक और शॉट, बड़े शॉट के लिए पुल किया है और कैच हो सकता है, बल्कि 4 रन के लिए। चौका भी नहीं रोक पाए, कैच भी ड्रॉप किया और इस बार नाराज हैं उबैद। 4 रन मिले और ये देख ग्लूमी फेसेस। और यहाँ ये मैच खत्म हो गया है और खत्म हुआ है मिलियर मलंग्स की फतह के साथ, जिन्होंने 25 रन से ये मुकाबला जीत लिया है। एक आउटस्टैंडिंग कमबैक। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2D, and B2B interactions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. वाह, कितना अमेजिंग जानवर है। चलिए आइए इसके मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मलिक शुएब अमान फ्रॉम तलगंग, जिला चकवाल। अच्छा, और हमें इस जानवर के बारे में कुछ बताएं, कितने का है, कितनी उम्र का है और ये कहाँ से आया है? ये तलगंग अलमान कैटल फार्म जिला चकवाल से रावलपिंडी के पास पड़ता है ना, तो इसकी डिमांड जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपया कर रहे हैं और इधर भी माशाल्लाह अच्छे रिस्पांस आ रहा है। हर जो शौकीन है ना, ज़्यादा कैटल फार्मर वो मांग रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है और अच्छे रेट आ रहे हैं। बाकी जो नसीब में होगा वही होगा। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. It's 2 a.m. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to every one of you who are watching us from different parts of the world. Once again, we welcome you for an exciting contest where Gulshan Gohars are taking on Liari Legends in match number 8
of this KTPL Season 3. The news from the center has been that Asan Chitta, the captain of Gulshan Gohars, have won the toss and has opted to bowl first. So here we go as match 8 is just about going to get underway. Oh, Lusner to start the proceedings by the quick bowler down the leg side. And this time he goes through the offside, which was there and length was there, and he puts it away in style. This time it's launched. It's gone many a miles and safely over the advertising hoardings. First 6 of the night, and it's a good one. This time he goes down the ground, all along the carpet. Kayat is a tie ball, but we have seen some great stuff. This time he goes leg side and beats fine leg and goes into the boundary for 4. So reigning boundaries in the first over. He goes high. Somebody getting underneath it. It's a very good catch at short third. It was a sky, it was miscued, went across the line, played away from the body and pays the price, does Nizar. 24 for 1. Flicked away off the hip and it's gone all the way to the boundary for 4. This time he goes through the offside. That's a beauty of a stroke. He gave it a real thump. Over wideish mid-off. It's a phenomenal achievement. Goes again to the offside. It's a flat one. It's Daud's Carnival here in Karachi. And have a look at that for a stroke. Unbelievable. It's 1 bounce 4, but it has been picked and just dispatched out of its presence. And there you go, bowls a full toss and he receives a thump, and that is one of the best catches of this tournament. And excellently catched by the fielder. Ashraf Pathan goes for 22 of 7 deliveries. He bowls another full toss. Always full toss is not going to yield fruit. This time it's been thumped down the ground for the maximum. Representing Leari Legends. This time he has cut that away. Fielder is trying to get under. He jumped in the air but couldn't quite get his hands into that one. Umpire raised his arms. It means that has gone for 6. It is in the air. Who's going to take it? Fielder is placing himself under the ball and he took that one beautifully, or very nicely, and one would say easily as well. So the 3rd wicket goes down. It's in the air. He is going to be out. It is. Wicket-keeper comes forward and grabs that one nicely. And finally, he gave his wicket away as well. He hit it in the air. Wicket-keeper again in business. Yes, he's grabbing another catch gladly, gleefully. And another wicket goes down. And Mars suddenly is on a hat-trick. Saeed Bilal just came and went. Golden duck to his name, 70 for 5. He hits that away and hits that away well. He picked up a 6 here and much needed one as well. It is in the air, but it really cleared the man at covers and it racing away to the extra covers boundary for 4 runs. He has hit that away and hit that away for a massive 6. That's a good shot right out of the mid of the bat. Shaban has driven that away. That's a beautiful shot. It has gone down to the boundary and then clatters it 4 runs. What a beauty of a shot. 26 runs the last over, including 7 extras. 105 for 5. What they have scored in their allotted 6 overs. दोनों बैट्समैन तैयार हैं इनिंग्स का आगाज करने के लिए। 105 रन्स यहाँ पे स्कोर करने में कामयाब हुए लियारी लेजेंड्स के बैट्समैन। राना मौसन फार एंड से पहली बॉल लेकर
और पहली गेंद को स्विंग कर दिया लॉन्ग लेग और फाइन लेग के दरमियान और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। अगली गेंद एक और ऊंचा स्ट्रोक और गेंद एक बार फिर बाउंड्री से बाहर। एक खूबसूरत जोरदार और बड़ा छक्का इस मर्तबा बहादुर का। एक और ऊंचा शॉट मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का, छक्कों की हैट्रिक। राना मोहसिन पे तमाम दबाव। इस मर्तबा खूबसूरत शॉट, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। पहली गेंद तैमूर मिर्जा ने कहा मैं यहां पहुंच चुका हूं नीचे मोइन खान एकेडमी में, गेंद ग्राउंड से बाहर, छक्का। इस गेंद को तैमूर मिर्जा ने स्विंग किया वाइड ऑफ मिड बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। तैमूर मिर्जा का ऊंचा लंबा खूबसूरत शॉट। क्या खूबसूरत दिलकश अंदाज में गेंद को सैर आई है मिलो दूर, बहुत ही दूर, 6 रन के लिए। 59 रन हो चुके हैं। एक और बड़ा जोरदार खूबसूरत शॉट। तैमूर मिर्जा हैविंग अ गो एट एवरीथिंग। अब रन्स उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक बन रहे हैं। इस गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड पे बहादुर लेफ्टी ने और नतीजा सिर्फ एक होगा और वो है छक्का। Slower one, picked up on the leg side. It's up in the air. There is a fielder who is trying to need that. He takes it. They needed that and they have made a very strong breakthrough. Taimoor Mirza has now been dismissed. Good ball once again. Was an inside air or has it knocked the stumps? Yes, he has. Well, there was definitely a bat involved, but the ball might have rolled back onto the off stump. 2 wickets now in 2 balls for Suhail. Playing a forward defensive stroke will get just a single. There is a shy at the bowler's end. They might collect an extra run on the overthrow. This time there might be an opportunity at the wicketkeeper's end. I think he has been dismissed. Yes, the finger has been raised already. It's Ilyas who is going to walk back to the pavilion. Going to start his second over. He gave away 28 runs of the first over of the innings. It's an outside edge that has been taken. What an interesting passage of play this has been for Real Legends. Tell you what, it's Bahadur lefty who has now been dismissed. Fuller getting a thickish outside edge. It's going to go past the wicketkeeper and then the short third. A very fortunate boundary this for Shiraz. Slow one picked up on the leg side. It's up in the air. There is a fielder who was initially watching the ball. Well, he is still watching, but this time over the boundary ropes. Short. It has been pulled. Once again, it's in the air. Has it got the distance? I think it has. Just by the barest of margin, it went over the head of the fielder at long on. This time he has hit that over extra cover. Has he timed it well enough? Well, he's still running. There is a fielder who's getting underneath that. And there was no communication whatsoever. I think it was Qari Hamidullah and the other fielder. And they're going to collect another run on the overthrow. Oh my goodness, they're coming back for the other one. There might be a chance for a run out at the bowler's end. It's all happening. Finally they have managed to run a batter out. Another wicket has gone down, the 5th of the night for Gulshan Gohar. Shiraz Ali. It's a full toss. Picked away on the leg side. That's going to go one bound to the fence. Arju, the new batter in, just facing his first delivery, just helping the ball on its way down the leg side. So 19 runs coming in the last over from Shah Jahan. Gulshan Gohar are going to end their innings on 114 for 5. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूबीएल अमीन केटीपीएल सीजन 3 2023 और दूसरी इनिंग अब से थोड़ी देर बाद डीएचए क्रिकेट एकेडमी मोइन खान पर शुरू होने जा रही है। और पहली ही गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड पर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई काफी देर हवा में रही और बहुत ही उम्दा कैच। बड़ा उम्दा कैच, आसान नहीं है अंडर द नाइट स्काइज इस तरह के कैच पकड़ना। पहला नुकसान यहां पर लियारी लेजेंड्स को।
दूसरा ओवर, पिछले कदम पर जाकर गेंद को उठा दिया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और कैच मुकम्मल कर लिया उन्होंने। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बैट्समैन को विकेट जरूर दी मगर अच्छा बाउंस करने में कामयाब हुए। इस तरह दूसरी विकेट गिर गई है और स्कोर है महज 13। और इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या फिर, और ये अंपायर का इशारा कि छक्का। अशरफ लेफ्टी, और इस बार गेंद को उठा दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल लगता है कि इन्होंने याया हुसैनी की बात फौरन सुनी और कुछ मैक्सवेल की रूह इनके अंदर जो है वो आई। और इस बार 4 रन होंगे, जी बिल्कुल 4 रन। तो पहली 2 गेंदों पर 10 रन और यही चाहिए लियारी लेजेंड्स को। लियारी लेजेंड्स 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अशरफ लेफ्टी की गेंद को उठा दिया है, फील्डर गेंद के नीचे है और उन्होंने इस कैच को मुकम्मल कर लिया। तो तीसरा नुकसान लियारी लेजेंड्स को 2.5 के खेल में 33, 3 विकेटों के नुकसान पर। Yeah, they got to keep on trying. This time he thrashes it. It went through the covers. And I think it's gone all the way. Yes, it has. Nicely played. He split the field through the side and got it in the gap for a boundary. And this time it's high in the air. Somebody should get underneath it. Oh, he's dropped it. It was easy as they come in my opinion because he's got underneath it and in the end just couldn't grab it. Good shot, straight down the ground. Is it long? Yes, it's a gigantic one. What a blow that is. Tremendous. Well, that is colossal. It's out of here. It had everything. He goes again. That's another one. 2-2. This is the momentum they need. This time on the rise. Outside the off stump. He got the weight. What a shot that is. And flick that away over square leg into the boundary after a couple of bounces. Vacant space available at a square leg. Lovely flick shot from Shubhan. This time he gets the connection, but we had to wait ages to get that. He does well to get it away for a boundary. And this time it was a quicker one. And they've scampered through for a single, but they will not be able to complete it as we see a run-up at the end. So Shaban has to take a long walk back to the dressing room as he's been run out. Oh, another big heave, but he gets beaten altogether. What an eventful this over has been. Great bowling. Foxed him and dot ball to end the over. They've managed only 75 in their quota of 6 overs, which means that virtually they have made 66. It's not a big target for Gulshan Gohar, considering the fact that they have got a very strong batting lineup, especially with the likes of Taimur Mirza and Bahadur Lefty, who are going to be opening the batting. It's just 67 runs tonight, Kainath, and they have done it in the past. They have done it on 2 occasions in the first 2 games. Looks like it's going to be another easy victory for Gulshan Gohar's left arm seam is going to start the proceedings. Swung away on the leg side. It's all along the turf and some misfeed from the field at my leg. They will just get 1-1. He's going to come around the wicket first up. Starts off with a short delivery that has been dispatched on the leg side. And it's a flat 6 from Taimur Mirza. Another pickup shot. This time he has managed to hit that in the long on direction and way over the boundary ropes as well. And getting it outside the mark. An exceptional shot, showing his dominance. He needs to come back well here, Rana Mohsin. A slow delivery, chance for the fielder at short third, and that has been taken in the third attempt. It's the chairman of KTBL, Zuhair Nasir, who completes that catch, and they get a big wicket of Taimur Mirza. Big swing on the leg side, it's up in the air, and it's over the boundary ropes. What a hit of the very first ball, this from Ilyas Jani. He's going to bowl to the left-hander, Bahadur Lefty, once again coming around wicket. Big swing on the leg side, it's up in the air and it's into the stands. He doesn't need second invitation, especially when the ball is pitched up.
Swung away on the leg side, just helping the ball on its way. And I think that has travelled to Journey as well. Yes, the arms are aloft from the on-field umpire. Not good bowling. This from Sohail lefty. Last ball of the over coming up. Once again, a full swing over long gone. He's not going anywhere behind the lefty. He's going to stay there till the end, depositing the ball in the dugout. In fact, in the pavilion, I believe. And there you go. He's hit that hard. And it's one bounce 4. And that's another one in the air. The batter is also not managing it to connect out of the screws. But this time around, the pace of the bowler has carried the ball to over 6. Would you believe that? Outside edge, and finally he gets one in his favor, does Shah Jahan. Shah is well respected by all the ball players. Outside the off stump this time, spanked away, one bounce 4. Just to the left of mid-off, nicely executed stroke. And this match is over. They have won that match comfortably by lots of wickets. So here we are, welcome to every one of you. With match number 7, North Nawabs are taking on Clifton Populars. Live all the way from DJ Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi. And the news from the center is that Clifton Populars have won the toss and opted to bat first. So here we are, the umpires are ready, players are ready, and the umpire says, let's play. Here tonight against Jawans. Starts off with a short delivery that has been put away on the leg side. There is fielder out there. They'll just get a selfie of the mark with. Yeah, we'll be feeling good, will we, Fad? And there you go, this time it's Asad Shah, who has taken serious bit of punishment, and it's been hooked away. But no half scissors from Asad Shah. Another short pitch delivery that has been nailed on the leg side. That could be another 6. Well, well, well. This time it's in the air. It smiles in the air. Somebody getting underneath it. But no one is there actually. It's gone in the gap for 4. Look at that. This is not going to help his cause. Poor line, poor length, and pays the price every time. And let's go together, says Fahad to Sehram. Wow, in the arc and away it went, a country mile. He drops his another shot, this time over, long gone. That's a flat hit. Well, they're just dealing in maximum so far, both these overs. It's shot, it's pulled. See you later. He says it to the ball. That's the 3rd of the over. With 1 ball still remaining in the 2nd over. And that ball too has been sent into those trees, I would say. Oh, what a strike. What a way to end the over. Fahad is now on strike and we can expect anything from him. Boom shakalaka! Away wicket. Unstoppable Fahad. But he does, but this time it's Asad, it's the captain, gets a full toss and sends it way back into the stands, into the members. असद शाह 360 ग्राउंड से बाहर फेंका गेंद को जोरदार छक्का फहद मियां चुन्नू का इस बार अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए एफएमसी फहद मियां चुन्नू वेरी वेल प्लेड on just 14 balls Danish Anis 360 Asad Shah on the toes जबरदस्त हिट 4 रन्स के लिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक है
असद शाह, एक और जोरदार हिट असद की बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का क्लिफ्टन पॉपुलर का, डगआउट खुश। लेकिन इस बार जहां हिट करने गए थे वहीं हिट किया गेंद को और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। एक और जोरदार छक्का 360 असद शाह का। फुल टॉस गेंद और जैसा उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ही किया असद शाह ने। एक और जोरदार छक्का अंपायर देखना चाह रहे हैं, लेकिन यहां से ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। दानिश यहाँ पास कर रहे हैं कि बॉल जी बिल्कुल। असद शाह अपनी निफ सेंचुरी 15 गेंदों पे मुकम्मल कर चुके। 14 गेंदों पे फाद मियां चुन्नू ने मुकम्मल की। एक और जोरदार हिट असद शाह इन फुल फ्लो। एक और जोरदार छक्का कैप्टन क्लिफ्टन पॉपुलर 360 का। एक और जबरदस्त हिट फाद मियां चुन्नू, एक और छक्का दानिश अनीस। क्या हो रहा है यहाँ पर नसीम राजपूत? एक्स्ट्रा कवर पर जोरदार छक्का असद शाह का। व्हाट अ शॉट। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग और इस बार एक और शानदार स्ट्रोक फाद मियां चुन्नू का। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर की गई और यूबीएल अमीन सीजन 3 का सबसे बड़ा स्कोर क्लिफ्टन पॉपुलर अब तक करने में कामयाब हुए। 141 फॉर नो लॉस। North Nawab, they just kept watching the carnage. Brilliant shots they played and played with real dominance. Goes for it. What a good blow that is. Into the stands. What a perfect start. His Hafiz Fuller has announced his presence. Goes for it. Pulled away. Has beaten the man. Could be a boundary. It is a boundary. That's the start they were looking for. Well played. He goes for it. That's the connection. He loved it. What a shot that is. Hafiz Fuller is off to a flyer here. Spanked away the offside. He's got the elevation and he's found the boundary. Lovely shot. Has picked up his first boundary, 7 of the over so far. Big full toss. He smoked it. He smoked it hard. Over the rope for 6 more. Oh, look at him. Look at him. He's absolutely jubilant. It's high, it's handsome. What a good strike. What a tremendous strike. My word, that is enormous. One of the biggest sixes of the tournament. Outside edge gone, caught behind. No doubt whatsoever. It's a huge wicket. Hafiz Fuller went for the big shot again. Massive deflection. And wicketkeeper did the rest. यूबीएल इटसेल्फ क्रिकेट को लेकर कितना नहीं, यूबीएल तो बहुत पैशनेट है। आपने शायद सुना हो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में। और यहाँ पर विकेट गिर गई है, हम व्यूअर्स को बताते हैं। बहुत जबरदस्त क्रिकेट जारी है और विकेट्स गिर रहे हैं। Shafi Agha, the latest victim, got out. So a couple of wickets falls in the short space of time. He goes for it to the outside edge. And it's taken. Wicket number 3 down of the over. What's happening here? Mansoor has been very penetrative. And now he's looking very ominous and lethal. He has taken the wicket number 3 in this over. It's a hat-trick ball, don't forget that. It goes for it, swing of the bat. Could be out, gone! It's a hat-trick! It's a hat-trick for Mansoor. What a performance. 4 wickets in the over. Would you believe it? Oh, what we are watching, what we are seeing. He goes for naught. 4 down for 44. In the slot over the extra cover, that is going to go straight into the hand of that fielder. Initially it was all about maximum, now they have started to pick up wickets. And the batting line of North Nawabs is falling like a house of cards here. And there you go, it smiles in the air once again. Somebody getting underneath it. And what happened? I think he's pouched it safely. Very good catch in the end. He's going to walk back to the pavilion without even troubling the scorers. And Pathan, it's 48 for 6. Swung away on the right side, it's in the air. And it's way past the fielder at square leg. That's going to run away for 4.
And how about that? It's long. And where is it going? It's going out of the ground. What a stroke that is, Zishan. That's the power of Pathan. Not many would have been able to hit that ball on death length. And full toss has been belted into the members. Wow. That's in the air again. How far is it that? I think it's one bounce four. Or has it carried all the way? It's gone all the way. 3 sixes of 3 deliveries. What a way to finish the over. Nicely bowled and nicely played. But unfortunately, he's picked out the man at the deep mid-off. Another wicket goes down for North Nawabs. Their 7th of the night. Asif Pathan's cameo comes to an end. 25 of 8 for him tonight. So it's Saram, the new coming batter, who is known for his bowling more than his batting. But he can hold the bat. Gets a dot going on to finish the innings. So it's 82 for 7 what they achieve in their 6 overs, which means that the lead is going to be 59 runs. वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से। और बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर किया है क्लिफ्टन की टीम ने पहली इनिंग्स में, और 59 रन के करीब उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बर्तरी हासिल की है। बेहतर गेंद थी जिसे खेल दिया है फाइन लेग की जानिब। फील्डर ने गेंद को बाउंड्री के आधे रास्ते में रोका और पहला रन इस इनिंग्स का। जी हाँ, और फार ने पहली गेंद को लिफ्ट कर दिया है खूबसूरती के साथ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी, छक्का। और इस मरतबा ऊंचा और जोरदार शॉट, गेंद हवा से बातें करती हुई ग्राउंड से बाहर जाकर गिरी, एक और खूबसूरत छक्का। इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट देखने में बनता है, हल्का सा इनसाइड आउट ओवर डीप एक्स्ट्रा कवर्स, बहुत ही उम्दा शॉट। बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। इस मरतबा आउटसाइड द ऑफ स्टंप विड्थ मिली और गेंद को ब्लास्ट कर दिया ऑफ साइड में। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ा खूबसूरत शॉट, 1 बाउंस इनटू द कवर्स बाउंड्री, एक और चौका। और इस मरतबा गेंद को ऑन द अप बेल्ट कर दिया है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, और इस खातून का जज्बा देखें, लुक एट दैट। इस पर तो बड़ा एक्सेप्शनल शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का, एक और शॉट, और एक तो फिर गेंद ट्रेवल कर गई बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। और इस गेंद को खूबसूरती के साथ हिट किया। गो के फील्डर मौजूद थे मगर नस्ल गेंद के ऊपर से गुजरी और बाउंड्री से बाहर जा गिरी, एक और छक्का। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और टेप बॉल की क्रिकेट हमारे वक्तों में भी होती थी, लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी। और मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट की प्रोमोशन के लिए बेस्ट चीज़ है। डेफिनेटली क्रिकेट की प्रोमोशन के लिए इस लीग का बहुत बड़ा रोल है। क्रिकेट को बड़ा खूबसूरत ग्राउंड इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी लाइटिंग ज़बरदस्त है। और जियो सुपर की टीम को और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त इवेंट करा रहे हैं कि लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नसीम राजपूत साहब ने कई बार इनवाइट ज़रूर किया, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं खैर हाजिर ही रहा हूँ। लेकिन आज आने का जो है इत्तेफाक हुआ, और सबसे पहले नसीम भाई को मैंने बोला कि मैं आ गया हूँ, तो फ़ौरन आए। और सो इट्स अ 6 अगेन, ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और छक्के चौकों की गूंज है। Into his last over, and it's going to be the innings last over as well. He starts off with a full toss which has been belted hard. It's going, and it's gone! There you see Shahid Aslam, the on-field umpire, signaling it as a no ball. They can score 100 once again. They will definitely score 100. That's going to go over the boundary ropes. Well, that was launched from Clifton and that landed in North Karachi.
So with that performance, Clifton Popular also becomes the first side to go past 100 on both occasions in one game. They now lead by 159 runs. Huge target to chase, 160s to be specific. It's not going to be easy. Here's the first ball. This one is going down the leg side. It has to be a wide. Yes. And here he has hit that one in the air. One bounce into the long off boundary for 4. Good shot. There we go. He has hit that one away into the leg side and it's gone all the way. This one is put away and put away over to the leg side again. Another 6. And he has got that away and got that away beautifully. 6. Again, even better through the offside and it lands in the crease. And then he bashed his bat at the pitch in his trademark style, the half-ice bowler. This is coming down towards the fine leg boundary. Somebody has to pick it up from outside the boundary. This is in the air. Fielder is trying to get under the ball. Yes, he has got under the ball and he has taken that catch as well. So first wicket goes down at the score of 54 and Mansoor is the one who got a wicket on the final ball of his first over. And Yaya has hit it straight down to the throat of the fielder, who accepted that gleefully, and another wicket goes down. It is coming out of the ground. 6 more. और इस मरतबा हाफिज बॉलर ने गेंद को स्विंग कर दिया ऑन साइड में. फील्डर जहां पहुंचना चाहते थे पहुंच ना पाए और गेंद टप्पे खाती हुई बाउंड्री से बाहर निकल गई. चौका. तो 159 रन 6 ओवर्स में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है. इस मरतबा खूबसूरत शॉट फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर. 6 रन. एज बाउंस के बाद गेंद गई गली की जान. ऑलमोस्ट थ्रो विकेट में लग गया और बैट्समैन बिल्कुल साफ आउट हैं और उन्होंने सीधा दौड़ना शुरू कर दिया डग आउट की जान. 85 पे तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ है. क्रिकेट लविंग स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और इस मरतबा बड़ा जोरदार शॉट और भरपूर कुव्वत से हिट किया. बहुत उम्दा छक्का यहाँ पर आसिफ का. और एक बार फिर से हवा में है गेंद और यहाँ पे फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन जी हाँ, फामिया चन्नू ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की और अपनी हाइट का भरपूर इस्तेमाल किया है वहां पे. पठान 7 रन बनाकर आउट हुए. 93 पे 4. इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए. ऊंचा गेंद ने फील्डर के आगे टप्पा खाया. उनको धोखा देती, उनको बैफल करती हुई निकल गई बाउंड्री से बाहर. 4 रन के लिए और इस तरह 61 रन के बड़े मार्जिन से ये मुकाबला अपने नाम किया है. क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने बहुत उम्दा कारकर्दगी एफएस क्लिफ्टन की जानिब से. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Once again, we welcome you all. A brand new match coming up. UBL KTPL Season 3. George Jawan will take on Maleed Malang. Dawes was very confident at the time of toss. He was very clear. He opted to bat first straight away. So we all set here for the new match. Match number 2 of today. Maleed Malang will take on
George Jaman's first ball coming up. Here he goes, good swing of the bat. Straight away he made his presence. It's high and handsome. My word, what a good strike that is. What a start from Daud Khan. Flat, hard, nobody's out there. One bounce into the boundary. Outside edge gone. Is he gone? We have to wait for the umpire signal. Yes, finger goes up. And DK is not a happy man. He suggested he hasn't hit it, but we saw some kind of deviation. The George Jaman, they are absolutely delighted. Good sound of the bat. Is it long enough? Yes, more than enough. That is gigantic from Kaleem. Either it's a wicket or it's a 6. Good strike, good strike. First ball, over long on. 6 more. This shot was only hit by the wrist power. It's high in the air. He's got a lot of height. And this time he has got the distance as well. Quick to wide, beautifully played. 6 to finish the over. There are 3 sixes in this partnership. Round the wicket. He goes for it, he waited, and what a good shot that is. It has gone many a mile. My word, what a good strike that is. And welcome to the crease, Farman. Pulled away, gone. Good catch. The batsman can't believe it. Kaleem, he smashed it pretty well, but picked the man to the perfection at his square leg. So Farman has got the breakthrough. He struck it well. Well taken. It was a tough one. Oh, इस मर्तबा बड़ा जोरदार खूबसूरत शॉट फ्रंट फुट पे आए ओवर पिच गेंद करना किसी गुनाह से कम नहीं है ये बॉल में फरमान 5वें ओवर के साथ और इस गेंद को हिट आउट किया मगर गेंद कुछ ठप्पे खाती हुई जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की जाने फील्डर ने भरपूर कोशिश की वहां पर लेकिन लगता है कि कामयाब नहीं हुए एक थी 2 विकेट वहां पर मगर फिर भी बाउंड्री से बाहर चौका इस मरतबा एज हुआ है फील्डर गेंद के नीचे और गेंद को ग्रैब किया अपने दोनों हाथों से इस तरह ये एक और विकेट उबैर रहमान 1 रन बनाकर आउट एमएम 78 पे थी बड़ी बेहतरीन बॉलिंग मगर इस मरतबा फाइन लेग बाउंड्री से बाहर राउंड द कॉर्नर को पुल किया और ढोल वालों के लिए एक मरतबा फिर मौका कि अपने ढोल को खूब पीटें Here we go, फर्स्ट बॉल और इस गेंद को हिट कर दिया ऑन साइड पे और गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर छक्का तो नहीं लेकिन चौके से आगाज इस मर्तबा गेंद को हिट किया एंड इट हैज गॉन ऑल द वे नहीं हो सकी गेंद चूंकि फील्डर मौजूद थे बिल्कुल बाउंड्री पर और अभी हम बात कर रहे थे बॉलर के लिए कि बॉलर भी कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो गेम से बाहर हैं उन्होंने विकेट हासिल किया है इन फॉर्म में इमरान की 46 पे आउट हुए इस मरतबा इस गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री से बाहर 6 रन इस बार तैयार थे मुख्तार ऐसा लगता है हमारी बात सुन ली उन्होंने इस बार बैक लिफ्ट भी कदरे कम थी बल्ला वहीं से लेके आए जहां से उठाया और बड़ा जोरदार शॉट मुख्तार छच्छर यू ब्यूटी वाइड ऑफ मिड ऑन एक और छक्का इनिंग्स आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए मलीर मलंग ने Yes, indeed, it's a very good batting performance by Maleer Malang. Finally, they managed to score 103 in their allotted 6 overs. It was looking a little difficult. As we see, Majid Gholi will start the proceedings. He was one of the pick of the bowlers yesterday night. Picked up 5 wickets. Started off with a slow delivery. It wasn't picked by the right-hander. Shot. This time he has managed to pull it. He has connected that well enough. That's going to run away for 4 down towards fine leg. Yeah, it's pretty hard to adjust for a bowler against the left-hander. Swung away on the leg side. It's flat, it's hard, and it's all the way for 4 again. That fielder at deep mid-wicket did not have much distance to cover. Still, how well did he try? Starts off with a fuller delivery. That has been launched over mid-wicket. And I think that has gone all the way for 6. Yes, the arms are allowed from the on-field umpire.
He goes straight. It's up in the air. Long on is trying to get underneath that. And that has been taken. Big wicket this for Malir Malangs. It's Nasir, the captain, who is going to be walking back. तो सर लोग आपको सुनना चाहेंगे, आप थोड़ा सा माइक ऊपर करें ताकि जो व्यूवर्स हैं वो आपकी बात सुन सके और ये जान सकें कि प्रीमियर लीग में किस तरह की रौनक लगी है क्रिकेट की। नहीं, इट्स वेरी नाइस फैमिली एंटरटेनमेंट, बड़ा अच्छा म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट ड्राम्स हैं, क्रिकेट तो अपनी जगह है ही एक्साइटिंग, वी आर एंजॉयिंग विद फैमिली। Oh, okay. So we have different fans here. They are happy. They are enjoying the Premier League. But now let's go back to the commentary box. He pulls a low full toss and that has been tongued over mid-wicket. They were looking for it. And Basit has delivered one. Now that is the problem with this game, really. Another swing. It's high and it's handsome. Second max of the over. And not a good way to finish off the over this from Majid Gurley. He goes for it. Good swing of the bat, and look at that. That's gone many a mile. What a good strike that is. Absolutely muscled by Shah. Good shot, good shot. Flick of the wrist. That is extraordinary from Shah. That is even better from him. Chance should be taken. Gone. Certainly gone. Wicket covered the ground to his left. In the end, a simple catch for him and some relief and consolation for Fazal. He is struck here for his side, Malir Malangs, and Basit has to go. Pulls it, catcher is a cry. Go, good catch. It's Daud. He is safe as a house. Pulled it well, and Shah has been dismissed. It's a big wicket. In the air, goes over offside. Glorious shot. One bounce over extra cover. Flick of the wrist. Is it long enough? Somebody is positioning himself and good catch. Good catch. Umar goes out first ball. A good catching by Malir Malangs. Umar went for 0, 71 for 4. Smashed high in the air. Somebody is carrying on the ball. Daud Khan once again. Got him. He's an exceptional fielder. He doesn't miss many. It was a high catch. He kept his cool. In the end, no mistake whatsoever. Falak has to walk back now. Low full toss, smack down the ground. Could be gone. Oh, wicket falls again. Good catch. He was on a hat-trick, Ali. The catching so far has been brilliant. Arif Palki went for 0. Full toss, mistimed. He's got the height. Somebody should catch it. Oh, dropped. Hat-trick missed here. A sitter has been dropped. Well, dropped from in between the hands. Last ball of the innings. Big full toss. He's got the height. Will this be taken? Gone. Daud Khan once again at the house. 4 wickets for Ali. And George Jawan innings has come to a close. 80 for the loss of 7 wickets. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से तीसरी इनिंग्स को इस मुकाबले की ऑफिशियल करने के लिए तैयार हैं। मलीर मलंग्स अपनी दूसरी इनिंग्स खेलेगा। 23 रन की सबकत उन्हें हासिल है पहली इनिंग्स की बुनियाद पर। पहली बॉल इस इनिंग्स की और इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में गेंद गई, रेगोशेड होकर और 1 रन इस दौरान बन गया। इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, टाइम प्रॉपर नहीं कर सके थे, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर चूंकि सर्कल में थे इसलिए 4 रन हासिल हुए। यहाँ प्रॉपर टाइम नहीं गया था दाऊद पठान ने, लेकिन लकी रहे कि 4 रन मिले। इस बार बहुत ही अच्छा कनेक्शन, गैप हासिल करने में कामयाब हुए। डीके 4 रन हासिल किए और इस बार इनसाइड एज इमरान की बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए फरमान। इमरान इनफॉर्म बैटर परफॉर्म कर रहे थे। मलीर मलंग्स के लिए क्रूशियल विकेट हासिल की यहां फरमान ने।
इस बार थोड़ी सी अपनी लाइन को मिस किया था, जिसका भरपूर फायदा उठाया डीके दाऊद खान पठान ने। इस बार आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद के नीचे, और यूं कलीम की इनिंग का खात्मा इस ओवर में फरमान ने ये दूसरी कामयाबी दिलाई है जॉर्ज जवान्स को, और स्ट्रॉन्ग कमबैक यहां जवान्स का। इस तरह एक और विकेट गिरी 20 रन पे। अब 3 खिलाड़ी आउट हो गए और कलीम 1 रन बनाकर आउट हुए। इस बार अच्छा कनेक्शन, लेकिन बाउंड्री के हाथों में थामे गए। इस तरह दाऊद खान पठान, बहुत ही बड़ी विकेट यहां जॉर्ज जवान्स ने हासिल की, मच नीडेड विकेट। और इस बार थोड़ी सी खुद मुख्तारी जरूर दिखाई मुख्तियार ने, और सामने की जानिब जोरदार छक्का। इस बार सद्दाम की गेंद गाइड करने में कामयाब हुए स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर गेंद को नहीं रोक सके। इस तरह 4 रन हासिल हुए। And this time it's a connection. He has bludgeoned away over cow corner. That is a majestic 6. Outside edge and grabbed gladly by the keeper. He says thank you very much, and typical celebrations of Farhan. Mukhtar helping this is walking back after scoring 10. It's 46 for 4. From a different angle, a different strike, and it's gone all right. He goes again. This time it's even bigger. That's out of here. See you later. Come on, son. I need a piece of it, says the batter. You bowl like that, you're going to travel all night along for these type of gigantic blows. Well, 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 that was skimmer. Given the responsibility to finish off the innings now. And there you go. Welcome to the arena. Wow. These guys are absolutely merciless. He's going big. This time he goes over cover. This won't go all the way, but I think it's trickled over. Yeah, it has trickled over eventually to the boundary. Didn't carry it on the full, but a boundary nevertheless. 3 balls now remaining in the innings. Oh, he's hit that hard, but it's only going to be a single. Oh, they look for 2. Here's the trouble, and he gets out on the non-striker's end. Well, well, well. It's all happening here. I would say he's sacrificed his wicket because they're into the last over, but there was never a run. He goes downtown, he goes flat, and he goes all the way. 1 bounce 4. That was a skimmer. And this time he's got the length, but couldn't get the elevation as he would have liked. It's going to be a single. They will look to get another one, but it's not there. Another run out, just a couple of run outs towards the end of the innings. But they've managed 85 for 5 in their 6 overs. Jawahar Jawans needing 100 to register their first ever victory in this KTPL Season 3. Umpire signals, let's play, gentlemen. The last innings of this match is getting underway here. Here's Majid Gholi steaming in. And first one is hit back, and hit back with the power over wide long on for a massive 6. What a way to start the proceedings. What a magnificent shot. He gets that away. Wide of the fielder at fine leg, and it raced away in eye flash. Runs have started to flow on. He goes again, but fielder is there. Who doesn't make any mistake at the long on boundary? Majid Gholi is saying, you hit me a 6, then you clobbered me a 4. Now it's my turn, and go back to your dugout. 10 of 3, 10 for 1 on the board, George Jawans. Basit is taking strike. And straight away, he goes bang over long on. That's a good hit, right out of the screws. This time it is going, and gone out of the boundary. What a magnificent stroke.
And Shah has given this a go. And given this a go beautifully. I think it bounced once before it get over the line. 4 more. Basit has lofted him over long off. What a